तो जतन भाई अबे ये क्या कैप्चर देखो मैंने इसमें बैकग्राउंड ऐड करा भाई आज मैं स्टोरी करने वाला हूँ इसकी खत्म भाई अबे भाई ये switch ठीक नहीं खेल रहे खेलेंगे ना सब आ जाओ तो फिर खेलेंगे अपन लूनो पुल कर लो आ गया क्या अपडेट उसका या मैं पहले स्टोरी खत्म करूंगा यार फिर मैं देखूंगा भाई क्या करना है ये बहुत लैग हो रहा है पता नहीं क्यों लूनो देख लूनो नहीं कर रहा पुल लूनो पुल करके क्या करूंगा मैं मेरे पे है ही नहीं कैरेक्टर्स ढंग के मैं लूनो निकालूं मैं भाई बस अभी मैं भाई थोड़ी स्पीड रन में ये स्टोरी खत्म करने वाला हूँ तो देखते हैं Thank you for waiting, देखता हूँ मैं everyone. Finally. Come on, let's go try our hand. आ गया क्या भाई रुक जाओ यार तो पहले वही खेल लूँ क्या Joining us, new guy? फिर ठीक है We'll pass. 12 बजे No, आने you में won't. पुल करूंगा The इस one who'll be स्केच mixing the roulette special has to take कौन part. बोला 20 Those मिनट are में the कंप्लीट हो rules. गया स्टोरी Uh, कौन बोल रहा था 20 मिनट में कंप्लीट हो गया That's more like it. since we have a new friend with us today, आज let तो me वो go भी आ over रहा है the ना सिजियन rules in ऑनस्लॉट brief. The wheel before you is वो भी divided करूंगा into an inner and outer circle. प्रोबेबली वो Participants must 8:30 take बजे आएगा turns to मेरे spin the सर्वर में pointer of the inner circle. आप Whatever आपके सर्वर में beverage तो आ it गया होगा ना stops स्केच at, भाई our lucky contestant will drink. The drinks are divided into juice, tea, and alcohol, with that last further divided into 3 levels हाँ by नहीं 3 घंटे की है intensity. स्टोरी Spin your way to a non-alcoholic 3 beverage, घंटे की है and you'll score no points. 2 घंटे की नहीं Otherwise, है you 3 की get है मैंने 1 देखा to था 3 based on alcohol content. During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose ये a पीछे का टीवी question, which the भाई other टीवी नहीं party चलेगा भाई must then टीवी पे answer. भाई अभी क्या वो This शॉर्ट sounds like it सर्किट हो might रखा है fit. ना That's why the बिजली कट person गई थी mixing the drinks has to take लो अक्षत part. भाई You know, just in बिजली case कट they गई थी तो decide to भाई वो pour heavy. Then कैसीनो में वो sit शॉर्ट back सर्किट हो and गया watch टीवी the show. उसका भाई वो Not अलग that अलग our सेटिंग्स newcomer चेंज looks like the करवाना भाई drinking type. खर्चा बहुत है Anything अभी you drink with a single serving of dark horse. What? Do my ears deceive me? A chance to drink Dark Horse and Nód Krai? तारक मेहता लगाओ अबे Dark भाई अभी तो बोला horse. शॉर्ट सर्किट हो गया आवाज आ रही है नहीं आ Guess रही we'll है have भाई to take part now, huh? Indeed. The dark horse could be yours to enjoy, so long as your luck holds. And so long as you can remember its आवाज आ taste रही है the नहीं आ day रही है भाई after. जैसे ये बता दो भाई And if our lucky winner can drain the whole आता मैं थोड़ी serving देर in में one go, they लॉन्ग will सर्किट gain the करो right to ask everyone लॉन्ग a सर्किट करो question, वाह यार regardless of their score. High risk, high reward. That's gotta be some strong alcohol. Now, if there are no other questions, let us begin. Allow me to get the ball rolling. Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. Let's go! Wow, this is kinda intense. Oh, my turn, my turn. All right, man, fess up. You've been making a killing. Hey, bro. I heard you met up with some big shot from the Voynich भी Guild. मंदिर जाके आ रहा हूँ फिर Mind अपडेट कर introducing me sometime? वाह यार पुल करने से पहले पूजा करते हैं वाह यार जतन भाई यार A normal drink, huh? Must be my lucky day. We've reached the final round of the... I रुक gotta जाओ say, मैं बैकग्राउंड में you एटलीस्ट अपडेट पे लगा monsters देता हूँ फिर really know your alcohol. बेसिक अपडेट आता है And वो his बता रहा है recipes are super good. Teach me, would ya? I was wanting to ask Yeah. about your wife.
डेट नहीं लगता। बेसिक मतलब कुछ ऐसा पैच वैच नहीं आता छोटा सा, 100-200 MB 300 MB का अपडेट। यार भी You're up. Whoa! New face here just drew the dark horse. यार Bottoms up. वो मेरे लिए Bottoms up. भाई अपन ही तो बना रहे हैं, Hey, will you be alright? You wanna अपन ही just तो give बना this रहे one to Paimon? हैं एक ग्लास और। Whoa! अच्छा He actually downed it in one go. Mondstatters have such a reputation. Me? Well, what do you think? Monsters, of course, absolutely. If there was something else, I didn't stop to see it. Just took off as fast as I could. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good-for-nothing rat Niki, that's who. If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Or whatever was left of it. Either way, there's nothing in there you'd want to see. I see some downcast faces. Why, have we all hit our limit? Says who? I'm still raring to go. Because you didn't drink that much. In that case, let me raise another glass. To a blast of a showdown and a wonderful evening. Hello, sir. Lady Nefer has ordered a fresh round of drinks. Could you deliver it to her? Are they playing cards? Paimon spies some elemental dice. Same as usual then? One die, 100,000 mora. I'm not here to do business with you. Come now, I've already ordered us drinks. Or are you looking to add another line to your ledger of arrears? Oh, so this is a business. So, let's go over this again. One die, 100,000 mora. Hmm? ये कितना गंदी तरीके से इसको टीज करते हैं किसी को, Then we have a बुरा deal. लगता है। Come, you two. Take a seat as well. What are we even doing here? I can give you 3 things. The features of the Wild Hunt, the exact locations where it has appeared, and the intel we've received from the Lightkeepers. The Wild Hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake, posing a lethal danger to ordinary people. On the flip side, these monsters cannot leave the fog, so the disaster cannot spread quickly. We already know all that. Fair enough. Then I won't beat around the bush. Here's a map of current Wild Hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers, including the locations they'll soon be bombarding. That's a lot. We've never seen anything like this either. That's why everyone's so worked up. That's not enough. 4 dice. Cool it, all right? I'm not done. Now, the Lightkeepers don't want you to know this, but weirdly enough, more Wild Hunt sites have disappeared than their involvement would indicate. Isn't that normal? They're not the only ones fighting the Wild Hunt after all. Adventurers do that too. And maybe some just go poof by themselves. I'd agree. And really, we've always had a small, stable discrepancy between reported anti-Wild Hunt ops and anomalies cleared. What could that even mean? I've got 2 theories. One, that some new force is clearing the Wild Hunt out in secret. Or 2, that some Ratniki are not reporting the work they do on purpose.
The odds of the former happening is low. Not many organizations can even engage the Wild Hunt. Never mind, keep those operations a secret. If you're interested, I'd recommend following the latter train of thought. Paimon doesn't really get it. What would anyone gain from doing that? Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been doing well for yourself lately. Even if you've mostly just been reselling my intel. Please, stop. This is all I've got for you. Oh, stop that. Why, people might start thinking me a bully. Let me give you an opportunity instead. Out of respect for your independent intelligence gathering. An answer to a simple question. For 50,000 off your debt. Have you heard of people seeing familiar faces within a Wild Hunt anomaly? Or experiencing something akin to, say, an illusion? No, nothing like that. Nothing at all, hmm? Not even for 50,000 Mora? Either you don't take your debt seriously, or you're confident you can pay it off. Hey! No means no, all right? This is about my dignity as an intel broker. Mora doesn't factor in here at all. Okay. Well, that puts me at ease. You really are the same as ever. And you've learned quite well. Go on then. I'll swing by again. Sometime soon, perhaps. Ugh. So, you're his creditor? Indeed I am. He's resold my intel quite a few times now, pocketing the difference afterwards. Rather dishonest dealing, if I may say so. As luck would have it, he would only purchase information from me when he was just about done negotiating with his buyer. So I arranged a little something just for him. A painful lesson, you might call it. Ooh, that sounds brutal. Oh, I was downright beneficent in charging for that betrayal. It was more about the message, really. In any case, I believe that's all we'll get here. Let's go through what we've learned outside. Most of our intel seems quite dispersed, so let's try piecing it all together. Well, first, no one else has seen that weird phantom, apart from our encounter on Star Sand Shoal. Indeed, and we have that from multiple accounts, so each statement corroborates the others. What in Teyvat could that phantom be planning? Agreed. Instances of the Wild Hunt afflicting Nód Krai in general have increased in frequency, but the phenomenon itself hasn't changed much. What you encountered must have been something special, with our mastermind concealing themselves within, in order to target the Moon Marrow. In which case, two questions arise. Who is this mastermind? And why would they want the Moon Marrow? I'll continue investigating along these two lines. We can reconvene again if any progress is made. I'm back!
Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. Huh. Thanks a bunch, Yehoda. Take a break. You've earned it. Oh no, I've got work to do later. And anyway, isn't the cannon about to go off? I was watching it the whole way back, praying it wouldn't fire. Not until I got back, you know? Again, lucky me. Huh. Of course. I mean, just think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands, even tens of thousands of parts, fused in such a way that it can operate smoothly and fire off a supergiant, super strong beam. Isn't that just so cool? I mean, miraculous. Like a miracle created through countless careful calculations. It has been a while since the last time it fired. Go on, feel free to go watch. Work can wait for a while. Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? It'll be worth the while and worth your wait. Ice? Might as well. Fruits of our labor and everything, you know? Woohoo! Let's go! Kaboom! Wow! What a crowd! People seem pretty excited, too. Just goes to show how big a deal this cannon is, huh? Oh, for sure. One shot, one kill, problem solved. Simple and practical. Just the way we like it. And even if that wasn't how it worked, just listen to how it roars. If that isn't power, I don't know what is. If only I had that kind of strength. Hey, don't think like that. Your skills and smarts have been a big help to us, too. Really? They think that? Oh, I'll do my best the next time we work together. For sure. Hey, look! It's starting! Nice one! Finally, all fixed up. Nothing to fear now. Awesome! Felt that one in my bones. Whew. That sure was powerful. And pretty dazzling, too. Guess that's why everyone's been counting on this thing. Surely the Wild Hunt doesn't stand a chance. I feel so alive right now. Overtime. Ha! It's gonna be a piece of cake. You know, Paimon's been wondering, if you're so interested in machines, why don't you go work for Aino? That's what we call drawing a line between your work and your hobbies. I've got some mechanical talents, sure, but this job I have now, no one can do it but me. Not even Aino or her silly robot. Anyway, gotta go. See you later. Says the person who got salt and medicine mixed up. Huh. Looks like the crowd's breaking up as well. Let's head over to Hisi Island. Let's not keep Lama waiting.
Let's see now. What's changed since we were gone? Yeah, if anything, looks like things are settling down. That's Llama for you. Hey there, Llama! We're back! The cleanup work has been much more complicated than I expected. Solving problems that have built up over time is a tall order, to say the least. I believe it will take a few weeks more. Fortunately, those who remained appear to have shaken off the initial confusion and are becoming more proactive by the day. It's as if they've finally been forced to come face to face with what their faith actually is. And it's all thanks to you. No, I should have done this a lot sooner. I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. And since you're looking after the Moon Marrow for us, I should be able to help you investigate the truth of the past. Speaking of which, have you heard anything new about that phantom? I've tried asking around, but to no avail. What about you? Oh, we haven't made much progress either. But here's what we've got. I think I've got the gist of it. Sounds like you've got your work cut out for you too. Don't forget to take good care of yourselves. In any case, please, come this way. What do you see? Is it over already? This appears to have occurred a long, long time ago. The memories I sensed are highly turbulent and disordered. So that is all my power allows me to discern. Huh? What's the matter? The flowers changed color. Yeah, we should go see her and see if we can help her in some way. I'll leave that in your hands then. Oh wait, here you go. This is the medicine you asked the Curatorium of Secrets to help prepare earlier. Thanks for coming all this way with it. You've been a huge help. Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your space. Oh, that's true. She's the Kutara, but we best check if she's doing okay first. See you later then. Oh, she doesn't look so good. Sorry for disturbing you, but are you okay? Dizzy. It's like I'm returning to the moon. Wait, it's not that bad, is it? I sense the moon's power within you. We
We got the moon marrow back from the Fatui. Can it help you in any way? And what do you require this time? Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. I might need your assistance in the future. Oh. Very well. Give me your hand. Back to Earth. My thanks. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? Significantly. The moon within your body. It is as silent as a reflection in the water. Fascinating. I merely drew forth a ray of its light from the water. Enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sensed some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. It is harmless, and will fade over time. Speaking of which, do you want to be the Moon Marrow's custodian, now that you've got your power back? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. So it does have to do with... Wait, what? Did you not know this already? Llama just said it was different from the other fragments, and that she could sense divine power within it. And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. But Llama also saw the past by using the moon marrow. Why didn't she see that? There were once 3 moons in the sky, each belonging to a goddess who ruled over it. But after the War of Funerary Flame, all 3 lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered after Arya's death. Her power coalesced into this moon marrow. The iridescent moon's remains have never been found. And while the Frost Moon's goddess died herself, her moon was never broken. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The entity the Frost Moon Scions call the Kutar. I can sense that my power belongs to the Frost Moon, but it lies beyond the false sky, too distant from me. Forget controlling it. Sensing it alone requires immense effort. Oh, wait, let Paimon count this up. We have the Eternal Moon's marrow with us. No one can find the iridescent moons. Does that mean you have the Frost Moon's marrow inside you then? No. It can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of energy core. You may as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the Frost Moon's power, right? Yes. Now, a god with a gnosis is named an Archon. Since you bear the moon marrow, does that make you a moon goddess? You do not wish to become one? That's not really the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? Anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. We're asking if we should return this moon marrow to you. I do not desire it. Huh? Nor does it desire to come to me. And what does that mean? When I came into contact with its power, I sensed a kind of rejection. I can only guess that this is because I, too, am a moon goddess. 2 moons will not rise at the same time, let alone consume one another. Guess it's stuck with me for now then. You sure that's gonna be okay?
Falma did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. If it detects the marrow... The wild hunt? You speak of that phenomenon as if you were describing a person. Well, it sure looks like there's a person behind it all. Someone with a super clear goal, too. They've been after the moon marrow non-stop. That seems to ring a bell. Huh? Does it really? My colleagues used to mention someone, back when I was still with the Fatui. He hailed from Conria, gaining abyssal power during the Cataclysm, and he had a consuming fixation on the moon. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? I only know what others called him. The Reikir of Solnari. Huh. There was that title too. Wait a second. Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rerir, one of the five? If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. I have heard that he disappeared not long after the Cataclysm, but when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" Why would they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Wait, hold up, pause. There's just too much information. I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moons. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. I do not even remember my name. Oh. Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation in both scale and lethality. Oh, to think that we're up against one of the infamous 5 sinners. That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving it his all. And even then, he still defeated Marionette. Oh? What did you just say? Would you mind repeating that? That's your ex-colleague? So, we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt too. Did you just laugh? No. She totally did. Are you two on bad terms or something? No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment, and found it interesting. She seemed quite shaken. Oh, she'll adjust soon enough. She's very good at that. Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, Traveler? If Fatui intelligence is to be believed, Rerir would prevail even if all of Nód Krai were to stand against him. Perhaps something restricts him, if only for the moment. Before I decide, there's a favor I'd like to ask you, Columbina. What do you need? Do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nód Krai? I mean, when our spaceship first left. Sure. That was quick. As I said, this to me is but a single ray of moonlight. Nothing to it. Give me your hand, and ready yourself. Where is this? Aether, come on, we have to leave this place. What? Hey, are you okay? Our spaceship. A long, long time passed after we landed. No one left the ship during that time. But you mean...
found me from outside of it somehow. Huh? How would that even be possible? I don't know. The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite, and they go everywhere. All right. I'll keep the moon marrow with me. Well, if you say so. Paimon can't stop you, but still. Ooh. Will you need my help? I could help you conceal the marrow. You could? Oh, that'd be great. Detecting it within you is already no easy task. But I can teach you to further conceal its presence using Kuvaki. Like this. Ooh, looks like a shield. Can you sense it? Now, try to maintain it. You learn quickly. Huh. Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pinch, huh? Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, like, taken a walk outside or something? Just like strangers. Slightly better. Yeah, the Frost Moon Scions have changed since you last saw them. Who knows? You might actually like them. I will consider it. She seems kind of tired. Either way, thanks for agreeing to help us. It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. Best let her rest. Best let her rest. May the light of the moon goddess guide you on your way. The Raker of Solnari. I've never heard that name before. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause even more panic amongst the people of Nód Krai.
But if this Rarier is as you describe, he will be a truly formidable opponent if we try to take him on by our strength alone. Yeah, things might be okay if everyone was willing to work together, but right now... Exactly. Whatever the case, let's start by telling those we can get to join up about the Krai. As it happens, we have our own reasons to protect Nód Krai, but even if we didn't, we'd never leave people in the lurch. That ain't our style. Thank you. The Frost Moon Scions will stand with you to prevent this crisis as best we can. In addition, I believe that the relationships between the various factions, the winds of change are blowing. And we Scions have nowhere to run. Our faith, our sect, all of it is here. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our ground and remain true to ourselves, even to the last. Speaking of allies, the Krumkaki craft shop is the closest by, right? And F is sure to help us. गेम की आवाज स्लो करो कर दी मैं कह रहा था उससे पूछ के आओ एक बार और कौन कौन खेलेगा अक्षत मैं और तुम अपन 3 लोग तो हैं तो 3 में ही चालू करना है या फिर वो भी आएगा एक बार पता करके आओ या ये सही है कोई और सारे तो अपन 4 लोग ही चलते हैं फिर Friendly approach detected. We meet again. Listen! We've got updates on the Wild Hunt situation. ये रुको मेरा डाउनलोड नहीं करो Threat level exceeds expectations. Doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solari or whatever. One volley from my cannon and he'll be blown to smithereens. मैंने बस फाइल डाउनलोड करी थी रात को फाइल डाउनलोड करी थी भाई वो zip फाइल हाँ तो उसका एक्सट्रैक्ट करना है और क्या कर तो लिया डाउनलोड मतलब इंटरनेट से तुमने अपने सिस्टम में ले आया उसका डाउनलोड बोलते हैं इंस्टॉल करना वो अलग चीज़ होती है इसे क्या समझो आ जाओ भाई आ जाओ Forward to this battle, huh? Of course! This is gonna be the shot that shocks the world! All of Nód Krai, heck, all of Snezhnaya will know my name once we're through. Sure, travel safe! I know. There remains intel left unshared. पहली बार ही कर रहा हूँ आ जाओ करवा देता हूँ Investigating the wild hunt. Something pretty weird happened in Ashtown. Should probably watch out for that once you're back. Remember that Sosi guy? The ratnik in charge of firing the cannon? He's been found dead in the organization's offices. Wait, what? Didn't we just see him like half a day ago? Yeah, it's still new news. So not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, only just now. I'll send a he seemed like a good guy. जतन भाई करो स्ट्रीम करो Like being a superior officer either. ऐड स्क्रीन करो The data concurs. This gentleman appears to have been one of the most accomplished amongst the Lightkeeper's sergeant majors. His character has also received commendation. करो Most would have lacked the motivation to fatally attack him. That makes it even worse. Hey! Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. Got it. Let's go then. यहाँ से डाउनलोड कर लिया ना हाँ तो खोलो My tasks are incomplete. The last few batches of ammunition must be randomly inspected. You go गेम्स ahead. वगैरह कहाँ रखते हो वाला फोल्डर खोलो
फिर बता। वाह यार, इसका जो थीम्स वाले फोल्डर कहाँ है? थीम्स वाले फोल्डर खोलो पहले। भाई हाँ दूसरा वाले को आई नो पुल हो रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा भाई, जतिन भाई जो बोल रहा हूँ वो कर लो। है क्या भाई? चोरी कर रहा है भाई। Might as well try squeezing blood from a stone. I came over to take a look as soon as I received the news just now. Aino told you about this then? Before we start, shall we see if What we the can make fuck? the same guess? Indeed. Quicker than we thought as well. मैं Keep अचानक your से eyes 6 peeled वॉचिंग। for any clues once we get in. No need to jump to conclusions. बट के जितने मैं देख लो भाई। ये क्या बात Just हुई? follow me. रुको 2 मिनट लिखा तो भाई। वापस से 2 वॉचिंग, क्या सीन चल रहा है? I'm sorry, but we're not open to guests right now. Sorry about that. They're here to investigate. All of them? The paperwork checks out. All right then. Enter. शॉर्ट स्ट्रीम लॉन्ग स्क्रॉल करते रहते हैं। तुम कब आए? ओ फिर 5 की वॉचिंग। अबे इतने क्या अगर अच्छे फ्लैग ऐसे लग तो रहे हैं? ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा भाई। नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा भाई। वो देखिए इतना पता क्या फ्लक्चुएशन। है तो सबसे पहले मैं ही होता है आया। भाई। Paimon might have said this before, Nefer, but you sure you अभी could भी have 2.5 managed? घंटे की कर्ज बची है। Shit, my old friend. Fill us in, if you would. Greetings. If you would allow me. पहले जितने मैं पुल कर रहा यार, Not long ago, जल्दी से मेरे को मैं पुल Sergeant करता हूँ। Major was killed by a single piercing strike from a polearm. We have performed a preliminary sweep of the crime scene to facilitate investigation. No obvious signs of a violent struggle. नहीं इनका क्या फेटिश है भाई कि एनपीसी को मारते हैं? पहले वहाँ सिल्वर The वगैरह को culprit मार दिया must था। use some other means to enter the room और कौन था नाविया के before बॉडीगार्ड्स, performing the deed. यहाँ पे इसको मार दिया। Entering unopposed. So, do you think there's a chance that the culprit would usually have right of entry? At the moment, the most valuable lead we have is based on an eyewitness report from a nearby resident. Specifically, that Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. 1.5 घंटा कौन बोल रहा है? वो भी 2 घंटा है भाई यार। Contact him. क्या बात कर रहा मैं है? 2.5 बोल रहा था। Very मैं odd 2.5 बोल रहा indeed. था। So, he's the prime suspect right now, right? To be honest, I'm 1 not बजे तक particularly खत्म हुआ। inclined to believe that this was an inside job. Flint's 2 बजे के बाद ही खत्म an होगा। eccentric, but he does well ना at ना missions 2 on the बजे whole. तक नहीं जाए। He also had no disagreements with the sergeant major that we know of. बहुत So सही he है। lacks the motive to commit such an attack, but neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. अच्छा उसकी क्वेस्ट So कितनी we are बड़ी है looking for him at present. बदरिन की? पता नहीं, मैंने किया था भी है। To dig up here. Let's go outside and discuss what we've seen. पुल करो भाई, जितने मैं क्या कर रहा हूँ भाई? ये भाई बैठा कर रखे हैं सबसे। So, the evidence points to Flint's, and he just so happens to have disappeared without a trace. A sticky situation indeed. We know that this Flint's could have been Rerir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Furthermore, Flint's has left us with many questions, all of which will require a reasonable explanation. Yeah. He said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't gone at all. What could he
be doing? पूल का तो ट्राई करना पड़ा है. Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rerir in disguise? Yeah. What reason would Flint's have to murder Sosie anyway? None, as far as I know. And even if he had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Yeah. They would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. This means that he has been hesitant to abuse this ability, or allow it to become common knowledge. Likely so that he could act in secret under other guises. But no matter what, borrowing identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating along the way? Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. He likely knew then that the real Flints would not appear and get in his way during this time. We'd have to ask Flints ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. We can't discount the possibility that he might actually be the murderer himself. Not yet, at least. And there are other, less likely scenarios. For instance, Rerir may have already killed मेरा Flint mic नहीं long चल रहा. ago and been मेरा living input as नहीं दे him रहा for मैं. some time now. Yes, Stream करो मैं that देख. is our ticket to a breakthrough. Then we've got to find him before the Lightkeepers do, or we might never see him again. Steady now. Our friend should be back soon. We've tracked him क्या down ना इसका mic to a beach north of Nasha Town. The Wild Hunt is present too, so we're putting a force together. I'll have you know that this is top secret information leaking here. वो mic input पे click करो. Don't worry, you'll receive a top-class reward in return. The beach is all yours. I'll stay and slow the Lightkeepers down. Things might go south Default if you मत bump रखो into भाई. another. माइक्रो से Before edit we किया. go, should we Check reveal करो Rary's headphone secret? वाले पे set करो. Since he's trying to keep it all Headphone hush कुछ लगाए hush, होंगे ना. why इस don't पे we set just pull करो. the curtains on his little trick? ये तो That'll by teach him to default तो sneak हम around laptop का pretending to mic be use other करते हैं. people. Hey, why are you laughing? Oh, I was just imagining how हमने कुछ लगाया भी satisfying है. that would feel. लगाया. But I'm afraid this revelation would only stir up more chaos. वो device Setting detect नहीं हो रहा. aside the matter of evidence, some may trust Flint's on our account, whereas मेहरबानी. others would इसमें suspect वो है him on तुम्हारा. account of his behavior. Mic है इसमें. Tossing him into a swirl इसका of headphone पे tumulty set. public opinion like that might just give Wired Rerir है. opportunities to capitalize on. And think देखा ना about it. Bluetooth. Once people learn that he can masquerade as those they एक बार trust, reconnect करो. would they continue to welcome friends into their Reconnect करो. homes with such open hearts? Unease grips the hearts of those in Nasha Town already. Yeah, you're right. You've really thought of everything, huh? Nothing for it then. We've just gotta find Flint's. Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively Mic में afraid detect of ही नहीं हो रहा है. Rerir, nor trust in Flint's ठीक too है बेटी. lightly. This light source is of special Lightkeeper design. It provides illumination भगवान within जाने Wild वाला. Hunt anomalies and can briefly dispel the abyssal fog within. एक बार settings में जाके देखना कोई update वगैरह आया है इसमें. Yeah, this'll be important. Thanks a bunch, Nefer. You're welcome. I've charged it to your account, by the way. Hey, you! पहले आता था.
कल भी आ रहा था वायरलेस में, भी नहीं आ रहा। आता था क्या? एक बार डिवाइस सेटिंग्स की अपडेट देख लो, डिस्कॉर्ड का अपडेट देख लो, एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लो। पर क्या ही बोलूँ मैं, एक बार कर क्या हो ये सब चीज़ें। सेटिंग्स में कुछ नहीं होगा, कोई कनेक्टिविटी इशू है या सब। Someone there! Please, help me! Isn't that Flince's voice? Did you hear that? But we'll be in trouble if these spooky shadows touch us. Quick, use the lantern. आ आ रहा हूँ। श्री हेलो हेलो। आ गया शायद अब आज। ऑफिस से समोसे। अब आवाज आ रही मेरी? हाँ यार, अब आने लगी यार बात। अरे मेरे इसमें लैपटॉप में वो जो इनपुट का है ना भाई, मतलब डिस्कनेक्ट हो रखा था मेरे हेडफोन से। आउटपुट तो वो था। है क्या? फिर से बोलना, समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ जो मेरे हेडफोन है वो आउटपुट नहीं, क्या कहते हैं, इनपुट जो है वो डिस्कनेक्ट था मेरे हेडफोन से लैपटॉप में। तो तुम्हें सेटिंग्स में जाके सही करना। हाँ, मैं वही देख रहा था कि मतलब आवाज क्यों नहीं आ रही। कल भी बैठा था, मतलब इससे कल भी बात करी तो कल तो सोच रहा था एकदम से याद ही। वो सिर्फ सुबह सुबह कौन खाता है? हमको खाओ समोसे तो चाय के साथ। नहीं इधर बस हाँ यार, मतलब हर को स्ट्रीम कर। अरे मतलब का इन द सेंस मतलब तो अगर जनरली नाश्ते में वही हैं यहाँ तो भाई, यहाँ तो बनते ही शाम को है, फिर खाते भी शाम को है। इधर तो ना तो ऐसा टाइम ही रहती है, 5 साढ़े 5 बजे जाके बनना चालू होते हैं, उसके बाद नहीं। लेके आओ। इधर सुबह नाश्ता
यही मतलब वही दो दो चार चीज़ रहती है ना, यही रहती है इधर से सुबह सुबह सब। सुबह ब्रेड पकोड़े लेते हैं, शाम को भी बनते हैं, नहीं, दोनों ब्रेड टाइम बनते हैं पकोड़ा ब्रेड नहीं लेते, पकोड़े तो। ब्रेड पकोड़ा बहुत मेरे को सारी मैं तो ब्रेड वैरायटी है। पकोड़े ही खाता हूँ। मैं तो मतलब ब्रेड देखो, पकोड़े मतलब जो बढ़िया लगता है। बहुत कॉमन चीज़ है वो है पोहा, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत नमक, ब्रेड पकोड़ा, आलू का। अच्छा अब बता, देखो देखो ये देखो, अब बता क्या करें। पीक पे गया, इसको क्लिक तुम वो करा। वाले फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करो। तुम पहले वाला फोल्डर दिखाओ, कौन सा फोल्डर? यहाँ पे तुम्हारे सारे गेम्स रखो, यहाँ पे तुम ये गेम रखना कोई चाहते हो। से नहीं, क्या कोई से कोई सा नहीं? भी बता दो। मतलब तुम मैंने कोई तुम फोल्डर नहीं डिसाइड बना करो हुआ पहले, गेम्स तुम का। डिसाइड करो पहले, ये चीज़ डिसाइड करो। तो मैंने कोई स्पेसिफिक फोल्डर तो नहीं बना रखा है। ये चीज़ फिर से करनी पड़ेगी, अबे छी भाई। अपने फोल्डर में रख लिया फोल्डर। हाँ बताओ क्या करना है, इधर से एक्सट्रैक्ट पे ये चीज। हाँ, अब इसको उस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो पीक वाली जो फाइल है ना, वाली जो ड्रैग फाइल एंड है ड्रॉप ना। कैसे होगा? अच्छे से। ये वाली पीक, ये पीक नहीं डॉट नहीं ई एक्स पीछे। ई। तो अच्छा ये इसके पीछे वाली फाइल होगी देखो ना। ना, सुनो पता है क्या अभी क्या हो रहा है, आपकी आवाज के साथ ना गेम की आवाज भी आ रही है। बस मेरे माइक से तो नहीं आ रही। अब किससे आ रही किससे वो तो तुम्हें पता है। तो कट करो, इसको कट करो। जिप फाइल खोलो। किधर से हो? ये थी ना दूसरी वाली। अब इस अब ये जो पीक वाला फोल्डर है, इसको उसमें ड्रैग करो। हाँ बैकग्राउंड में पहले वो वाला सेट करो, इससे कॉपी नहीं हाँ होगा। खुला हुआ है ये तो। हाँ तो इसके ये सामने रहा करो, खुला इसके हुआ। सामने करो। हाँ इसको ड्रैग करके यहाँ पे। कैसे होता है? भाई खोलना नहीं खुलना है नहीं इसको। है। ये था, ये इतना हार्ड था। I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peace. The fight took place here. Did Flint leave these marks? Is someone there? Please, help me! आज बच्ची को ना बोलोगी आज। मैं तो कुछ बोलना है। मैं तो चाहता हूँ हार जाओ, फिर मेरी चीज़ गारंटेड हो जाएगी। इसमें तो तो चीज़ें ही पुल करो भाई, अगर चाहते हो हार जाओ तो। नहीं नहीं नहीं, अरे 50-50 है ना अभी, देखो अगर अभी जीता तो ठीक है, वो देखी जाएगी। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे, लाइक सही बता रहा हूँ, बहुत वर्थ इट। भाई चिकोना को नहीं पुल करके भाई कार्तिक को बीच कर दो। मेरे को भी लग रहा फोटो रिवील हो जाती, बच गया। स्ट्रीम ऑन करके मैं फोटो हटाऊं पहले। बच गया भाई, बच गया, फोटो तो रिवील हो जाती है। अरे फिर भी आप भी देख तो लेते। हाँ जैसे फिर मैं भाई जाके प्रोफाइल बना आई.com पे। क्या पता देख ले कुछ। देखो अभी आ गया पी का फोल्डर, इसे सीधा ओपन कर दो। एक मिनट रुक जाओ, मैं मैं अभी स्ट्रीम कर रहा था तो मैं वही देख रहा था, मैं बोलने तो लग रहा, फिर मैं बाद में देखा कि आवाज तो जा ही नहीं रही, माइक मेरा खुला हुआ।
कहाँ पे आना? मतलब हाँ अब ये जो पीक है ना ये, हाँ हाँ इसको इसमें ऐड कर स्ट्रीम में, स्ट्रीम को स्टीम में ऐड करूँ? एक अच्छी ना लगे। देखते हैं की आवाज आ रही है इसमें आ रही है तो सेकंड रुको। लेंस चाहिए। ये तो बढ़िया लग रहा है, इसे लगाओ ट्रेलर के जो भी विलन है। ऐड तो करो। 10 10 आ गए भाई, ये तो कुछ और हो गया। You were tangling with Rarent out here all by yourself. So, that vile phantom hiding inside the Wild Hunt has a name of his own. Yeah, you don't look so good. हाँ ये कितनी बढ़िया लग रही है वो। कर दो क्या इस पे बोल। Sorry you had to see me like this. या तो हारेगा या तो जीतेगा। All the same, नहीं, you have my अरे sincere फिर thanks for टीम your का क्या? टीम गई, ना टीम के लिए कौन? मैं तो कर दूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic it was? Or whose pupil you are? अरे ये भी तो है। I believe I might have seen some मैं खेलने को that तो master just a देखो ना कौन fraction ही of such खेलेगा। abilities. वही तो है। An enviable institution it is. A pity that such abilities cannot be acquired. मेरे को तो सही बता, मेरे को नहीं पसंद है Who's ऐसे got a चीज़ें। lantern anyway? चिकोना नहीं पसंद है। It is a long story. Many moons ago, मेरी तो I favorite was है। on clearance duty. देखो ना I है shattered शो। one of its cores only for a special crystalline देखो object अभी to fall. दो सबसे तगड़े फेवरेट मेरे पे हैं जो काट देते हैं और लोगों वो मेरे पास है। Strangely enough, इतना दुख नहीं होता मेरे को बाकी कैरेक्टर्स I ना। confess to being an avid collector of ancient gems, ये तो coins, है and जब तक मेरे को curiosities. चलेगा। And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece अरे without वो my इवेंट तो कर दो यार। prompting. Though my understanding ठीक है ठीक है। it was only recently that they began slowly वो emitting गेम a ऐड कर ले भाई पहले। which could neither be हाँ भाई कर। dispelled nor weakened. देखना स्टीम खोल रहा हूँ। That what Rarent claimed belonged to him? That must be what I concur. And here's the अरे चेन टुगेदर खेलना चाहिए मेरे को, वो भी खेलनी है। exceedingly weak. मैंने खत्म कर दी। In fact, I've already beaten him नहीं several यार, सबके साथ मेरे को तो कोई मिला ही नहीं साथ though I खेलने couldn't वाला। मैं destroy कहाँ it खेल। हाँ तो भाई बुला। But I noticed while चार में engaging से एक that the मगर। crystal fragment would restrict my powers. चार में से बात। As चार लोग such, लग- it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him. चार में से एक मैं। अब ये बताओ। Alas, he has proved most fixated upon this fragment. टीम खोला। For some reason, अरे अब ये वो नीचे है ना गेम ऐड है। की leaps and bounds since I last encountered him. लिस्ट में एकदम नीचे। ये क्यों डाउन हो रहा है? इसको तो मैंने लगाया भी नहीं। हटना। And where? अरे मैं खेलता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, पड़ा रहता है तो मैं अपडेट हो रहा है। करा करूँगी तेरे में वैसे ही बहुत करा। Were our places switched, would you discard it? फ्रेम लेवल्स बनाया। Knowing that its perilous might was
Streamlabs is your free. ability to counteract. Yet, मैंने तो ये डाउनलोड करा था देखने how चल गया should it lie beyond your grasp? ये छोड़ नीचे आना यार, तू क्या टाइम पास कर रहा है? ये देखो मैंने ये करा था, बकवास मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो बोलो। नीचे है ना वो नीचे क्या है? की लिस्ट में नीचे। इधर हाँ, और नीचे लिस्ट में यही है नीचे ऐड अगेन। हाँ, द नॉन स्टीम उस फोल्डर को रिलोकेट करके उसमें पीक को स्टिक कर। ब्राउज 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 that I have your fortuitous arrival and हाँ। most outstanding assistance to thank for my continued वो आप देखो 2 सेकंड चल रहा है। Either way, तो मैं स्टीम मत करो, मेरी फोटो वापस रिवील हो जाएगी। ए यार स्टीम पे useless to Rerir. I doubt he would have अरे retreated so किधर readily गया? otherwise. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. मैं अभी नहीं, थोड़ा अच्छा देख लेते पहले। Ah, I see. To use the Lightkeeper's जो मेन गेम है उसे ही करो ना सीधा। I did not inform ओपन anyone कर of दो। true whereabouts, so he should have had पर more तुम भाई ऐड difficulty कर tracking me down. They alone have the एक बार ability ओपन to करके देख ले, quickly चल भी pinpoint रही my है कि position. चल रही Our Sergeant Major has a Kuvaki-powered device that can be used to देखो। detect others who bear a lantern. अरे कहाँ गया? They usually don't pay my whereabouts much ओपन mind सीधा। unless they ओपन कर absolutely दो। must find me. इसमें कहाँ है थी? Yes. Where did you pick this up? तो 25 बार इसके दिखा रहा है It must be अरे मैंने खरीदा था ना, से पहले फिर वापस मैंने वो कर the दिया। area. Who तो इसमें पड़ा है, seems dropped वो रिफंड कर दिया। the moment they saw the wild एक बार हटा hunt दे। ready to strike. ऐड कर। किधर से हटेगा? Well, at least they're ओपन not हो। dead. ये इस जगह से गेम हटाओ। ऐड Were he to use it, that तो device है ही। likely failed to act as it should, owing to abyssal interference. So not only is this Rerir ruthless, but a purveyor of dirty tricks too. You might not be familiar with Sergeant Major Sosi. अरे वो बड़ी सी लिस्ट को डाउनलोड करा था। To every mission. Our deployments are subject to orders from headquarters, and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. As such, he was very seldom able to go back and visit his family. He worked so hard, seeking to produce excellent results that might convince them to transfer him out. But every year they would say, wait a little longer. Wait a little longer. He often wondered if it was because he was lacking. In truth, everyone had nothing but highest praise for him. But good work does not always lead to good outcomes. The higher-ups would think, he's doing great where he is. Let him stay उस there फाइल को for डिलीट कर। a most convenient choice कौन for सी? them, at least. ये वाली? Whereas his subordinates would think, wouldn't Huh? it be a shame if we were to lose such a talented, easygoing boss? यही ना? So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night, and a lantern was slowly lit for him alone, that no one could see. One that has played out many times throughout history. Another reason to take this Rerir's head. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt anomalies. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Why did he have to die? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire destroyed the fragments he wanted to collect? Could you take me to the scene of the crime? We shall just have to exercise some discretion then. Come on. Let us be on our way. हो गई, चलो ठीक हो गया।
रुको इसे डिलीट कर लो इसको सीधा ऐसे डिलीट कर दो डिलीट फाइल्स ये बातें बाद में कर लेंगे Take me up! Open fire! यार सुबह म्यूट मार दिया मेरे को क्या करना है? डिलीट मार फाइल यहीं से मारूं की बात है I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough. Taming the beast within is tougher. आओ क्वेस्ट कर यार I understand the situation more or less. Much has happened, I see. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. It seems my fellow Lightkeepers do not wish to make this case public. Yeah. Guess Nasha Town's already been enough of a mess. Let's stop here. Any further and the Ratniki might detect us. Since you two can enter, I'll have to request that you kindly pick me up once you're inside. Oh? And how are we supposed to do that? You'll know when the time comes. See you later. Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident, so guess we've got to trust. Hello? Ah, you're the special assistants for this investigation, right? Yep, that's us. Well, you're just in time. We're basically done investigating the crime scene. All that's left is to finish writing up some records. Then properly dispose of Sergeant Major Sosi's remains. If there's anything else you'd like to look into, this is your last chance to do so. Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, an unexpected accident caused us to miss him. But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough's not far off. We'll do our part too. All right, we're going in. See you later. Phew, we're in. Thanks to Nefer's reputation, once again. But we still know nothing about how Flint's is gonna enter, or how we'll pick him up. Never mind how we'll leave later on. Something the matter? Huh. That looks like Flint's lantern. But where is he exactly? Well, we've got the lantern. What now? Oh, Paimon almost screamed out loud. This lantern, I calculated that you would have already entered. So, as I thought. But let us leave. Identical powers must flow from the same source.
Was the Wild Hunt, then, that took my form and killed the Sergeant Major? But To sow chaos by... if the Wild Hunt's true form is powerful enough he would have no reason whatsoever to pick quarrels with individual ants. Let's look again more closely. Well, that makes things simpler. In that case, allow me to disturb the fallen. May the ghost flame guide your spirit. May you rest in... When we fought... Oh, if we can't get any leads, we might have to go back. Oh, the longer we're stuck... You mean... I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? No, that's not right. It doesn't mean that the components are damaged. But the real problem is... Yeah, he even helped us find the mate. It could still be a coincidence, but considering... The Sosi you met could have... That's right! You mean Hintsa? We had a short chat... I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah, yes. Remember to pick me up by the window. Oh, it's you two. On Flint's. Given the hour, I guess it must be an emergency? It is indeed. Our sincerest apologies for interrupting your... We are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major Sosi. We'd like to know if he has sent you a request for maintenance to be performed on his mechanical arm. Sosi. Oh, so the rumors I heard, are they true?
You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. Just a moment. I need to check my records. Thank you for your understanding. Got it. 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, I had run out of the required components. His mechanical arm is especially sophisticated, having been designed by Aino personally. The parts, too, could only be made by her. As such, they usually take several days to arrive. In fact, this time, he even asked me if we could push his request forward. And I understood, completely. Not being able to use your hand, that's rough for anyone. But even more so if your job involves fighting out in the wild. And eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately. What's with those faces? Everything all right? You've provided us with some very crucial information, Hintsa. You have our thanks. We can't make everything public yet, but once our investigation is complete... No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Good night. Hope the investigation goes well. It seems that it is as we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while repairing the cannon was actually Rerir, and 8 days ago he had yet to act. But at some point after that, he attacked and imprisoned the Sergeant Major. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus Rerir had no opportunity to discover the malfunctioning mechanical arm. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant Major's arm. And You're saying he thought no one would realize his mechanical arm is actually made of some kind of black muck on the inside, so long as it worked, right? Still seems like there's a lot of guesswork involved here, but it mostly makes sense. this also has me stumped for the moment. The cannon has always been used to destroy the Wild Hunt, and it works as intended. But how would that help Rerir exactly? Assuming he plans to collect the fragments within Wild Hunt anomalies, firing the cannon worked. So we solved one mystery, only to dig up another. Whew. This is getting Paimon kind of down. In sleep. Yes, I'd say it is high time we took a break. Seems like there's a lot left to investigate. We'll have to fight Rerir eventually. Hello. And we'll do a poor job if we're not well rested. भाई मैंने try करी. Totally get us to sleep first. Animation में. भाई but try तो करो आप. अरे A reasonable suggestion. I have no doubt that my quarters have been turned My inside out God, by now. God, At any rate, my colleagues have never failed to live up to my expectations of their discourtesy. Well, guess we'll just have to pick you up as usual. That would be good, yes. Feel free to put the room costs on my tab. Pulse तो है. यार मेरा यही वाला बस बैकलॉग चल रहा है क्या हुआ इसके बाद फिर वे को साइन ऑफ द भैया सिस्टर वाला भी क्वेस्ट है Phew, back inside. We can finally take a breather. Okay, Paimon. I suppose we could all take a moment to unwind. यार आज As I राइवल्स recall, खेलता our है first meeting took place not far इधर from 15 लेवल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा जल्दी भाई the nostalgia. हाँ एक सेकंड रुकना Had you ना. already क्या बोलते set राइवल्स sail कल मैं जब बुलाया तब तो आए at नहीं. that time? 15 लेवल हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ. 15 लेवल कर दो ठीक है आज अपन रैंक पे Words truly do fail to capture your superlative वो तो insight. छोड़ो. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the अरे fragment मतलब in minuscule छोड़ो amounts when we first met. जब मुझे बुलाया तब तो आए Or नहीं. I might have been in for a real interrogation. Yeah. Hard to say how that would have played out.
We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. You mean to ask why I'm going this far to आप oppose क्या him? पुल कर रहा है? जैसे लूना ही पुल करते हो. Covered in more mysteries than Paimon could मेरी shake तो a यूं ही spear at. करेगी. You can't just get out of explaining और yourself by तुम making लूना की lame छको ना. excuses. जितिन भाई. All right. अरे मानता I यूं suppose का you बट do फायदा owe नहीं है. some honesty. Your deductions निकाल have लो been लूना quite निकाल लो. correct. ठीक है. तिकोना का कैश. Should one wish to conceal oneself within a lantern, elemental power alone is not enough. You know humans अरे मेरे well, इसमें अभी नहीं आया. and naturally you understand Onslaught their बोल रहे हो ना limits. आप? But some things that humans would वही consider बोल रहा हूँ ना. difficult Sigen are Onslaught. quite normal in the eyes of non-humans. So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how Snezhnaya was once the realm of the Fae? This race is no longer of any importance, but they still exist. As evidenced by the अरे आपको fact अबिस that करके I'm दिखाता हूँ. standing before एंड you. गेम देखना है ना आपको. आपको अबिस करके दिखाता हूँ इसके बाद. स्टोरी का थोड़ा सा खत्म हो जाए तो फिर मैं अबिस करता हूँ. मैं अभी बोर हो गया यार. तब से इतनी I once यापिंग. turned my heart toward humanity, आपने and अबिस thus नहीं did देखा तो I मैं आपको अबिस करके experience दिखाता हूँ. loss. When you realize you are floating in the middle of a vast बहुत ocean, यापिंग चल रही है. you cannot help but feel that आधी swimming चीज in से कोप any चल रहा है मेरा direction would दिमाग be में. equally meaningless. Would it not be better then to simply sink? But before I could sink to truly आपने कौन सी टीम lifeless यूज करी? depths, वही टीम मैं भी यूज chance करता हूँ. had it ब्लूम that I मत should be बोलना. awakened by a band of Ratniki. They were facing a horde of abyssal monsters, and could not last against such a disparity in strength. Yet none fled. Those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive to all light. And the first light I saw upon awakening was that which shone from... Is that why you chose to help them? Perhaps I was moved by their valor. Perhaps I simply saw my past self in them, and was moved to action for the मेरा first अबिस time खुद in a करूँगा. long, नहीं long नहीं मैं while. पूछ रहा हूँ आपने कौन सी टीम यूज करी कि आपने करा ही नहीं अभी तक. But I was freshly awoken. मैं पूछा तो कौन सी टीम and यूज my करी. आप बोल powers रहे हो so कि मैं खुद limited. करूँ. I could not prevent casualties altogether. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the Final Night Cemetery. Well, not exactly. I was just more familiar with them. आर्लियन मूवी का यूज. So joining up seemed the most आर्लियन convenient मूवी way का to दोनों. experience human life. सेकंड में तो इलेक्ट्रो चाहिए. आपने आर्लियन मूवी का कैसे यूज कर ली थी? मतलब Well, फर्स्ट वाले में. I believe it. Besides, I'm well past the age when one might believe in things that must be done, nonetheless. There are still some things I will not allow to आपको कौन सी happen. टीम देखनी है? The chaos that Rerir has रेड been stirring नेशनल up या is one फिर of them. फरीना के Tomorrow I साथ should वही go and नेशनल check our टीम. records मैं to यही दो see if टीम I मिस can कर find रहा हूँ. any connection ये between एकदम ही the Wild टेजर वाली Hunt, टीम देखनी है Rerir, आपको. and the canon. फर्स्ट हाफ में. Will you need us to get you where you need to be? Oh, I'll be fine. सेकंड में तो मूवी का I यूज keep कर a रहा. backup सेकंड में copy at my आर्ले residence का in case of emergencies. आर्ले से सबको डैमेज नहीं जा रहा. Won't there be Ratniki watching it? Thanks for the reminder. I आप believe टीम they'll बताओ. have मैं checked वही my टीम बताऊँ. place, but they won't have stayed. All things are मैंने arranged ओवरलोड ट्राई करी according थी to their लेकिन उसके लिए वही priority. एक ग्रुपिंग चाहिए. नहीं And तो we एक एक को lack जाके इंडिविजुअली manpower मारना for भाई such an पॉसिबल नहीं. open-ended stakeout. And even if someone is waiting, I have ways around अभी that. पूकी पुल करेगा. I am the master of my own house, after all. All right then. We'll trust you. हाँ कर रहा हूँ मैं बस 2 सेकंड. We sure तो इसको ended up कैप्चर chatting कैसे for a करूँगा? while, huh? स्क्वाड करेगी I एप्लीकेशन am बनाओ. super tired now. But, you know, feels like we can breathe easier. Now that we know you better. पुल्स वो 20 कर रहा हूँ ना अभी. मतलब 15 I didn't take you for a cautious 100 sort. देख रहा हूँ अभी. Anyway, I hope you'll help me keep this a secret. I'd prefer others not to know about my past unless strictly necessary. Nor do I want to Consider attract more 20 pulls trouble हो on जाएंगे ना. account of being a fae. डिस्प्ले कैप्चर बनाना. कोई अलग बन जाओ.
ये नहीं वाह भाई स्पैम। भाई जल्दी करो भाई। 2 सेकंड 2 सेकंड। 154। हाँ टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। है अरे भाई, भाई क्या कोइंसिडेंस हो सकता है। ये मुझे भाई क्या हो क्या गया? कोइंसिडेंस हो सकता है। अच्छा इस स्ट्रीम पे नेस दिया है जैसे आपने वो बजाया, वाह टमाटर बड़े मजेदार। भाई साहब, भाई तो टाइम पास मत कर रहा, तुम स्ट्रीम करनी है। कर तो दी। क्या करती। स्ट्रीम देखो अब। कर तो गई, इसी पे कर दूंगा। भाई तेरे तेरा इसमें लव। तेरा वो क्यों नहीं है। क्या? करो पुल करो भाई। देखो 56 की बेटी है, ठीक है। जीवो भाई, क्या चाहते जीतूं हाँ। तिकोना होगी तो जीत जा भाई। 66। 56 हो गई, ठीक भाई है एक कन्वर्ट मार के बना भाई। भाई। फिश बनाओ एक। वही वही करूँगा। कन्वर्ट होने तो चाहिए, अरे है चलो ठीक है। अब गोल्ड है। अबे अबे ओए, तिकोना बच ना। गया, बच गया। अबे भाई हाँ क्या हाँ, ढक्कन आदमी देख है लिया था भाई। मैंने, देख लिया था मैंने। आंदो दी भाई। बिल्कुल। 57। हाँ यार, यार लिंगा ही आएगा क्योंकि 22 ही आएगी। चकराना। भाई लिंगा आ गया ना भाई। आ गई। आ गई चिकोना आ गई भाई। आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। भाई Twinkling star just tinkled to the ground. क्या मतलब डबल विंग में डबल आएगी क्या। नहीं डबल नहीं आया। ठीक भाई, मेरे को तो हारना था। बिल्ड करके आना है। नहीं मेरी वो गारंटीड हो जाती है ना। किधर है? The divinity may foresee the future अरे of the रुको, world, but I doubt they can. हेलो, वेपन पे भी करो क्या? स्पेसिफिक विंडो बस तुम कैप्चर मान नहीं लो है। वेपन पे। कैप्चर करना होगा। उस पे कितनी बेटी है मेरी? 0। हाँ पर के होगा लिए इसकी क्रिएट बेटा करना स्कोर। Paimon's lips are sealed too. All right. Thanks again for your help. Good night, you two. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. चलो भाई आ गई। अरे चास्का की टीम। मेरे भी पुल कर दोगे? हाँ दे नहीं भाई, भाई, मैं करता हूँ। चल तुम क्यों अलग कर। करोगे भाई। भेज। अरे इसका वेपन कौन सा दो?
कौन सी टीम देखनी है? स्टैंडर्ड वाला वेपन देना। स्टैंडर्ड वाला तो है ही ना। हाँ कर दूंगा। नहीं तुम्हारी वेदरिंग वाली आईडी तो है ना मेरे? हाँ वो तो मैंने देख लिया था। तुम्हारी वेदरिंग वाली आईडी फुल किस पे करनी? बेसिक्स भी आ गया था। वेदरिंग स्ट्रीम करनी। हेलो हेलो। इस पे भी सेट मेरा भी कर लो भाई। मेरी भी 50 रुपीज बता दो यार। कर्ज लगा हुआ है। कोशिश कर। बेचता और रुकूंगा। नहीं तुम्हारी तो है। मैंने डिलीट कर दी थी उस दिन। भेज रहा हूँ स्ट्रीम में। मेरे पे नहीं मिलेगा, मैं पुल करता हूँ। नहीं भाई आप स्ट्रीम पे दिखती है आईडी। भेजो भेजो। इनको भेज किसको भेजूं? आपके भी भेज रहा हूँ। पक्का? अरे मैं अभी जीता हुआ है 50-50 मैं जीता हूँ। टिकनारी से करके दिखा दो। टिकनारी भाई क्यों? टिकनारी से नहीं होगा। लेतम की आदत है मेरे को। टिकनारी से नहीं होगा। टिकनारी बिल्कुल ही नहीं होगा। हमने कैसे कौन पुल करे थे? मैंने जस्ट अभी स्ट्रीम में देखा कोई सिकवाना पुल करके जीता है। हाँ मैंने करा भाई, मैंने कर दिया पुल। चांस कैसे हो सकता है? चांस कैसे हो? पासवर्ड ये रहा। गलती से भी जैसे तैसे स्ट्रीम में मत दिखा देना। दिखा दो भाई तुम तो जद नहीं। हाँ आप कुछ भी किस पे करना है यूनो पे? हाँ यूनो पे कर लो। मैं इतना हार रहा हूँ ना। इतना हार रहा हूँ। मुझे सिखाना भी चाहिए पता है। 80 पुल पड़े हैं। आई थिंक जल्दी मिल जाए तो सिकोना करे। ये इन्होंने पुल नहीं करी क्या? किसने? ये क्या नाम है स्ट्रीमर विष्णु। ये पुरानी टीमों में इन्वेस्ट करते हैं भाई। हद। There is no escape. Tell me what you see. कल तो हो नहीं रहा मेरा। सी में ही है ना? हाँ कर दो। Inazuma shines eternal. जिता देना है बहुत दुखी हुआ है। काट दिया मैं जीता था लास्ट। मैं तो अभी दो पिछले तो 50-50 जीता हूँ। छोटी पर और की पर आपने अभी पुल कर दिया। भाई खाली अभी किया। तभी भी। मतलब वो गेम हाइड से अटैक कर। तो भाई There is no escape. 0 पीटी होगी। नहीं 5-6 हो सकती है। क्या नहीं होगा। Now you shall perish. नो कर दो। कुछ रीति रिवाज होते हैं। हाँ सब कर लिया भाई रीति रिवाज। हाँ ये सब कर लिए। ये सब कर लिया। हाँ कर दो भाई निकाल दो प्लीज। Erase all threats. आ जाओ। गर्ल जीतना बस। Show no mercy. लॉन्च करने वाला था। I'm going in. Pyroclastic surge. क्या है? अब इससे निकाल। मैं दुख हो रहा है भाई। अरे ये मार दिया। Everybody आ गया बस। get
नहीं आई तो 20 दिन पड़े हैं, कर लेना। इधर उधर से तो हो जाएगा। कितने हुए? 3 30 बनाया, 30 ना, ठीक है ठीक है। जीते गाइस, मैं बोल रहा है। अबे अब कितने हो गए? 49। 8 कट गई यार। वैसे कुछ वेपन अरे ओपन नहीं चाहिए मुझे, वेपन ओपन नहीं चाहिए, वेपन 59 यहाँ हो पे ले गए। लूंगा मैं। There is no escape. Strike a pose. 69 लास्ट है, Not too far now. अब 59 हो गया। लास्ट है अब तो है। 69। अब नहीं आई तो सिंगल। बाप रे 69 भी नहीं आई। सिंगल कुछ नहीं होता भाई, सिंगल अगर कर सीधा लो, 10 हो सिंगल गए। कर लो। नहीं नहीं नहीं, अरे सिंगल कर सिंगल लो, सिंगल कर लो। मैं कहीं और भी डाल दूँ, डबल नहीं चाहिए। ओए आ गई भाई, मेरा लैग हो गया। हेलो छी भाई, चलो कल गर्लफ्रेंड नहीं करे। अरे करते ना जरूर ना, अर्ली आई करो 10 करो, अर्ली आई। Barbados. Got us. Shine down. Torn to oblivion. टॉप में हो गए कोरल, कोरल कोरल सॉफ्ट। Illusion shattered. पता ना था। Not too far now. Go. You're free now. पक्की बात। Hear me. Inazuma shines eternal. अब ना आ रही है, अब सीधा पेटी में जाएंगे। क्या टीम हो जाएगा। Strike a pose. Time to say hello. अब ना आने वाली है अब। I swear by my sword. अरे आएगी भाई, आएगी। Now you ऐसे shall हाथ पे perish. नहीं। हार गया भाई, हार गया। There is no escape. सिंगल कर लो, कहीं करें। अब खत्म हो गया भाई मेरा। अरे 20 दिन पड़े यार, फार्म कर हो जाएगी। फायदा नहीं है। क्यों अगर मेरा गेम तो सही है। Let's fly. मोटे से ये बिल्ड करना पड़ेगा लग रहा है। Open fire. क्या हुआ? वो नाइट वाले वो वाले करेंसी मत कर देना। Light it up. I'm going in. ये Show no mercy. ये मत करना मान। 900 वाला सेव कर रखा है, इसे सेव करके गेम में डिलीट कर। Open fire. कितना हो गया ये? C2 वाह यार, मैंने टच भी नहीं करा है, पता भी नहीं क्या करता है। Get to work. मैंने भी है दो कुछ नहीं बिल्ड कर रखते मैंने। Your journey ends here, Lord of बेटर करेक्टर है। Your sacrifice is ready. छोड़ दी पर भाई ये चाहिए मुझे भाई 73 Pounded to the ground. Everybody stand back. Show no ये भी mercy. चाहिए, ठीक How dare you? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो मेरे पास चाहिए, Not done yet. ये भी चाहिए, Take me up. ये भी चाहिए। ये तो अभी तो गई है। अरे पर नहीं निकाला ना, मैं स्वर्गी पर गया था। ये भी चाहिए। हमने उससे क्या निकाला जो बिगिनर का वो बैनर देते हैं। उससे मैंने कुछ नहीं निकाला, हार गया। उससे क्या निकालोगे आप, कुछ सोचा? किससे? वो जो बिगिनर का बैनर जिसमें याओ है, जैजे है, चूज कर सकते हैं जिसमें। हाँ तो वो तो गया ना मेरा, गया वो तो मेरे को नहीं। अरे अभी थोड़ी निकाल लेते हैं, हो गया अभी 3। Wind, hear me. Torn to oblivion. अरे नहीं मतलब मैंने उसको पुल नहीं किया, 20 पुल कर रहे हैं पे वो भी मैंने नहीं कर रहा। मेरा तो बिल्ड भी नहीं है, चलो काम चलाओ बिल्ड है।
मेरी 2 टीम हो गई ना। Illusion shattered. पीओए में भी अब ज़्यादा फ्लोर करती है, जगह करती है। पीओए में 2 टीम है मेरे पास, प्रोलोगा की और घाटी थे कि अब मिडिल टावर रह जाता है मेरा। उन लोगों को क्या कैंडल है? और इसकी Shine down. Not too far now. Time to say hello. नहीं वो नहीं निकाल रहा। 2.1 स्किप कर 2.1 और सीधा सीजन आने दो चीज़ की किट। है वो क्या है? हैवॉक तो है, पर क्या डैमेज करती है? क्या बताओ उसको, वो डिप्रेस वाला बंदा जो आ रहा है, जो वह क्या नाम है उसका, चाइनीज नेम है, हाँ चिया कीचान क्यूयू पता नहीं वो काम चिया का दिखाना, टीम दिखाना। एक सेकंड 5 प्रीमो मिल रहा है रुक जा। एस्ट्राइड मतलब आ दो इसको। अरे कहाँ जाएगा? Be free. Go. You're free now. Barbados, guide us. Inazuma shines eternal. बहुत अच्छा है। और काटे दिया। थोड़ा इसका देख ये देख जीरो सिर्फ यहाँ एक कैंडल लगा करना है। बाकी सबका बैठा बाकी है। Now you shall perish. ये मेरा डबल 150 ली थी कैंडल लगा। हम लोग 50 80 पे हमारा जीरो है अभी तो फुल करा है किसी ने। लोग कह रहे हैं वो आएगा ना चाइनीज वाला बंदा, वो उसका सपोर्ट है ये। Torn to oblivion. हाँ जाल बनाना भी इजी है। There is no escape. Be free. Time to say hello. कैसे करेंगे? Wait, hear me. Now you shall perish. हाँ तो बोल रहा निकाल लो भाई सही है रास्ता है अगर नहीं होती तो नहीं मत जाता मैं तो कह रहा हूँ निकाल लो और बहुत मस्त है। Farewell. Tell me what you see. Barbados, guide us. प्रोलोगा नहीं है ना तुम रहने दो फिर अब नहीं तो ज़्यादा दक्षिणा निकाल लो मेरे को तो देखो वही बढ़िया। Fulfill our pact. Suffer the wrath of me. Light of the blazing sun. Let's run. अभी नहीं कर रहा और उसको भी कौन सा रोवर है, एरो रोवर। Locked on. अभी तो मैं वो कर रहा हूँ Rise with the sun. अरे ये अभी आएगा हाँ आज बढ़िया है देखा नहीं तुमने मुझे पता था From the sky. Incinerate. Take the मेरे को एक ये दिखा S3 बढ़िया ना और एक ये मिली थी एनकोर मिली थी ये मैं इस पे आ रहा था कैंट्री लाती वह डबल आरपीटी गई थी 80 पे आई थी और 80 पे ही फिर कैंट्री लाई। यही होता है, मैं भी बहुत बार गया हूँ, काल रोटा पे गया हूँ, 200 पुल्स लग गए उसके और उसके वेपन मिला के, और जानी को भी 200 पुल लग गए थे मेरे को। लकी खराब रहता था, क्या ही करें। नहीं हो रहा है। अरे तो वेपन निकालने वाले तो मैंने सुना सिकोना का। ओ स्ट्रीमर क्यों आप सेव करोगे? आप ही कह रहे थे उस दिन मैं सिकोना का वेपन निकालूंगा
बोला था यार ऐसा मत बोलो, मेरा कान खराब है। अच्छी भाई मेरे को ये इससे पूछ लो, यही तो था साथ में। देखते हैं मेरा वैसे 50-50 जीतना तो बस। सोचा था गर्लफ्रेंड ना निकाल लूंगा, वो दूसरा बंदा नहीं निकालूंगा, लूपा के साथ चलाऊंगा। हाँ ब्रेन फ्यूजन है ना। हाँ फ्यूजन है ना, लूपा भी फ्यूजन है। वो स्प्लिट डैमेज करती है, लिबरेशन डैमेज करती है, और एक और एको स्किल। लूपा के साथ मतलब काम चल जाएगा बस। ये सोचा था मैंने। अब 50-50 आ रही है, अब कुछ ना मिलने वाला। मैं तो चाहता था मैं हारूं अपनी 50-50, क्या ही करे। ताकि मेरी चीज़ का गारंटेड हो जाए, पर जीत गया। शीशा की किट आने दो एक बार। कुछ सीजर्स के साथ है भाई उसका वेपन। हाँ उसका वेपन सीजर ही आ रहा है। वेपन का टाइप क्या है वो देखना। इसको तो वो दे देना, वो वाला वेपन, स्टैटिक, क्या नाम है उसका। अरे स्टैंडर्ड वाला हाँ स्टैटिक मिस्ट है आई थिंक नाम का, काम कर जाता है वो। अरे उसमें हार्ड पिटी आ रही है स्टैंडर्ड पे, नहीं तो निकल जाता। 60 कुछ हो चुकी है तो कितनी में देखो एक बार। इसमें हार्ड पिटी आ रही है 5 10 15 20 25 30 50 55 60 569 पिटी हो चुकी है। भाई हार्ड पिटी आ रहा है इसमें। मिलने वाला है मतलब 2-3 फुल में मिल जाएगा। कहाँ कोई चीज़ मारना है। को मारो। वो एआर क्या होता है इस गेम में, यूनियन लेवल कितना है? कितना यूनियन 67। हाँ हाँ हो गया, यूनियन मैक्स वाला हो गया। मैक्स इससे आगे भी है क्या? अरे मतलब वो क्या कहते हैं जब रिसोर्सेज एकदम सही मिलते हैं, एकदम बढ़िया वाले। 67 आई थिंक 70 के बाद मिलता है क्या, या रिसोर्सेज सही मिलने लग जाते हैं। मतलब आप वो प्लेट यूज करोगे ना स्टेमिना। नहीं वो डाटा बैंक लेवल से होता है ना। वो नहीं, अभी आप ये इसको करोगे फार्म, अभी बॉस का मैट, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। मटेरियल ज्यादा कौन से यूनियन में मिलता था? 60 के बाद मिलता है तो एको से। So much noise. What's going on this time? Hey! Where's Flint's? Is he here? We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Our other guests are resting. Resting? We're all about to be done for, and you're talking about rest? Flint's is a wild hunt shapeshifter, here to deceive us all! If we don't get rid of him now, there'll be no end to this! You'd better give him up. If anything happens, your business here is done for. You want that, huh? Or are you in cahoots with him? You with the wild hunt too, huh? What happened? Did something leak out? But we were so careful last night. How did anyone see us? What do you mean? Duh! This is so confusing! What do we do? These people are no match for Flints, but they're super heated right now. It's not like all the unusual stuff about him will make it any easier to explain either. भाई क्या डैमेज कर दिया भाई फ्लो लोगों, मजा आ जाता है। भाई Okay. Hey!
My apologies. My apologies. अरे आप पुल कर रहे हो? Calm down, everyone! What in Tevat is the meaning of this racket? Are you intent on depriving both the Voynich Guild and the Curatorium of Secrets of even a moment's rest? Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules? Call a few of your boys and have them thrown out. And what hole did you crawl out of? A watering hole, of course. The one you've just disturbed. A place to get a moment's respite from all the recent unhappiness, and to escape from all this talk of the Wild Hunt, or strange ghosts and phantoms. Who'd have guessed people like you would come bursting in, shrieking louder than any ghoul? This is a matter of utmost importance. We've got solid evidence. All we need now is to confront Flint's face to face. Exactly. And you sure don't look like an impartial party either, Nefer. Oh, don't I now? How about this then, boss? Let them do their search. If they find their man, they can have their little chat. But if they don't, then they owe everyone here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. Wait, it's... All right. I suppose that's the only way. एक बार बैनर दिखाना If we don't let them in now, they'll be back sooner or later. एक second. What a mess. Oh, alright then. बैनर एक Well, एक्स्ट्रा मिलता है ना I'd say that sounds like an impartial proposal. What क्या? say? एक extra होता है. बैनर देते हैं जिसमें चूज कर सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं अरे वो ले देख लो भाई. अभी नहीं है वो गया वो. गया मतलब अच्छा काटा क्या है भाई मैंने. No sign of स्टैंडर्ड वाला Flint. नहीं वो हाँ वही ना जो beginner को मिलता है. But how can that be? Hasn't he हाँ, always time Done होता है भाई searching our... सैड भाई निकाल लेते कुछ इसमें. जानी आई थी ना जानी पे चालू किया था मैंने. जानी पे मैं 50-50 हारा फिर काटे थे गारंटेड थी मेरी. So, Paimon, you've been waiting to ask me something, haven't you? जानी पे चालू किया था मैंने. How did they even find us here? My inside man with the Lightkeepers informed me that you paid the crime scene a late-night visit. I surmise that you must have rendezvoused with Flint then, early everyone's, and amidst... So... and that's where I, Yehoda, the quick-witted, fleet-footed backbone of the Curatorium, got my chance to shine. While everyone was super focused on the argument in the main hall, I, alone, noticed an opening. I got her to climb up to a window to help Flint's out, only for her to return with nothing but a lantern. Aw, come on, boss. I was just getting हाँ started. सुबह स्टोरी कर ले. We initially intended to bring Flint's अरे back Apple to का the कर रहे हो. Curatorium and wait those people out, but I never expected this to be all that was left. I imagine, though, that he wouldn't have left something that was so seemingly important to him behind. Might he intend to come back and get it later? Maybe. I'm not sure. Well, he's out of harm's way now, so guess that's super important. Oh? What Paimon means to say is, we got lots of new intel to share. All right, then. Yehoda, contact the others. We're going to need all hands on deck. Let's have this discussion over at my place. Here's the thing. बोलो बोलो. हैं? अरे वो तो कर लो. पीक में नहीं आ रहे थे. पीक में तो छोड़ दो. फिर मैं सीधा तो पहले आता हूँ. पीक में आ गया फिर बीच में आ गए तो
I see. Is he gonna be okay now that he's on his own again? Earlier, he said that the fragment had gone still, so it's probably of no use to Rare now. In that case, Rare shouldn't have any reason to keep pursuing him, right? If I were him, I would have simply turned my attention to collecting other fragments. A reasonable course of action. Remember what we heard back at the tavern? The actual number of Wild Hunt anomalies destroyed has been greater than Lightkeeper records would indicate. Some of these must have been Rare's doing. He must have been seeking more fragments. This much is pretty easy to understand. Why would he pretend to be Soci and put so much effort into getting the cannon up and running again? Maybe because that'd be more efficient than having to clear anomalies himself? हाँ तो ये दो जीत गया ना लगातार 50-50 Yeah. Oh, why don't we find a few of those fragments ourselves and use Kuvaki to carry out a little experiment? Our lab could certainly accommodate such a test. In other words, we gotta destroy a couple of anomalies and collect fragments from them, right? Lightkeeper operations have just about ceased following the Sergeant Major's passing. Meanwhile, the Wild Hunt continues to grow in scale by the day. I fear only we can keep the situation under control now. Then we best act fast. Paimon's got a bad feeling about this. A feeling we all share, I'm afraid. There are 3 Wild Hunt sites that must be dealt with urgently. But I believe we have the capacity to handle it. Works for me. Ineffa and I will take our workshop assistants to deal with one of the sites. The Curatorium will handle another. And we Frostmoon Scions shall deal with the remaining one. Paimon didn't think she'd ever get to see everyone here carrying out a plan together like this. Never mind you. This is a first for me, too. Let's head out, then. We'll meet back up at my lab with the fragments. Understood. Time is of the essence now. Our foe could make his next move at any moment, so we must stay in contact with one another. Gotcha! Stay safe, everyone. Huh. Anyone seen the lantern? Has Flint's dropped by already? Well, considering what you said earlier, you know where we're going next, right? वहाँ थ्योरी देखो वो जो अगस्ता की दोस्त नहीं थी एंजल हेलो अगस्ता की दोस्त नहीं थी जो छोटी मतलब उसके बचपन में वो क्या नाम था उसका एंजल वो कह रहे हैं कि वही गर्लफ्रेंड है और नया रीजन देखो बहुत क्या लग रहा है थोड़ी बहुत फोटोज हैं
Someone's guarding this place just like he said. But, oh, where do we find the information he mentioned? This way. Let's move. We're running out of time. Ah! There you are! Okay, let's split up and make this happen. Or not! How are we supposed to read through this many files? Difficult, yes. But it is also our most efficient option to expose the true intentions of this Rarir. We need to dive into Nód Krai's history. Hope we don't land on our heads then. Ah! Ghost! That file suddenly moved by itself. This is a graveyard, right, Flint? Many strange things happen here, but this is not one of them. ये तुम खेलो 15 लेवल का स्टोरी अरे टाइम लगेगा 15 लेवल करो ना करना तो पड़ेगा ही तुम खेलोगे Wild Hunt Phenom लो भाई कितना लेवल हो रखा है 12 Are we being given hints? I feel no hostility. On the contrary, it seems we're being aided somehow. Really? Hey, seriously, another one? अगर सही में दोनों चीज़ दोनों नहीं Paimon will read this one. सारा स्टोर कीपर ने काम बिगाड़ दिया स्टोर कीपर की गुनाह में Phew! Finally finished. Oh, Paimon sure could use a long break from long words now. Hope she can remember. The material I've read through has all been about past Wild Hunt incidents of enormous scale. What about you? Paimon as well. Guess that makes 3 of us. Whatever this is, it seems to want us to notice something. Let's bring our files together and give them another look through. All right. Paimon will go fetch hers. All these incidents look pretty different. Wait. I've noticed something. Before the occurrence of these huge Wild Hunt events, a smaller scale one would erupt in the exact same location. And look, all these smaller scale Wild Hunt site reports share a common outcome. They'd be detected, but would go inactive before any forces could be sent to deal with them. They could then be sealed directly using a tide seal stone. Huh? But why? Some of these records are too old. I doubt he had regained the ability to act freely yet, or we would have met long ago. And here's another similarity. Kuvaki and nearby soil completely drained. Could this be important somehow? Kuvaki and the Wild Hunt are mutually opposed forces. We Lightkeepers previously believed that these small Wild Hunt sites would temporarily go inactive due to being neutralized by the Kuvaki present in the soil. But now that we've synthesized all this data, there is a key issue this hypothesis cannot explain. Indeed, despite the name, I would not call a tide seal stone's sealing powers watertight exactly. But for it to fail and the situation to deteriorate in such short order. Paimon feels like she's almost got it. Yes, that might be it. It could be that when Kuvaki and Abyssal energies meet, the stronger side will suppress the weaker one, and while Kuvaki can indeed destroy small-scale Wild Hunt anomalies, should Rarir be strong enough, the Kuvaki might be his for the taking in... Paimon kinda gets where we're going with this. What are you referring to? We had a real close encounter with the Abyss in Netland. It's a force that tries to taint everything. It's hard to explain in detail, but basically, your reasoning makes sense. Was there a gap between him pretending to be Sergeant Major Sosi and the cannon being... There was. Aino needed to make some adjustments after we finished those repairs.
Rarier, disguised as Sosi, left at that point, leaving him more than enough time to shapeshift into you, return to the Lightkeeper's office and set up the crime scene, before heading over to the cannon's target area. It all makes sense. And all that just for the fragment I had with me. It begs the question, what makes it so special that he needs it so badly? That's odd. We shouldn't have any I'll go take a look. Ah, it's an ibis. It's carrying a letter! Ooh, Lala must have sent it. She can speak to little animals. Let's see here. Situation urgent. The cannon began operating shortly after we left Nasha Town and is preparing to fire. It is locked on to Star Sand Shoal. Please return to Nasha Town and assist with all haste. Lauma. That's gotta be Rarier's doing. But why is he using the cannon again? Didn't he already fire it once before? No time for speculation. He's already made his preparations. If you recall, his body was incomplete when we last met. If this bombardment continues to increase his strength, he might regain his complete form. What should we do? There's no way we're getting back to Nasha Town in time. Let's go to the cannon's target site. That's where we should find Barir. And that's where we'll stop him. One moment. Go! Fly! Not a moment to lose! You're here, as expected. Humans, you never change. Always try, but it is also thanks to you. You've messed with the cannon again, huh? Sorry, but this round's not gonna go your way. Such faith in your companions. But will the inhabitants of Nasha Town understand why they wish to stop the cannon? I think not. When all they see is the wild hunt surging up everywhere they look, the cannon must seem like their only lifeline. This is the truth I have revealed to them. They did this all of their own volition. The zealous worship of power leads only to annihilation of equally zealous proportions. True power does not heed the commands of the weak. You were waiting for us to leave Nasha Town then. Of course. I imagine the one you call Aina would have managed to stop the cannon otherwise. Shame, then, that you proved one step too slow in their folly. The townspeople will bar the path of all who seek to stop the cannon. And your kind-hearted, weak companions have not the stomach to deal with them. The cannon will not be... Well, sir, you look most pleased with yourself. In that case, before you put us out of our misery, I would like to ask you a question, if I may. See this fragment? It once haunted your dreams. But now it seems useless to you. What is it exactly? That is my corpse. Sorry, what? My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos of time itself. But even so, my life and will were not extinguished. Every last fragment called sooner or later, they shall welcome my return. What do you even say? Huh. So the terror of the wild hunt was in fact caused by scattered pieces of your corpse. I guess they don't call you one of the 5 sinners for nothing. Serendipity guided the fragments to construct an incomplete version of myself, upon which I began collecting more within wild hunt sites across the land. But each time, the fragments I obtained were
That's why it responded so strongly to you. Only by retrieving this most critical piece could I gain mastery over the turbulent Kuvaki energies and be fully reborn. Hence, you fired that first shot, hoping to regain enough power to seize the fragment from me. Are you completely crazy? Weren't you afraid of dying? Dying? Such power has no hope of killing me. It may destroy my form over and over, yet always I rebuild it. It may smash my flesh and crush my bones thousands of times and more, but that is of no consequence to me. What truly infuriates me, however, is how you've destroyed my heart. All that suffering, everything I endured, and all for nothing. I've adapted to the strength and flow of this Kuvaki. The next cannon shot will multiply my strength immeasurably. It will not be a full restoration, no, but it will be more than enough to destroy any in this world who stand in my way. Still, I suspect the Kuvaki will have rendered you down to nutrients for my consumption well before you have the time to kneel before me. Traveler! Behind you! Look at that light! भाई मार ही नहीं पा रही है तो पिटे जा रहा है बैंड में आके Dang it! Who fired up the cannon पूरे without मैच my में saying जा so? रहा है एंड में आके पिट रहे Its हैं defensive barrier has also been activated, likely in anticipation of interference by malicious actors. The air is thick with fear and anxiety. It's spooking the birds and beasts. What exactly is going on? You're here. Looks like this was all part of Rarir's plan. Not only did he plant seeds of suspicion in people's hearts, seems he's now igniting them. Yehoda's gone in to scout out the situation. She'll be back any minute. I'm back! I'm back! Oh, it's bad out there. Rumors flying everywhere you turn. Something about the Wild Hunt preparing to spawn a wave of monsters, the likes of which we've never seen before. But that's not even the worst of it. Lots of folks don't even believe the cannon can prevent this crisis. So they're getting ready to make a run for it. Others are trying to make a quick buck out of this whole mess. How could they still be thinking about Mora when such a catastrophe is imminent? Unprecedented danger brings unprecedented opportunities in its wake. A chaotic मैं नहीं कर रहा situation पता can भाई bury much भाई wrongdoing. तू साले बैठ के भाई Even those who flee वीडियो without reserve put 5 मिनट पहले themselves at कर the ली mercy रेस of the divine. Is it क्या any कौन wonder, then, that some will aim to profit? After all, a gamble that अबे might यार rewrite one's पागल हो entire गया life is hard to come by. Even so. Well, seeing as you disapprove of their actions so strongly, Lady Moonchanter, I जतन भाई suggest that you be the भाई one कर to देंगे handle फ्री them. बैठ के Not like that's the only major फोन से problem on फ्री your plate right now. दिख नहीं रहा क्या खेल रहा हूँ Affirmative. क्या खेल We must quell the chaos in Nasha क्या Town खेल as रहा soon सही as है यार possible. Also, the unexpected सही है activation यार of the cannon entails a high risk of incorrect operation. This must be stopped अभी in a मेरे को timely खुद manner. खिला के बोल रहा क्या खेल रहा हूँ About that, people have been talking about how someone might come to stop the cannon. They've decided they won't let anyone in. What? I made that thing. They can't just take it from me. Let me over there. What are they gonna do? Stop me? They might. If Rerir has already formulated some countermeasure. For example, he might have भाई spread a rumor that the wild इतनी hunt हीलिंग would करी take इतना डर over. रहती हूँ इतने खिलवाड़े करती है Possibility high. If they view the cannon as Nasha Town's only hope, they are likely to conclude that anyone who tries to stop it must be with the Wild Hunt. We will face strong resistance, but they're just ordinary people. Brute force must be avoided, if possible. There's no time. Let's go into the town. I'll find some way to calm the townspeople. You find a way to stop the cannon.
Oh, you're back. And you have a letter? The traveler won't make it back in time, so they're heading straight over to Star Sand Shoal instead. Wait, what? Isn't that the cannon's target? Why would he go there? Assessing risk level. Maximum. So if we can't prevent the cannon from being fired... Then he's prepared for the worst. ये रिफ्रेश हो जाता है क्या न्यूज़ पे आने पे टाइम प्लेड और ये सब प्ले टाइम And we must ensure that his trust in us is not misplaced. Let's go. अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ ये रीसेट हो जाता है क्या ये क्या कहते हैं इसको प्ले टाइम में कितना Oh, see, प्ले टाइम reset. रकून की स्क्रीन वो नहीं Most of those we've met so far have been attempting to escape, so they haven't gotten in our way. But it won't be so easy from here on out. Looks like they formed groups to protect the cannon. If they believe that we're with the Wild Hunt, we'll have no choice but to force our way through. Is that Lady Lama? But are you really her? It's you, Rixa. I believe you recognize this power, having lived on Hisi Island for so long. It is not something that anyone else could imitate. I do, yes. So it really is you. But why are you here? Really, I believe you, but the others, well, they'll be on high alert. The townspeople have been misled into believing that they needed to activate the cannon. I am here to stop them. But... I know what you wish to say. Our island and Nasha Town have never had close ties. There should be no reason for me. But you chose to leave the island. You had the resolve and the courage to start a new life. It is unfair, unjust, that you should be dragged into this mess just as that life was about to begin. I seek to redress this injustice, not only for you, but for everyone here who wishes to live their lives free from this chaos. Please, have faith in our long-standing friendship, and that this is where my heart has led me. Thank you, my lady. Thank you. Please help us. Then come. I need you to step forward alongside me, and to do your part too. All right, I understand. Seems we chose the right person for the job. All right, everyone. Let us meet again later. Huh? You're not coming with us? We won't be able to calm this storm by our power alone. As such, I'll need to contact some... let's call them friends in high places. Let's go, Yehoda. Okay. See you again, everyone! That is, if we can. Remember these words. The road shall be paved with truth, and we shall pave it ourselves. It's you, Lady Moonchanter. It's her. Everyone, it's her. You're right, my lady. At times like these, we must rely on ourselves. I always knew something was off about you. You're actually some abyssal creature, aren't you? Time to teach you a lesson you won't forget. Please, calm down. They are clearly innocent. Thank you. You mind your own business. Lady Moonchanter, there's a child here! It's all right now. Go, quickly.
You're not getting anywhere near the cannon! The monsters you fear do not exist here. The madness you have fallen to has been the source of untold disasters. You think we had a choice? Destiny is no excuse for greed and destruction. The choice has always been yours to make, and it remains so, even now. Thank you for bringing us here. We can quickly overcome the barrier by going upward from over there. The cannon is all— Got it. Thanks, Lauma. Enough. Orders received and immediately deferred. Departure takes priority. Please, everyone, listen to me. I will not deny that we hold different beliefs. But in the face of the immense threat that hangs above us all, we must persist in trusting one another. Otherwise, rifts will surely form. If your fear is born of helplessness, if you flee because you know not how to fight, then follow me, you who are lost. I am no god, but so long as we hold our candles steady and unite beneath the same moonlight, no deception or rumors can be concealed from us. Let us resolve then to defend ourselves and to stand firm against the false illusions by which our foe seeks to beguile. Let's go, Anafa. This way up. Let's go, Anafa. This way up. This is making me dizzier than I expected. Adjusting route. Make ready. Out of the way, small fry. What happened to the path? Track missing. Fall imminent. Come on, come on! Get out of there! Whoa, nice! Preparing barrier breakthrough. Brace for impact. Knuckle Duckle, what are you doing here? Don't stop! You need that. Annihilation mode. Yeah. 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 Cleanup sequence initiated.
We gotta hurry! Scanning. Kuvaki ammunition fully loaded. Preheating complete. The cannon is going through its final pre-fire check. Alright, let's hit the emergency brake. Assessment. Not enough time. Emergency brake will cause internal explosion of stored Kuvaki. Damage assessment. Incalculable. Nasha Town likely to be blasted skyward. No! I mean a manual brake, the primitive kind. A manual brake. Understood. Roger that. We are out of time. So is the ice and fire theming? All your efforts have been futile. It is too late now. Perhaps you're right. Why aren't you running? Sigisato passa sax, intili potutos. Necritus necrus baptisi, que ondes tu zonos pentusi. Osesticos palatin pirantur misurucu, topirtu aethion veratum. क्या हुआ? अभी तक स्टोरी चल रही है. बोलते भी बंदा Well, that's not good. Sluggish, torpid. This body is a disappointment. I can barely muster 10% of my original strength. You've ruined everything again. Let me guess. You didn't get a human body back, did you? काफी लगा था 10%. What's with him? Verfnir, Vreindaughter, Flinders. Watch out! Whatever rationality he still had when he was searching for his body is gone. All that's left is the calamity you see before you. A monster fueled by nothing but his own obsession. Matters not.
having a heart, being human, it's all irrelevant. Completely and utterly insignificant. You matter not. शिपाई गेम की साउंड बंद करो ना गेम की साउंड आ रही है ना आपके माइक से मशीन कर लो अरे स्ट्रीम पे लेके आ रहा है डिस्कॉर्ड पे तो मेरे को Fools. Time to die. You too have the potential to be driven mad by knowledge. But the truths you seek are so insipid. How laughable that you should die for their sake. You're wrong. Ooh. The unknown is but a fog to be dispersed. Knowledge is the true pillar of the world. ड्यूटी कर लिया आपने You're not the only one who got stronger. Polonia! वाले मारा उसके बिहाफ में वो क्यों लड़ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा गायब कर दिया We're safe? It seems this young lady aided in our escape. You have my sincere gratitude, dear madam. The flowers here bloom in such peaceful silence. I imagine you would not have invited anyone here were it not an emergency. Oh? I take it that means you've been here before then. In that case, I count myself fortunate to be your associate. Columbina! What did you do that for? I studied his abilities inside out. Equipped Polonia with comprehensive countermeasures. We were going to settle the score. But he still broke through. Boy, Did my he one not? straight to the right. What? You expect a battle to be completely one-sided? I just didn't expect him to have no sense of honor whatsoever. Polonia would have been fine in a head-on clash. But battles just get chaotic. Oh, so you actually thought you could win. Have you been taking care of yourself lately? Your calculations seem to have deviated quite seriously. Perhaps you could try sleeping and rising earlier. Or you could adopt my previous recommendation and... Hey,
Listen here, Columbina. I tolerated your nonsense previously because we were colleagues. There's a Fatui warrant out on your head, and don't you forget that. Don't make me fight you right here and now. Oh, अच्छा I was just a एक्चुअली little ये concerned. वोवा में भी होता है ऐसे अमेरिका में और उसमें भी लेट ही आया है Just like अपडेट that time when वोवा you में weren't making any progress with your research. So you went and cooped yourself up all alone. That was none of your business! And don't you ever drag me out to one of your freaky hovels again! Come on, Polonia! Well, anyway, thank you. I was worried about you, too. Not only because the remains of the Eternal Moon Goddess cannot fall into his hands, but also because you've done much for me yourselves. And then well, I brought your associate along for the ride, too. But that was as much as I could do. You're not afraid to speak your mind, miss. I like that. Please, call me Flint. It is my honor to make the acquaintance of one such as yourself. Still, what do we do now? Riri's gotten stronger again. At this point, it doesn't seem like we can beat him. We did block most आशा of थोड़ा the तेज हो Kavaki, गया so I'd say we put a lid on his plans for now at least. Strongly हो गया But we still don't know what his Columbina aims हो are, गया and he may continue gathering Yes. power. So मैं we तो अभी must यही be सारे very careful. After you left, I could no Raiden हो longer गई sense his presence. पूरे ट्रैवलर को उसने सेंड करूंगा A question, if I उसको may, बुला लिया था kind Miss Columbina. When the cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, I saw several bolts of energy streak toward Hisi Island, only to be blocked. Did you also have a hand in that? No. I see. Curious. Oh yeah, the cannon veered off course in the end, didn't it? Paimon wonders how Aino and the others are doing. Let's head back and check on them. In that case, Miss Columbina, I shall not disturb your serenity any longer. Thank you once again for coming to the rescue. Go now, all of you. Do not worry. My strength still isn't returning. It seems my time is running out. वो कोलंबिया आई थी अभी हाँ जी भाई आवाज नहीं आ रही आपकी अरे आवाज नहीं आ रही म्यूट हो शायद Fortunately, we were able to minimize the harm. Only a few townspeople were hurt. But the Reikir of Solnari has now gained a complete form, while we still know nothing about his goals. It seems we have done something akin to releasing a vicious Kukusor into the wild.
देखो मैं करता हूँ सुन दो I'm sorry. Is no one here familiar with cuckoosaurs? Paimon knows what you mean, but that analogy seems more than slightly understated. He said that this world means nothing to him, so it is possible that he doesn't have a reason to fight us at the moment. If his objective had been revenge alone, we would likely have no recourse. Is there, still time for me to tender my resignation? Just kidding, just kidding. Don't worry, boss. I know there's no running now. So my cannon, my pride and joy was a hindrance rather than a help. You know what? I'm gonna dismantle it right now. That's right. Flint's, we'll need you to attend to the aftermath with the My thanks. For that and for everything else I hear you did to help us arrive at the truth. Had you been willing to show yourself in public more often, you would not have been so easy to isolate, you know. Point taken. I will give that some thought. I suppose that's one way I'd benefit from replacing Sergeant Major Sosi. You mean you're being promoted? Was Paimon the only one who didn't get that? कि वायर ठीक से लगाओ केबल या तो If you कान फाड़ दिए There's a certain gentleman I'd like to send off on his final journey. आई अब आई आवाज थोड़ी सी आपकी बस तो बेटी हो रही समझ नहीं आ रहा बैकग्राउंड I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. This man was like a lighthouse. Here he lived as if it were a mere matter of course, and brought light and grace to those around him. But people, once used to illumination, are apt to ignore the lantern's presence. Slowly, gradually, he came to think as such himself. I have achieved too little. I must do better. There is more work to be done. Perhaps his end was tragic. But I remain proud of the way in which he illuminated the path for others. Every shadow born of the light shall remember it. Oh, poor guy. I've heard that one too. Well, you're right. It may seem that our efforts were in vain, that Rerir achieved his, but we will pursue him to the last. Even if the outcome is not what we wish for. It is not dissimilar to the role of a graveyard keeper. We do not seek to bring the dead back to life, only to grant them peace. What are you two talking about? Care to explain? Okay. Either way, the Lantern Fae is not playing the leading role in these final. Lightbearer, with your blood you have paved the road to glory and justice. Even as we hurry on, bruised and battered though we may be, stay a while and look back upon the world and all its love and hatred until it closes. Thank you for everything, Sergeant Major Sosi.
Should we go after her? Or do you have someone else you'd like to meet? Ooh. Columbina! What are you doing here? Was it not you who recommended such walkabouts to me? Yeah, but aren't you afraid the Fatui will see you? Zandrone seems uninterested in my capture, and the others are unlikely to risk making contact at all. They have more troublesome affairs to deal with. Well, it's good to come out for a walk either way. So, how do you feel? Is Nasha Town to your liking? The flow of Kuvaki is somewhat turbulent, and the people are ill at ease. However, is this where you purchased the dishes you treated me to? Are you serious? That's what she's concerned about? Berries and fried meat? Well, we can take you to grab a bite if you'd like to. There's all sorts of delicious stuff out here that you won't get to try at home. You've been quite subdued. Thorny questions on your mind, perhaps? I could not gain any insight into his schemes, I fear, now that he has donned a shape and form. Selling his power short would prove a fatal error, but that power of his plays host to an obsession that borders on mania. I cannot say if that fixation is directed at the moons or at something else. Perhaps understanding the subject of his fixation shall prove key to repelling him in the future. Well, Zandrone's daily routine is highly irregular, while the doctor often orders people around. As for Arlecchino, was that not what you were curious about? Well then, have you been to that experimental design bureau of theirs? That weapon will play a key role in the Tsaritsa's plan. That's what I've heard, anyway. And what plan is that precisely? Well, I cannot say I care. I could look into the Eternal Moon's marrow for you if you wish it so. But after our previous attempt, I suspect your spaceship has been intentionally hidden away. Perhaps someone has certain truths they wish to hide from you, or from others, and I doubt there are many who could accomplish such a feat. I still wish to return to the moon that belongs to me. That is where the answers lie buried. That is my true home. Ooh. Interesting. You followed me this far. Why not show your face? Haha! Right, right. Right you are. I forgot to introduce myself. The name's Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. अरे वही जगह जहाँ इनका स्पेसशिप वो हुआ था क्रैश। वाह यार। स्पेसशिप पे आया कौन था? ट्रैवलर्स। What a pleasant surprise! अच्छी बात स्पेसशिप कहते हैं बेकार से हो रही है। Truly an extra slice of joy. अरे मैं तो करो वो की स्टोरी है। वो की स्टोरी। कौन कर रहे हो? जरा तो
6 पुल्स हैं। वैसे और अच्छा 7 हो गए। 3 और हो जाए तो करता हूँ 10 पुल। कितनी पट्टी क्या होती 28 की पट्टी है। This place is buzzing with activity. Huh. There's so much space on this thing. Wait, Inefa needs help? We should still head over and check on things. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? हाँ भाई हाँ हो गया। बी राइट बैक क्या करते हैं Oi. Inefa! We saw your notice and we're here to help! Huh. She's gone. Ah, Paimon and the Traveler are the first to arrive. Sincere apologies. I am unable to come down and greet you at the present moment. I will have to converse from up here. Inefa! What the... What happened? The logic of your conclusion is sound. But I would not use that word. After all, Aino is the one who did this. Wait, so Aino's the one who did this? Ah, good idea. Does this giant magnet have a switch or something? Request not feasible. Aino has locked down the control system. Analyzing further options. Conclusion. The priority level of certain rules must be lowered. Decision. I will temporarily override one of Aino's rules and inform you about the hidden control system. But first, I must be certain you will keep it a secret. Paimon didn't really understand any of that. But don't worry, you can trust us for... Sufficient grounds for override. Please proceed to the path to the side of the workshop and locate the robots scattered over there. Once you have located all the specific robots, you can unlock the control system. This is the back door Aino established for herself, as she often forgets the password. Okay, so we just need to collect all the bots. It's a bad. मुझे इन्हों के सब कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट था। नो वे भाई वो उसकी डेडिकेटेड सपोर्ट है। वो उसकी डेडिकेटेड सपोर्ट है भाई, क्यों नहीं दिखेगा इम्प्रूवमेंट भाई।
ये अच्छी गेम पे देता हूँ। इसे कैसे कैरेक्टर बन जो तीन कुछ एंड के का भी डिफरेंस Take me up. गेम प्ले देख एक बार पुल करने का मन किया तो हाँ Let's fly. अगर फुल वैल्यू अच्छी है तो पुल करो ठीक है गेम प्ले अभी ये किस करना है स्केच भाई कोई पर्सनल प्रोफेशनल डैमेज है इससे आप 11 सेकंड कम थोड़ी होते हैं रोड को ढूंढो एरिया में Wow! What a crazy hiding spot. I know wasn't taking any chances, was she? हाँ यार इतने सारे वोट को Zing Zap mechanical claw backup control चेक होना system मुश्किल now online. टाइम Enter तो any command. लग गया Command. Oh, you okay, Anafa? मैं देर से बोल रहा था पुल कर नहीं किया Inspection in progress. All functions normal. I am unharmed. I know adjusted the Kuvaki strength अरे to आज तो ensure वो that. भी आया है ना स्केच में चाहिए ना Compiling relevant data. वो भी तो Simplification in करना progress. In short, Aino created a new robot companion not too long ago, but yesterday, someone stole it from the. Oh, that explains. I used that. What? If Aino manages to use her genius for destructive purposes, all of Nód Krai will be facing a crisis the likes of which has never been seen before. When I attempted to stop her. Oh, you mean that notice board in the. Correct. According to my calculations, posting that notice had a 94% chance of success, much higher than all other plans. Yeah, it was pretty hard to miss. Fortunately, you arrived just in time. Aino and her robot fleet should still. You got it. Lead the way. Clink clank काम कर Legion, रहा हूँ it's time to move out. Move out. Our objective is simple. Track down the thief and save our comrade. Track down the thief. Save our comrade. Aino, you have to stop. Enough, How did you get free? I thought the Kuvaki would be more than strong enough. You can't do this, Aino. Aha! So you had help. Well, don't even think of trying to stop me. I don't care if I have to search all of Nód Krai. I will find the person who did that. And I have to go now. Or चलो मैं जा Crackling रहा 70% sweet will get dismantled and sold for parts. Clink Clank Legion, move out. Move out. What do we do? It's not like we can resort to physical. I know sugar intake has already exceeded normal levels this month, but given the present Right. situation, are either of you carrying anything sweet with you? Desserts are the only thing that can get Aino to calm down, and I have already used up the allotment I had prepared. Okay, what's with the staring? Paimon's not one to leave leftovers, you know. Fine. Paimon does have something she was saving for later. Aino, why don't you calm down for a second and have some dessert? Still treating me like a kid, huh? At least it worked. Listen,
scrap parts you can sell on the black market. This was a robot I was about to add to the workshop, just like an Ephra. I know. Really? We can come up with a... Thanks. And, about earlier? I'm sorry enough. Phew. Looks like the military... Let's go back to the work... कैरेक्टर को मारते हैं ना बड़ा बेकार लगता है मेरे को लोगों को भी मार दिया गिनों को भी मार दिया मैं कह रहा कैरेक्टर को मारते हैं ना ये बड़ा बेकार लगता है कौन से कैरेक्टर को मार दिया गिनों को भी तो मार दिया मतलब उसको मारा तो नहीं पर डिसअपीयर Job कर well दिया done, everyone. फ्रोलावा को भी मार Please दिया enjoy some tea and dessert while we devise a plan of action. Okay, so how is theft handled in Nód Krai? Do we call the police? Unfortunately, Nód Krai is a largely autonomous region. There is no unified law enforcement, which means calling the police is theoretically impossible. See? That's why we have to take it into our own skill. Turning all of Nód Krai upside down seems a bit... What choice? Analyzing options. If their goal is more perhaps you can get started on the workshop's order backlog in the meantime. I wanted to but with Crumbclank missing, there's no way I can get them done. Lucky? Wait! What? Calculations complete. Traveler, I would like to enlist your services to help Aino. Come on! Much appreciate. Nope! I'm gonna do that too. I need you besides, rescuing our stolen... Then I will All right! Clink Clank Legion, move out! Aino sure is determined, huh? Well, she is the boss of the workshop. No problem! Let's see. Who around here? We haven't actually been in Nód Krai that long, so we don't know much about this place. Where do we even start? Yeah, you must know this place like the back of your hand. Honestly, terrible idea. No way. Maybe we... Well, don't worry. Okay. If the thief's
plan with. Oh, you're looking for a blacksmith? To be honest, something. Wow, someone had the nerve to steal from your workshop? Maybe you should describe what Crumb Clank 70%. Oh, no need. I know style. I'd recognize it anyway. But the only thing. Yeah, maybe. Well. Rise with the sun! Rev the engines! Let's fly. The Voynich Guild. If we want to see if a transaction took place. Welcome to the Voynich Guild. Heavens above! If it isn't the owner of the Clink Clank Krumkake craft shop herself, and quite a rare one at that. We're always sending orders out to your workshop, but rarely do we have the pleasure of doing business in person. Are you looking to Sell? Actually, one of Ino's bots was stolen, so we wanted to see if the guild had any record of a sale. I see. Duh. I wish the Voynich... Oh, okay. Take me up! Wait, is that a Fatui agent over there? Maybe our... But Inefa says most Fatui agents are bad guys. Hello? Stop right... Faction? Ah, Oh, of course. True. Well, it seems like we've exhausted all our options here. Let me think. Right. There's one more place we haven't searched. Inefa told me about it. If you can pay... Welcome. Wait, Can I help? one of my Is it valuable? That's dirt turnip. Not ca- apologies. We have... Aw, I thought we'd find something here for sure. It's okay, I know. We'll think of something. Oh, well, if it isn't Ino and her two Outlander friends. Asking around Nasha Town for intel, are we? You're lucky you didn't get swindled 6 ways. Yehuda! Oh, dumpster diver. Okay, now that was just uncalled for. I've got... It's not a How did you know? You're, but... Smart as a whip. She navigates the major factions with ease. Always with her finger on the pulse of all the goings-on in Nód Krai. Who is? Who? Me? Of course! Crumb Clank is doomed. What was with... Hey! You're really Why is she... Well... Yehuda, you really look out for the kid, don't you? Coming over to help like this? That's it. We're here. I don't see Have some patience and hear the professional out. Now, you might look like an easy target, but everyone knows you've got me and my boss behind you. Point is, there's not in a... Wait, maybe. But that doesn't mean there aren't any And based on the the key we have to... Now you listen up. Crumb Clank... Sheesh, this kid's got a temper. Whoa. It's all right. I mean, it's... The kid built up the Clink Clank Krumkake craft shop all on her own. I'm sure, for her, yeah, I know. Yehuda's just trying... Oh, fine. If we have to... Well, that took some convincing.
embarrassing. What is he doing? First. आया ना दूसरा का स्टार वही कर रहा हूँ यूनो को ढूंढ रहा हूँ भी किधर गायब हो गई Hey, Yehoda! Wow! Hey! Which one of you is the rotten thief? That wasn't... आप कब पुल कर रहे हो My. आप पुल कब कर रहे हो This is an opportunity I've been waiting for. No thieves here. चिकनों का वेपन नहीं निकाल रहे You're the one who built that robo-maid, right? Is it for... हाँ Both of you? क्या करूँगा चिकनों का वेपन निकाल के आप ही कह रहे थे आप जाओगे तो क्या निकालोगे फिर As you can see, this kid's creation. I don't kid, but the येल्लो निकाल if we want. मेरे वाली टीम तो रेडी हो जाए मेरे को तो कोई तीसरी टीम चाहिए है वो वेरो हो गई फ्यूजन का तो मेरे पे एक भी कैरेक्टर नहीं है और एक ग्लेशियर इलेक्ट्रो फ्यूजन और कौन सा ग्लेशियर इन तीन का एक भी नहीं है That's it. No wonder. Wait, you guys! The first Crumb Clank. I'm afraid it's not that simple. It's a matter. Crumb Clank is more than a robot. He's my friend. Hey! You can't tear that down. What happened to? Listen, custom. We have to turn. Enough. Huh? According, present the Frost Moon Scions. The Crumb got overtime. So, dessert? Yeah. All. Trying to downplay it, are we, Miss Ino? Not convincing enough to fool the... Who are you? Asuko. Oh, my boss knows him. He's quite a respected guy. The voynich, and when it comes to lucrative opportunities, I'm not one to discriminate. In fact... So you're the one who's trying to buy Crumb Clank? No. I have a... So here I am. I don't do... You're no... You're How about... According to... What? Look at that cannon. It's not to mention, it takes a considerable amount of time between firings to... But if you make it smaller and easier to mass produce, you have the perfect product. Even if it doesn't quite replicate the power of that Besides, if you think in there, the giant... But turning that... Now that... A lot of... Please don't tell me you've made... Crumb Clank! He's my friend, and I'm gonna get him back no... It appears negotiations have broken down. Well,
We know Clank is with the Frost Moon Scions. Huh, good idea! Hold up. Ah, traveler, Paimon. Come night or day, may the moonlight connect us. I sense you are troubled. Please, unburden yourself. You saw right through us. Bathed in moonlight. I tell Ino to keep quiet for 1 second. And of course, she throws a tantrum. Lady Moonchanter, allow me. Theft. How despicable. A disgrace on the Frost Moon Scions. It's all just speculation at the. Just a. A few days ago, a mechanical. Come night or day, may... Theft! We did If there's been a... I remember. It was a few days ago out in... Huh? It's still not. Can we just go? No, it. Not so loud. I just need to think. What was that? What did you do? Are you... No, Look, at least we know this thing's powerful, right? All right, then stop right there. Drop that danger. Shoot! I don't even remember what I did. Let's just make a run for it. The most important thing is that we don't get caught. So, that's what happened. I know. Maybe this is another misunderstanding. Did it have this symbol on it? Yes. That's the one I designed from. So. Misunderstand. Forgive me, although this did by harnessing, but as far as I suspect, Clank as much. I wore the best court. What did you? You must No, you just want Clank for yourselves. I know. Calm down. Stop this at once! We cannot let you leave with that dangerous device. I told you, Clank is my friend. I know. But you heard. We won't let. Not good. What? Whoa. It must. I can create a temporary moonlight. All right. Let.
The recon bot. Phew, at least... That... Okay? Allow me to... If she truly viewed that robot, not even the... You... It's okay. It was all... Do not despair, young one. The pure of heart will always have... I'm confident... That brings us to... It's odd. I'd even... If you want... Yeah! So... You just can't stand seeing Aino's... Great. Fine. No problem. Let's fly. Hey, Anefa! Hello. I appreciate you looking after Aino these past few days. Oh, it was nothing. A promise is a promise, right? Anyway, is Yehoda here? Let me... After I got back from the Frost Moon Scions, I started doing even after asking around my boss's circle. I checked all the other merchants too, but कितना the level हो trail गया? came up cold each time. Most of them didn't even Oh. know about our trip to the Frost Moon Oh. Scions. Whoever's behind this thing is extremely clever. बोलो कितना level हो गया? Summarizing intel. किसने? Condensing main points. Rivals में Conclusion. Over the past 2 30. days, Yehoda has found... करो 2 level और बढ़ाओ फटाफट. अभी नहीं कर रहा अभी तो मैं बुआ कर रहा हूँ I सॉरी wasn't serious about that सही है भाई. suggestion. If that is गद्दारी. what Aino decides to do in the end, I've been thinking things over a ये lot करने के since I बाद got back. ये इवेंट स्पीड रन करने के बाद डेलीज करने का मैं गोवा जाऊंगा. गोवा के डेलीज करूंगा फिर राइवल्स आ रहा हूँ. नहीं फिस्का तो रहा वो वैलो खेलूंगा थोड़ी देर फिर राइवल्स आऊंगा. Right? Let's start. वाह यार वैलो के लिए अभी रेडी. मत करना अभी रुको हाँ मैं वही कह रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग Someone sent a मैं letter. खाना खाने जाऊंगा हाँ अभी उसके बाद तक आऊंगा ऑलमोस्ट मेरे को एक घंटा लग I'm a ready टेंशन pig और like you do. हाँ ठीक है ठीक है very well. Oh, उसके बाद लग 10-15 मिनट गोवा में. locked on. Let's fly. Huh. Looks like... look what the cat dragged in. Traveler, Paimon, I see you got my letter. Dory! So it... My assistant told me about... Rumor has it, some terrible thief broke into the Krumkake craft shop and ran off with one of Miss Aino's most treasured companions. Yes!
You must. I did so. There are too many merchants targeting that bot to root out the thief by going after them one by one. So, how about approaching this from. Maybe the question we should be asking isn't. She has a point. And lucky for you, I happen to know just the expert to help us out. She's been working. Of course, a professional of her caliber. But not to worry. I can offer you a 20% discount. How about and if she's 20%, 800. If only I could. But there has to be room for me to. 800,000 more is worth it. Splendid! I'll contact the expert right away. Well, if you're Great news! The expert is already in the area. a Melusine traveler, Paimon? Fancy. So, the expert is with her help, we'll get. There's something you should retain her. The traveler is a hero to the Oh, wow! I didn't realize this expert idolized you so much, traveler. Well, since she won't accept payment, I suppose there's no choice but for the entire 800,000 to go to me. In that case, I'll give you a generous 50% off the next time we do business. And well, we all start. But could you describe? Sure thing. Light it up! All right. So. Oh, there's a group of people over there. Hello. We wanted. Looking for trouble, kid? No? Ugh. Not a good. Legally speaking, even suspects have the right to. That's what you're. Clink Clank Legion, attack! Fine, fine. I see that. It would have been 2 days ago, between 4 and 10 p.m. We're looking for anyone in the vicinity who left with a heavy object in tow. When you put it that way. That direction. I think I know where they were heading. Let's fly. So, assuming their stamina is within the range of which means Trace it? oh, there's a whole bunch here and. Yep, pretty much what I expected. But it's exhausting to travel with that kind of. I bet these footprints are from when. Is that enough? If I'm right, they probably tracked the sand in from us. Then that's where we should. Wow! Melusine. Melusines are peep. Well, that's the last clue we needed, right? We were right with this. I'm sorry, everyone, but I think this is. Don't be sorry, and
I know. Like I said. Whoa! Is that Zip-Zap Spybot number 1? It's Zip-Zap Warbot number 1 now. Whoa, Warbot? I knew the kid was making dangerous stuff. With Zip-Zap Warbot on our side, there's no stopping us. Come on, charge! What is this thing? Help! Does somebody help me? What are you running for? Just take it down! There's nothing scary about... Ah! Ah! Picked the wrong test subject. Fry! Picked the wrong test subject. Phew! We're in! Whatever it is. This hunk of metal has Crumclank's core. The thief already took him. Quite the improvement, don't you? Wait. If your goal, I must admit. You What? The front desk. So you're. So what? There's only one. Just you? Stole. Ever since I came all. But then she's the one that rolled. Right. That's enough. We'll see about that. Rise with the sun! Why is this machine so powerful? I can't even hit the thing! No, you guys, don't attack him! We just need to wait it out! I'm not letting Crumclank become a war machine! Burn it down! Both drop! The show begins! Get to work! Ding dong weather bomb! Yeah! Bullseye! Locked on! Bullseye! Rise with the sun! Oh, brilliant! Show no mercy! Go claw! Let's fly! Bullseye! Locked on! The show begins! Fulfill our pact! What's happening? The course? What kind of. What? Don't sound so when. I think I understand. If cake bake, but to use it. I just noted. Boss, it's embedded into the system. See? This technology. No. Try me! Whoa! What are you up? Protecting the Krumkake craft shop is a job for all who call it home. Activating Annihilation Mode. Another test. Go claw! Burn it down! Oh, brilliant! Show no mercy! Get to work! Bullseye! Picked the wrong test subject. No! He got. Let him run for now. Not. Is everyone all right? Wow! Way to think ahead. Wait! Miss Ino, during the this technology. And I know. Let's go home, Ineffa.
अरे क्या क्वेश्चन है भाई. Rain. My hair and feathers are gonna get soaked. Time for some preening when I get back. Take me up! Yeah! Yeah! The show begins! Hey, Anepa! Oh, well, after all... Wait, there's... Yes, I know wanted to. Wow! Yes, Woohoo! Hey! It's not unusual for... no need to worry. Alright. She. Why did I... At first. And fortunately, then, just like her friend, and when genius. So, perhaps it all. Oh! Based on my own, long before she. What I mean is, I think, so me, were her fit as I see. Oh, well... Yes. And she decided. Yeah, that makes... I'm afraid my. Well, anyone else, but I know... No, I've encountered. You say. Ooh, the dessert should be done! Yes. One moment. I want the one with the... All right, everyone. Ooh. Let's fly! Yes, and even if you managed it, the look. Dig it out. Huh? And you. Wow! Things are really kicking off over here. We're plotting and scheming, but my co conspirators all right, I believe you. From a short. Oh, of course, I'm going to have. Huh? Trust me, Paimon, you would not enjoy it very much at all. Don't. Although, I was over this ability. Oh. Yeah, that would be a problem. And if you can't control it, that means... Exactly. But no matter what, when I stand, they argue loud. Waking up to the sound of birds chirping... As for me, yes, plotting and scheming. Thank you for reminding me. I got a little sight. No, just you will suffice. This job involves break. Don't worry. Take me up! Here we are. Oh, must be a pretty... Do not worry. This. Oh, nice! That's good to know. That's true. Each time I. Huh! What a thieving little weasel! But consider how a bit... Can't get... Come on. To retrieve. If you head over there and take the mechanism on that side, I'll take this side. That won't be a problem. It will keep me updated on where you are and which mechanism is in front of you. आशिका ये देखो.
Go. वो देखो ऊपर चांद पे डार्क साइड। लग रहा है ना, क्या बढ़िया लग रहा है, बादल जैसे गिर रहा है। चलिए Understood. I will retrieve the lunar semblance now. He probably couldn't. In terms of Mora, it's crude, but to the if nothing else to me, thank you for your. And our. What does it say? It says that the traveler is the. From now on. Don't worry, and it's certain. Uh-oh. We better make sure to lock. Relax. That weasel's only a child. All right. Oh, and we still need to figure out how to. It seems like I'll need a little help from my friend. Just here. Oh. The real value lies in the stories behind. Cool. Indeed. And after that, I apologize if this is presumptuous of me. But I've seen how well connected you are. On your future travels, if you ever come across any texts, you have my sincere gratitude. This one says to eat as much as you wish, because it's the top fruit finder in the whole forest. It'll fetch some more right away. Awesome. Thanks so much. Rain. My hair and feathers are gonna get soaked. Time for some preening.
हेलो हर्षित भाई। बोलो बोलो। मैं आता हूँ खाना खा के, उसके बाद हाँ। खेलते बैठ लो।
have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough. Let's fly! Take me up! A base of dandelion wine, aged for 25 years. 1/7 part bittersweet liqueur, filled halfway with fizzy zaytun peach pop. All three of those ingredients are fairly sugary. It'll have a lovely sweet aftertaste, even a little too cloying. A spoonful of salt and half a spoon of powdered summer orchid leaf should cut through the sweetness in a way that's clear but not overpowering. It's all down to the seasonings you sent me, Lady Nefer. Otherwise, I'd have no idea how to mix up a cocktail that so befits Nód Krai. Just a little. Many thanks. Though I think one taste is enough where these seasonings are concerned. Besides, you sent so much I could hardly finish it by my... And my cock... Can't say I'm surprised your colleagues at Liyue's Ministry of Civil Affairs aren't too keen. I wouldn't expect the flavors of Nód Krai to be their cup of tea, though... I wouldn't go that far. Though, it's not like I dislike the food here. It's good to try new things occasionally. I love your attitude. You'd make a great businesswoman. It would be nice if everyone from the Ministry of Civil Affairs were like you. Come on now, are we going to do this song and dance every time I drop by? Stop fixating on the Ministry. Never mind them. Have you managed to carve out a single foothold in Liyue after all these years? You know what they say over there. A journey of 1,000 miles begins with a single step. If I don't test the waters, how will I ever know? Don't waste your Is that a warning? It's advice. Long claws, you say? I can only... Oh, really? All these... Many... Though I must... Why, thank you. Though with you around, nothing... Is that... Here's to...
Ah. Against the long night and purge the darkness! Rise with the sun! Fulfill our pact! Strike them down! Get to work! I stand against the long night and purge the darkness! Bullseye! Locked on! Burn it down! May I show no mercy? Take me up! Locked on! I stand against the long night and purge the darkness! The Shelby, get to work! North wind! Ha! Strike them down! Bullseye! Open fire! Open fire! Take me up! Let's fly!
आओ कर लेता हूँ। अरे अभी ये वाला अपडेट कर लें तो फिर आता हूँ मैं लोग। उसके बाद 5 मिनट मेरे को हुआ में भी लगेगा। इसके बाद फिर मैं वैल्यू चालू कर रहा हूँ। लगभग मान लो 4 से थोड़ा पहले। Better hold back this time. Rise with the sun! Get to work! Show no mercy! Let's fly! Couldn't! Bullseye! Bullseye! Fire in the hole! Mission! Burn it down! So... Locked on! Bullseye! Take me up!
Thank you for Rise with the sun! Rev the engines! Phew. राइवल्स कब 5-6 बजे के समथिंग। देखो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, इसका इवेंट करने में मेरे को लगभग 4 बजने वाले हैं। इसके बाद मैं 10-15 मिनट बुआ खेलने वाला हूँ, फिर प्रोबेबली 1 घंटा वैल्यू, 1 घंटा 1.5 घंटा राइवल्स। आज रैंक कंफर्म कर रहा हूँ, थोड़ी सी रैंक बढ़ाऊँ। आपकी क्या रैंक हो गई? नो भाई, भाई ये जतिन भाई को ले जाओ भाई, इनका ना लेवल 15 करवाओ पहले, फिर कॉम चलता है। नो भाई, जतिन भाई को पकड़ के ले जाओ भाई, 15 लेवल करवाओ पहले इनका प्लीज। यार अपन छोड़ो यार, अपन वैलो नहीं जा रहे, वैलो बाद में जाते रहेंगे, राइवल्स ही चलते हैं पहले। मेरे को भी वही लग रहा है भाई, डायरेक्ट राइवल्स ही चलते हैं, वैलो वैलो में क्या रखा है।
नींद आ रही, सो के उठ के गेम खेलते। आओ सो जाओ। मेरे को दिन में नींद आती इसलिए मैं खेलता हूँ भाई, लेकिन रात में चली जाए। अबे जाना कहाँ है? अबे हेड भाई जाना कहाँ है? अबे उल्टा क्या आ रहा हूँ मैं? ओ भाई यहाँ जाना था। रात काटनी भारी पड़ती। हाँ यार वही यार, रात नहीं कटती यार, सही बात है। अबे ट्राई अगेन। I got. Let's fly. दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है एली चैट। हाँ यार।
हेलो इज फाइन। अब वैलो अपडेट आ भाई, वैलो अपडेट कर लो, वैलो खेलते थोड़ी देर से। इवेंट खत्म हो जाए फिर वो के डेली कर लूंगा, फिर वैलो ही जा रहा हूँ। अबे अबे भाई, मैंने अपडेट के लिए लगाया था, ये इसने कैप्चर क्यों कर लिया भाई? शिट, इसने कैप्चर कैसे कर लिया भाई? मैंने यहाँ जेंशन, अबे भाई ये, भाई प्रायोरिटी वाली चीज बहुत गंदी है भाई, ये एक्चुअली बहुत गंदी है। मैंने अपडेट के लिए लगाया और उसको खोल के रखा ताकि आई बोलूं मैं। अबे पुल मैंने नहीं करा था, पुल जतिन भाई नहीं करा था। खाना है भाई क्या? Wow, I almost got stuck.
हाँ यार मेरी आईडी ऑनलाइन थी। मैंने भी अपडेट करा। ये स्टीयर नहीं मिला। स्टीयर करना क्या है? अभी मैं 30 पैक तो मेरे पे और है क्या? ये लाइक करने के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ऑनस्लॉट, अरे ऑनस्लॉट आया ही नहीं है अभी तक। वो कहाँ से गया? आया ही नहीं है अभी। 8:30 बजे आएगा रात में। इस बार वाला टफ है और बहुत टफ है इस बार वाला। पूरा ब्लूम वाला है ना, हाइपर ब्लूम वाले टीम, ब्लूम वाली टीम में से नहीं चलती। ओह आप समझ में आया, अब समझ में आया क्या सीन हो रहा है। ये फालतू के स्कोर माइनस में चले जा रहे हैं। ये अवॉइड करना है, क्या करना है? इनको डिस्ट्रॉय करना है। ओ इनसे बिल्कुल नहीं टकराना है, इनसे बिल्कुल नहीं टकराना है। यार ये क्या किस्मत है, ये क्या किस्मत है भाई। ये होता है एक्चुअल लक भाई, क्या लक है भाई। लाइक एक्चुअली क्या लक है। एक्चुअली क्या लक है। एक्चुअली क्या लग है, मेरा नहीं है जैसे। अब ऑनस्लॉट, अबे क्या मैं उससे टकरा गया? अबे यार भाई, भाई मेरे को एसटीएफ चाहिए। हो गया। मेरा नहीं है जैसे। आप ऑनस्लॉट का वो देखो। हाँ एनिमीज लाइनअप पता है मेरे को। यार रेडन के साथ एक ही दिक्कत है, उसकी अल्ट नहीं है। अल्ट होती ना भाई बहुत हेल्प होती। अल्ट बनाने में ऐसी तैसी हो जाती है रेडन की। डैमेज बहुत है रेडन में।
ये एक इवेंट बचा है मेरा, ये कर लूँ फिर देखता हूँ। यार मागू किनकी वाला वो जो वो है ना अबिस, अभी 12th है, उसके सेकंड हाफ में तो मैं चांस का बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। क्यों? व्हाट द फक। वो आपका भी हो जाएगा, बस मिडिल वाले क्रैब में कैसे होगा वो सोचो। वही तो ब्लूम नहीं होगा दीदी, वो मालूम है आपको, पता है वो लास्ट वाले में बहुत स्ट्रगल होगा मेरे को। मिडिल वाला सबसे इजी है, नहीं मतलब मेरी आईडी के लिए तो नहीं। हाँ मिडिल वाले में तो ब्लूम लगेगा। ब्लूम ब्लूम या ब्लूम मेरे को सबसे बकवास रिएक्शन लगती है इस गेम की, लाइक सेल्फ डैमेजिंग रिएक्शन भाई। ना भाई, इसलिए मैंने नीलू भी नहीं निकाली। वैसे नीलू का वो डैमेज वगैरह काफी अच्छा मैंने उसमें यूज करा था इमेजिनेरियम थिएटर में, लेकिन नहीं यार, मतलब यार वो बहुत, क्या बोलूं, मतलब फ्रीज फ्रीज मेरे को ढंग की लगती है कि हाँ उसमें कुछ लगता है। ब्लूम बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, पापा बुला रहे हैं। लामा, ये क्या है? आपका कितना हो गया? आपका कितना हो गया? मैं तो फाइट करना है, क्या मतलब नहीं की। आपने भी लोमा पुल किया, लोमा ये क्या है? मतलब नहीं की। अबे भाई ये क्या डैमेज है? ये लोमा नीश है, लेकिन भाई उसकी पर्सनालिटी मेरे को एक्चुअली बहुत सही लगी, एक मजाक सेट की। क्या पर्सनालिटी है भाई, मतलब ऐसे पर्सनालिटी लोग भाई बहुत, मतलब एक बहुत रिफ्रेशिंग पर्सनालिटी लगी उसकी। जालतू फालतू नहीं किया भाई, तो क्या कर रहा हूँ ये, क्या है ये? ड्यूरेन कब आएगा? मेरे हिसाब से 4.1। मैं भी वही पुल करने का सोच रहा हूँ ड्यूरेन, क्योंकि कोलम्बिना बहुत अच्छा सपोर्ट होने वाला है, और वो एक तरह से पायरो एस्कॉफियर है। पायरो मतलब पायरो और हाइड्रो का पायर। हाँ मतलब वही, मतलब वेव का। नहीं नहीं 4.0 नहीं, तो 6.1। 6.1 अगले ही फेज में आएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो पिटी बना रहा हूँ मैं, तो लोमा निकल रहा है तो लोमा से वो निकल रहा है। यार ड्यूरेन मेरे को निकालना है, और मेरे पे अब ये भी मैं वो करने ही वाला हूँ। नेफर है, फिर 6.2 में होगा ड्यूरेन, तो फिर 6.2 में होगा ड्यूरेन, क्योंकि 6.3 में तो फिर कोलम्बिना आ ही जाएगी। भाई कसम से भाई, क्या कैंसर है भाई, क्या कैंसर है भाई। भाई वो इतनी दूर से मार रहा है, भाई वो इतनी दूर से मार रहा है भाई।
भाई ये क्या है भाई? इमेजिन दो बेनेट, दो बेनेट मतलब कौन? यानसन है तो बेनेट। भाई भाई क्या कैंसर है भाई, क्या कैंसर है ये। कैंसर है भाई, इसको बंद करके आना भाई। भाई इतनी ऊपर चढ़ा, इतनी ऊपर कि भाई कर लो इवेंट भाई। नहीं ये फालतू सी क्वेश्चन लगा रही है मेरे को। वो देखो, अरे भाई 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 ऐसी मार डालो भाई। भाई वो उसकी रेंज देख रहे हो भाई, ये क्या स्नाइपिंग है भाई। और भाई ये नहीं कि भाई उसको भाई एक टेलीपोर्ट वे पॉइंट के थ्रू दे दें कि हाँ भाई बंदा डायरेक्ट वहीं चला जाए। नहीं, इनको तो भाई ड्यूरेन भी सपोर्ट है। हाँ सपोर्ट है ना, वही तो है, बोला था स्कॉर्पियर टाइप का सपोर्ट है कि वो वेव के लिए स्कॉर्पियर है। मतलब न्यू विलेट हो गया, मिलानी हो गई। Save yourself. Who's that? Open fire! What a waste of time! Rise with the sun! How brilliant! Time to shine! Show no mercy! Suffer the wrath of Eatling! वार का भी आएगा मेरी जीन C6 में। हाँ मतलब C4 ज़्यादा मैटर करता है। ये देखो एक तो आप फरीना रन कर लोगे उसके साथ, ठीक है। एक आप रन कर लोगे फरूजन, उसका मतलब वो एनिमोरेस डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, जीन। जीन का जो देखो फिफ्थ कौन सा इतना मैटर नहीं करता। सिक्स्थ बस डैमेज रिडक्शन है और कुछ नहीं है, सिंपल सा डैमेज रिडक्शन है अपॉन लीविंग द डेमिज इफेक्ट, वही है। C4 ज़्यादा मैटर करता है, अभी मैंने C4 ही निकाला था इस चक्कर में। एनिमो रेजिस्टेंस 40% कम कर देता है, तो 40-40-80% का एनिमो रेजिस्टेंस मिल जाएगा और 75% का डैमेज बोनस फ्रॉम क्या बोलते हैं रीना, और हीलिंग के लिए है ही वो जीन। वैसे जीन पे ना फिर आप वो आर्टिफैक्ट स्विच करना पड़ेगा, उस पर फिर नोबेलाइज लगाना पड़ेगा। मैंने तो मतलब इस पे वो बिल्ड करके रखा ही है टेनासिटी, वो अटैक देने के लिए। Use of force authorized. Resistance is futile. Save yourself. Take me up! Bullseye! Locked on! ये इवेंट करंट क्यों बनी? Light it up! What a waste of time! Get to work! Fulfill our pact! Suffer the wrath light of the blazing sun!
अच्छा आपका लास्ट वाला हो गया? वो लास्ट वाला से मतलब है मेरा वो इलेक्ट्रो वाला। आपने किससे करा वेरेसा से? What a waste of time! हाँ वेरेसा यानसन शीलो शीलो। Let my name echo in song! Show no mercy! Eat Lolling, eat Papa! Get 'em! Get to work! Fire in the hole! अबे भाई मूवी का भी स्विच करना था, ये क्या है भाई? मैं कुछ भी होऊंगा वो। Take me up! Open fire! Open fire! और मैंने क्या इग्नोर करा? कोलंबिना के लिए ड्यूरेंट चाहिए मतलब उसकी टीम के लिए। हाँ यही मतलब है। अरे फोन आ गया था यार अक्षय। तो मैं प्रोबेबली भाई मैं वैलो फिर मैं थोड़ा और लेट नाइट खेलूंगा भाई। मैं पीक खेलने जाऊंगा फिर उसके बाद। वेरिस का वेपन बिल्ड करना। हाँ यार वो थोड़ी है हाइपर इन्वेस्टमेंट वाली। अच्छा डैमेज निकल। वेट आप पे वेरिसा का वेपन नहीं है फिर भी इतना अच्छा बिल्ड है। उसका वेपन क्या देता है और आपने कौन सा वेपन दिया है रिप्लेसमेंट में, वो बताओ। अब मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। विट से था मतलब 55% क्रिट डैमेज और उसके सिग्नेचर पे कितना क्रिट डैमेज होगा या क्रिट रेट जो भी है। क्रिट डैमेज ही होना चाहिए भाई। ये भी 8 चैलेंज और बचे इनसे। चलो यार स्पीड रन वाली टीम निकालते हैं। आप उसका वेपन का पैसे देखो ऑनलाइन। क्रिट डैमेज 44। ठीक है। Attack एकदम highest based attack is increased by 28% when you use a plunging attack. You will gain the drone of the first hue effect. Plunging attack crit damage is increased by 28% when you use an elemental skill of burst. You will gain the Twilight Splendor effect. Plunging crit damage is increased by 40%. The two effect above each lasts for 15 seconds and will be cancelled 0.1 second after the ground impact hit a target. $28 plus 28, 58, 56 भाई। हाँ भाई 56 का क्रिट डैमेज भाई साहब। भाई तू एक बार अपना ईयरफोन निकाल के वापस लगा, रोबोटिक आवाज आ रही है।
हाँ ठीक हो गई। Rise with the sun. Is this our fate? Show no mercy. Not you two. Time to Burn it down. हेलो भाई बैठो। Everybody stand back. Get to work. Show no mercy. Suffer the wrath of the Pyroclastic surge. 7 कैंपस और क्लियर करने का लगी इवेंट होगा। तो अपन 3 ही खेलने वाले हैं ना, और कोई आएगा क्या? भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो 2 लोगों को लिंक टैग करके दी थी। किसको? एक अपने ये जतिन भाई को और एक डिशु भाई को। 3 भी खेल सकते। वो है कितने का? 4 का है ना वो तो। अरे एक भी खेल सकता है, 4 भी खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं। अच्छा भाई तू तो मेरे को 2000 रुपये भेज दे, ईयरफोन मंगाऊंगा। मेरे पे नहीं है भाई, माउस के लिए जैसे जैसे तुम्हें जुगाड़ लगी है मेरी। तो माउस मत लेना, मैं ईयरफोन दे दूंगा। ये माउस लेना वेरी कंपलसरी भाई। वायर बहुत उलझता है। अरे मैं भी सोच रहा हूँ 250 रुपये का वायरलेस माउस ले लूँ ट्रैवलिंग के लिए। हाँ ले सकता है। अभी तो सेल आ रही है ना 23 को, तभी करूँगा उधर। मार रहा पूरा बाइक से, फिजेट स्पिनर ही बना देता है। स्पिन टू विन। light it up. Teamwork is dreamwork. Bring it. Get to work. Chef, light up the blazing sun. Rev everybody stand back. Show no mercy. Fulfill our pact. Not you two. Time to... Pyroclastic surge. अरे 150 कहाँ से आ गया? आ गया। अरे डेड शॉट भी तो क्लिप डालता है। हाँ ना भाई का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब डिलीट सब कर दिया मैंने। एआई भी वो फ्री वाला है, हम लोग ने फ्री वाला करा। आप खेलोगे? Teamwork is dreamwork. Bring it.
खुले स्क्रीन पे पायरेसी की बात करता है, मैं इसको नहीं जानता हूँ भाई। ओ क्रैक नहीं करो, अब मैं क्या ही बोलूं फिर। ये पॉल्सन से वेरीफाई करवाओ पहले भाई कि वायरस नहीं आएगा। नहीं है रे वायरस इसमें, कहाँ, मैं तो चल ही रहा है अपना, मैं तो खोल ही ये भी रखा है, है। ये भी है। ये क्या लिख रहा है, A263 RR जेई की रैंक लिख रहा है क्या आपने? हाँ, असेंडेंट 2। चार फाइट हो। कितना बचा है भाई, कितना करेगा ये? 4 फाइट तो और है आज भाई, 4 फाइट और। 4, तो मेरे को 10 मिनट क्यों बोला, 10 घंटा बोलता। नींद आ रही है। हाँ टैंगजू लूंगा भाई, ईयरफोन नए वाले, सिर्फ 1990 उनकी। हम्म, 1900 क्या? टैंगजू है 1990 का। क्या होता है ये? खरीदूंगा, मॉनिटर है रे यार, मॉनिटर अभी एक तो ले रखा है, अब सोच रहा हूँ एक और ले लूं। TLY लोकी करता क्या? हील करता है या स्ट्रैटेजिस्ट है? लोकी भाई बैक स्टैप करता है जो भी पूछ रहा है। जो भी VC में बोले भैया है। हेलो, मैं तेरे को हेलो बोल रही हूँ। क्या है तू? हेलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तू एक में तो ट्रेन करता है भाई LLM मॉडल। वाह यार, when creation meets a developer। your powers of mind bring them। क्या ये chaos वाली लाइन भी थी ना? bring them all the chaos। I am ready to put on a show। स्कारलेट विच भाई सबसे गंदा भाई भाई कसम से भाई, वो भाई जब वो भाई अच्छा वो उसकी एनर्जी कम कर दी भाई, वो तो अच्छा वो उसकी एनर्जी कम कर दी भाई, वो कैंसर हो गया था भाई एक टाइम पे, इतनी जल्दी अल्ट स्पैम। उसी टाइम तो थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो गया, जब खेलो तो असफिल हो जाता है, कर लो, कुछ नहीं कर सकते। कर लो भाई, कौन क्या ही उखाड़ लेगा भाई, उसको बैलेंस करना वेरी इंपॉर्टेंट था भाई। ये जो तू बाइक चला रहा है, असली में भी ऐसे ही स्कूटी चला लिया कर थोड़ी अपनी, 20 से ऊपर तो लेकर नहीं जाता है। यहाँ दे मार, बिल्कुल उड़ा अबे रहा तो है यहाँ गाड़ी। पे तो यहाँ तो मर जाए तो भाई अंडा खा के वो रिवाइव कर लो भाई, रियल लाइफ में अंडा खा के तो रिवाइव होगा क्या लैमड़े? भाई तो रियल लाइफ में उड़ाने भी नहीं बोल रहा हूँ ना, ढंग से चलाने बोल रहा हूँ। ढंग से ही चलाता हूँ है ना। माल गाड़ी की तरह चला रहा है, सामने राजधानी की तरह गाड़ियाँ जा रही हैं। अबे तो अपन को कौन सी रेस में भाई भागना है यार, आराम से चलो भाई। आराम से चलो, 2 दिन बाद भी पहुँचेंगे तो क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर छूटेगा और क्या होगा। अगले साल फिर मौका मिलेगा देने का। हाँ एक दिन पहले पहुंच जाएंगे एक हफ्ता पहले निकलेंगे तो लग तो रहा है हो नहीं, एक और बचा है। अरे डेढ़ भाई क्या हाल चाल चल रहा है यार तुम्हारा, कहाँ गायब हो?
जल्दी कहाँ से हटो, कहाँ से हटो? डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड भी पता नहीं कब आखिर बार आया था। स्केच भाई आ गए। नाक में उंगली कर रहे क्या यार ये सब क्या चल रहा भाई? मैं तो कभी भी गायब नहीं हूँ। लॉस्ट इन एको। अरे अरे वाह यार, कौन है ये? क्या कर रहा भाई? अरे ये अपना मौत की गोली। ऑलमोस्ट इमॉर्टल नाम रख लिया है इसलिए गायब दिखता है। नया अकाउंट है क्या? अबे तो इसमें वो गंदा नोट कैसे आदमी अक्षत डालते हैं भाई। यार? नोट डाल देता हूँ, याद तो गंदा रहे। आदमी अक्षत भाई। डेड हर्ष स्केच बैग का शॉट। स्कैम हो गया। क्या स्कैम हो गया भाई? तो स्केच बैग भी पता है। अच्छा डेड शॉट नाम ही है, ठीक है भाई। क्या स्कैम हो गया भाई? डेड स्केच भाई, भाई मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने कोई गंदा काम नहीं करा भाई। ये ऑरेंज कलर का आदमी नाक में ही उंगली कर रहा है, दिख नहीं रहा यार मेरे को। चश्मा लगा है, छोड़ो यार तुम, अंधा हूँ। चलो भाई जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रैंक रहे हो? पुश। अभी तो आए हो, भोजन करके जाना। भेजो एड्रेस भेज रहे हो। आ जाना भाई, अबे साकेत करके नगर जाना पहले होता है, भोपाल भेजना में। थोड़ी होता है। करके जाना भोपाल बोला है। करके जाऊंगा ना अपने घर से। अब एक तो चलो तुम्हारा यार चंडीगढ़ महंगा है भाई, 100 रुपए में कुछ आता नहीं है, नहीं तो आएगा, भेज भी मैं देता। भेजता हूँ। आएगा आएगा। क्या भेजता है भाई? मेरे को मुझे क्या मालूम? हाँ, मुझे क्या मालूम? सैंडविच आ जाएगा भाई एक। तो भाई एक सैंडविच में तेरा क्या होगा भाई? ये भी तो सोच। चलो फिर 100 अबे रुपये आप पे डाल दो। 100 रुपए 50 कार्ड से करूंगा भाई। क्या? नहीं ना, मतलब कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड भाई। आज दूंगा तो अगले महीने भरूंगा। ला भाई, बता भाई वाह कैसे रेस करना भाई। है। अरे यार एक ही जीटीए ऑफर कराओ था। मशीन। जीटी भाई देख यार, दोस्त खेल रहा है उसका जैसे ही होता है। मेरा वो ले लेना, वरुण से नहीं मिला क्या एपिक गेम का? क्या चीज? डाल देता हूँ। Everyone hold hands. भाई एक दिन यहाँ ऑफर चल रहा था, 80 रुपए में बिरयानी का, मतलब पुलाव का। लेकिन साला वो डिलीवरी करते करते 150 रुपये ही आ गया। तो मैं चला गया घर के नज़दीकी फूड ट्रक पे। भाई कर्स। स्केच भाई आओ खेलते हैं भाई, पहले आओ ऑनलाइन आओ। ना मान रहा। आऊँ अभी आयरन आईडी से? बताऊं? बताऊं तेरा तेरे को? आऊँ अभी आयरन आईडी से? कराऊं तेरा गेम अनइंस्टॉल? करो तेरी कुत्ती अरे वाह यार, परेश भाई आ गए। परेश भाई म्यूट है। अरे वाह यार भाई यार, अरे ना मान रहा है ये भी। कहाँ गया? मैं भी बजाता हूँ। चप्पल चोर वाह साला। यार भाई यार, ठीक है रखे भाई सारा। चप्पल चोर साला। चप्पल चोर साला। ये तो भाई वरुण तो ऐसा लगता है भाई दिन भर काम करता है और शाम में एक बार खोलता है तेरा डिस्कॉर्ड सर्वर और उसमें मेरा मैसेज देख के उसके नीचे रिएक्ट कर देता है। यही तो है भाईचारा ऑन टॉप। अरे तू जल्दी करना भाई यार, पहाड़ चढ़ना है। हाँ लॉन्च तो कर ही भाई देता हूँ। 5 घंटे से ये खेल रहे हो भाई, शर्म आ रही है थोड़ी। अरे बेशरम हो गया है भाई, एक तो इसने मेरा बिलौटा भी चुरा लिया। एस भाई तो चले ही गए। विशु देख रहा है, तेरी आवाज सुनते ही हाँ, उसने डिस्कनेक्ट किया है। ठीक है भाई।
और एक तू बता भाई, उस तेरे 16 GB का रैम है, तो उसको हाँ, 32 GB की तरह क्यों इस्तेमाल करता है? मेरे को ये समझा बस। क्या हो गया? 4 गेम तेरा बैकग्राउंड में चलता रहता है, फिर स्ट्रीम भी करता है, फिर बोलता है कि लैपटॉप का पंखा टूट के गिर गया। नहीं, वो तो वो घिसने की वजह से टूट गया था भाई, साफ कर रहा था नहीं, गंदा हो गया था। भाई हर्ष भाई, तेरे को पता है ये जो है, जैसे अपन टूथब्रश करते हैं ना, अपना दांत घिसते हैं ब्रश से, वैसे लैपटॉप का पंखा घिस डाला इसने, फिर बोलता है कि भाई टूट के गिर गया। धो के सुखाने तो नहीं रखा था ना? नहीं यार, वो मैं सोच रहा था दूसरे पंखे से भाई थोड़ा स्पीड करके मैं साफ कर दूं, मतलब वो सुखा दूं पंखा दूसरा वाला। एक बार ना रैंप पे निकाल के पकड़ के रगड़ देना। अबे क्या रैम रोम कर में रहा है क्या रखा भाई? है? तेरे को 1 टाइम ऑफर दिया है ऑलमोस्ट, क्या है, ऑलमोस्ट इमॉर्टल कर रहा है ऑर्डर, तो फट से कर दे भाई। यूपीआई आईडी डाल देना मेरी। 100 रुपए की लिमिट है, उसके ऊपर तेरे को देना पड़ेगा। थोड़ी पहले आया था ना, वैसे मैं भी सिर्फ 40 रुपए देने I know. I believe regular lubricant. Already here, aren't we? अरे Come on, oh, hi there, traveler. हाय दारा, Just hurry on over. Frosting. Yeah. I was ना gonna do माने it myself. एएमएस जैसा अपन, विशु जैसा नहीं। जिम जा, ये जिम। भी खेलते हैं भाई कभी अरे जिम जा बोल रहा हूँ भाई, खेलने का तो बोल ही नहीं रहा। Truth is, मोटी छोटी बनाओ भाई। भाई कुंडली मत पढ़ा, वो बोलेगा कि आपका कुछ दिन बाद मुंह से पैर निकलेगा। कुछ भी नहीं भाई होगा। अक्षत की सबसे अच्छी लाइन थी भाई, अब तक तो आपका अच्छा टाइम चल रहा था। अबे तू माउस क्लिक कर रहा है क्या? ग्रीन ग्रीन हो हाँ रहा था। हाँ, तो माउस क्यों क्लिक कर रहा है? ताकि डायलॉग जल्दी खत्म हो जाए। तो स्पैम कर रहा है। मैक्रो बटन है। रैपिड फायर मैक्रो, हाँ वही मेरे को लगा। स्टोरी मोड में स्टोरी नहीं पढ़ रहे थे। विशु इज लाइव। भाई तेरा सब्सक्राइबर तो एक नहीं बढ़ा, इतने दिन से देख रहा हूँ 40 है। हाँ। कम से कम 45 तो करता। मेरे हाथ में थोड़ी, तुम्हारे ही हाथ में है। अरे तो एक गेंशिन खेलोगे बैठ के, कौन करेगा? 5 घंटे से गेंशिन लगे हुए हैं। भाई को कंटेंट इसी में आया तो मैं यही कर रहा हूँ, और क्या बोलूं। ये आप और गेम खेलो ना। वैल्यू से हो गया भाई। तो भाई वैल्यू बची है, और कोई गेम नहीं है कोई? गेंशिन वैल्यू बस हो गया। हाँ यार, और क्या है भाई। 6 भाई इसने एक दिन भाई मेरे को गेम खिलाया, बोले वो गेम अबाउट डिगिंग अ होल ऐसा कुछ था। अच्छा वो सीजन में होते हैं। हाँ इसने बोला भाई इसका कोऑप खोल, तो मेरे को कोऑप तो मिला नहीं। मैं उस दिन भाई 7 बजे गेम इंस्टॉल करके खेलने बैठा, 11 बजे तक पूरा खोद डाला। अरे हर्षिया वो खेलो ना, वो ड्रग वाली इतनी बढ़िया थी भाई। ड्रग वाली तो कर लिया ना भाई, पूरा उन्होंने नहीं खेली ना। अरे ये कुछ नहीं करता भाई, ये बेकार गेम खेल ली। जाएगा मरेगा और पानी पूरी खा के जिंदा हो जाएगा। क्या चल रहा है पता नहीं। क्या नाम है उसकी का? नहीं आप भूल गया। अरे शेड्यूल 1। हां शेड्यूल वो तो भाई पूरा कार्टेल बना लिया था हम लोग ने, मॉड वॉड भी डाल के भाई 6-7 लोग खेलने लग गए थे उसको। हां रैपो खेल लो। रैपो में तो वायरस था रे। कौन सी खेली? यही अपनी ऑनलाइन फिक्स। फैट क्या? फिट गर्ल। अच्छा विशु के साथ रहता हूँ ना भाई, फिट भी फैट ही सुनाई देता है। भाई जिम जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटा गेम खेल लेते हैं तो फिर ताकत नहीं बचती भाई यार। एक्चुअल में भाई, और सब्सक्राइबर एक नहीं पड़ा है रेगुलर स्ट्रीम के बाद। मेरे को ही साइड में खोल के देख के व्यू वॉच टाइम बढ़ाना पड़ रहा है। वैलो खेलो, स्विफ्ट पे खेलो,
और उसमें डालते रहो हर अबे एक तो मैच एक भी बाद, तो होना चाहिए। उस दिन हर मैं एक वही तो, मैच में जैसे ही डालते खेल रहो। रहा था, बोर हो दो गया लोग भाई खड़े वैलो से, हैं, कितना ही पूरा वैलो खेल कंट्रोल इसमें। दबा के स्प्रे कर दिया इसने, पागल ही हो गया। गेंशिन इतनी खेलते हो, इससे बोर नहीं हो आप हैं? नहीं हुआ ना भैया। रोज 8-8 घंटे खेल रहे हो और बोलो एम कि नहीं वैलो से लग बोर हो गए। इसमें एम वाला सीन नहीं है ना यार। और आधे तो घंटे स्किल से गेम नहीं पता है। है, इसके 5 घंटे की स्ट्रीम में इसने 4.5 घंटा तो सिर्फ मैप देखा है। मैप खोल के जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, फिर थोड़ी सी बाइक चलाएगा। तू मेरा दोस्त है ना। स्टीम पे शिफ्ट टैब पे देखता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ हर शिवा हो जाए सेकिरो। भाई भाई तुमने तो ही तो तेरे जब सामने ही भाई करा है ना मैंने, तेरे जब सामने ही तक करा है ना कंप्लीट नहीं मैंने। होगी वो स्ट्रीम करो। हाँ तो वो कितनी देर खेली बोलो, ये इतनी देर से खेल रहे हो, वो खेलो 6 घंटे। भाई फिर वो 1 मानूंगा घंटे से एक ही बॉस पे लगा हुआ हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। भाई, होगा ना धीरे धीरे होगा। गेंशिन में आप भाई 1 घंटे में पहुंच गए 60 लेवल पे। खेलना है तो भाई गोस्ट ऑफ टुशीमा खेलो भाई। हाँ भाई ऐसी गेम खेलो, इतनी बढ़िया बढ़िया गेम। भाई मैंने क्लिप, कल ही मेरे को क्लिप मिली एक, मैंने बना के अरे हर शिवा आर या 2 खेलो, आपने नहीं खेली होगी पक्का ही नहीं। हाँ नहीं खेली है, वो खेल लूंगा मैं पक्का खेल। वो करो भाई लाइव, इतनी बढ़िया गेम। अबे लेकिन इसका सिस्टम ही ऐसा है, क्या बताऊँ। ये देख भाई डेड शॉट। एंटायर स्क्रीन कर दूँ क्या। अबे ये कैसे चल रहा है, चढ़ता है यार इसका सर्वर। ये देख भाई इंसान भाई। ये वाली क्लिप नहीं है बे, ये तो 30 सेकंड की है, रुक जा। ये वाली उसमें शायद पेड़ गया हूँ, वो छोटी वाली है। फुल अपग्रेड कर लिया था भाई ग्राइंड कर करके पहली बार। आज की बैटरी इतनी। ये वाला बढ़िया होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड ऑफ। हाँ स्टैंड ऑफ, ये होता है। Show no mercy. Get to work. Suffer the wrath of me. Wrath from the skies. इसकी फट गई थी भाई। तीर वाले से बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। इसमें भी एबिलिटी स्लो वाली। मैंने सुना वो उसकी दिया भी ना आ भाई रही है, मैंने। क्या नाम है, गॉड ऑफ वॉर का भी आ रहा, एक और पार्ट। हाँ तो वो तो आएगा ना, लेकिन वो मेनली लोकी के उस पे दिखाएंगे। क्या नाम है, जो भी नाम रखा था। एक साथ रिक्वेस्ट डालना है इसकी, इसकी पीक की, पीक की भेजी तो तेरे को। पर और भेजते भेज दी भाई। वो तो कहाँ देखो पहुंच गए खेल पीक खोल में? के फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसको पीक के लिए अलग से सेटअप करना पड़ेगा अभी। पीक में पहुंचे कहाँ तक हो? अरे पीक ये पहली बार खेलने वाला है, मैंने तो पार कर रखा है। स्टार्टिंग से ही। क्यों आवाज कर। अबे अभी तो इसमें बिच्छू बिच्छू भी कुछ कुछ आ गए ना भाई। एक या 2 दिन खेला था।
पहला वाला कंप्लीट करा था, दूसरे वाला छोड़ दिया था। क्या था वो जंगल था। पहले वाला कंप्लीट करा था मतलब? सबसे पहली वाली चढ़ाई होती है। वाह यार, पासपोर्ट मिल गया। अच्छा। अरे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा क्या मेरे को? दूसरे में उतरा कांटे वाले, वो वाला फिर छोड़ दिया था उसमें। जतिन भाई तुम तो आओ। सही है, मेरे को अच्छा दूँ। क्या भाई? स्ट्रीम स्ट्रीम पे ऐड करना पड़ेगा ना? रुको लिंक भेज देता हूँ तुमको। भाई खेलो मैं तुम्हारा में। ठीक है भाई। विशु लैम्बड़ा। आजा इधर आईना है। देख रहा नारुतो बना हुआ हूँ। क्या हुआ जतिन भाई? अरे यार ये चल नहीं रहा यार स्टीम मेरा, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स पे जाऊँ क्या? अबे इसमें म्यूट कर ली। अरे हर्षित भाई इनवाइट कर देंगे ना, तो ये भेज देंगे। भाई हर्षित भाई तू इनवाइट कर ले। भाई मेरे से इनवाइट नहीं होगा भाई। अरे इधर आना, इधर आ। शिफ्ट दबा के आ भाई, जल्दी जल्दी। गधे की तरह चल रहा है। इसमें देख ई से इनवाइट करने का आएगा। अरे ये मेरा फ्रेंड ही नहीं है ना। ऐड ही नहीं है अभी, स्टीम पे ऐड ही नहीं है अभी। स्टीम पे हाँ, तो मैं ये लिंक भेज देता हूँ ना, ऐड अ फ्रेंड। मैं ही कर लूंगा, पर ये स्ट्रीम बहुत धीरे चल रहा है। अरे इधर आ भाई, ये देख नारुतो का हेडबैंड लगाया मैंने। अरे नारुतो का हेडबैंड छोड़ो। अरे ये मेरे में भाई, ये देखना भाई जतिन भाई ऐसा आ रहा है यार। अरे तो हर्षित भाई अपनी स्टीम बेच देंगे ना, वो तो उनके पे ऐड कर वो तो कर ही नहीं रहा ना, उसने तो बंद ही कर दिया। कैसे करते हैं? कैसे करता है? ये ले भाई, मैं तेरे को लिंक व्हाट्सएप कर दे, मैं इसी पे कर देता हूँ, डीएम कर देता हूँ। ये ले भाई। अरे इसमें मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। अरे मेरा अकाउंट नहीं ना लॉग इन के लिए, फिर कोई पास क्या अकाउंट मेरा मतलब मेरे पास नहीं ना, आईडी पे आएगा फिर वो ओटीपी। क्या बोल रहे हो भाई? या तो तुम लिंक भेज दो ना, मैं लॉगिन करके भेज दूंगा रिक्वेस्ट। बस मेंढक की तरह कूदते जा। ये लो भेज दिया मैंने, भेज दिया। लगता है आधे घंटे की खेल पाऊंगा मैं। कोई नहीं, देखते हैं 6 बजे तक हो बस। अच्छी भाई ने लेट कर दिया। हाँ भाई सारी गलती हमारी तो है। क्या कर सकता जेंशिन खेल के सुबह से खेल रहे हैं। Random space war. भेज दो, रिक्वेस्ट भेज दो, मैंने भेज दिया।
पीक ओपन करूँ तो ओपन तो कर लूँ। हेलो। अरे अक्षय भाई बोला ना रिक्वेस्ट भेज भेज दिया मैंने, इनवाइट कर देंगे। अक्षत माता पिता श्री ने बुला लिया होगा भाई। व्हाट इफ बीइंग बोन पॉसिबल, ये क्या गेम खेलने लग गए। ये है पीक। भाई किधर से आता है वो रिक्वेस्ट का, आया तो था। भाई मैंने इसको बोला था 12 बजे खेलने का, ये लोग वही 4 4:30 बजा दी इनने। हाँ भाई चीक। कुछ तो हुआ। अरे यार आ गया मैं, हेलो हेलो। वाह यार। करो चालू कर दो फिर। म्यूट कर लिया दोनों ने। म्यूट को कर दिया। आओ हर्षित भाई। बोलो। वाह यार, हाउ टू डाई दिखा रहा हूँ तो। अभी गेम में बोल रहा हूँ मैं, ये साला 5 हो गया।
हेलो हेलो अरे म्यूट भाई गेम में बोल तो रहे हैं सब। दो मिनट खुद ही खा लेता हूँ। देख क्या आवाज क्यों नहीं आ रही? भैया मेरी हेल्थ इतनी क्यों चली गई? अरे मेरा माइक म्यूट है। भाई दो जगह मत बोल, दो जगह मत बोल। हाँ हाँ, अरे मेरा वो क्या बोलते हैं, हेडफोन से माइक बंद था। फिर से म्यूट है। अरे गेम में बात कर रहे हैं ना, गेम में नहीं आवाज आ रही क्या भाई जतिन भाई? जतिन भाई गेम में आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। आ रही। अरे इसमें नहीं आ रही जतिन को। आई आई आ गई। भाई तुमने मेरे को जहरीला फल खिला दिया यार। चलो आप पहाड़ चढ़ना, जल्दी आ जाओ। अरे मेरे डिस्कॉर्ड में बात कर रही है। मेरे को समझ में देख तो पूरा क्या हो रहा है। अरे ये आ ही नहीं रहा है ना यार, पता नहीं दो दो कदम चलता है और रुक जाता है। अबे ये कैसा पहाड़ है यार? मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा? हेलो हेलो। कहाँ गया अक्षत? पीछे ही हूँ भाई। हाँ पीछे। इधर देखना, पीछे तो देख। अरे वाह।
अरे ये कहाँ से सिर्फ बीच में आ गए? ले भाई एक नारियल और है, तेरे को चाहिए तो बता, अभी फोड़ता हूँ। कहाँ फंस गए? ले भाई ये नारियल है, खा ले। अरे राइट क्लिक से विशु होल्ड करेगा ना तो चढ़ने लगेगा। तो स्पेशल तो है ना। चढ़ गया, चढ़ गया, गिर गया। अरे स्टैमिना रहता है ना वो, जब उसके हिसाब से चढ़ पाते हैं अपन, वो खाली होता है तो अपन गिर जाते हैं। अभी तो भरा हुआ है। हाँ जैसे ही शिफ्ट दबाएगा चढ़ने लगेगा तो वो कम हो जाएगा। आ जाओ भाई, ये देखो इधर आओ। ये जो है ना भाई, ये पौधे कहाँ गए? इसमें देखो ऊपर जहर लगा हुआ है, ग्रीन ग्रीन, ये नहीं खा सकते, जहर चढ़ जाएगा। तो भाई पानी, अबे अबे ये क्या हो गया? जेली पे फिसल गया। चलो आ जाओ भाई, इधर ऊपर चढ़ना है भाई अपन को। कहाँ जा रहे हो? ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ भाई। अरे अबे क्या खा लिया इसने? भाई पट्टी वट्टी है क्या इसको? क्या करें अब? हाँ मेरे पे बैंडेज आ जाएगा ना। अरे छोड़ो भाई जीते जी मार दिया भाई। अबे कुछ उल्टा सीधा उठा के खाएगा तो ऐसे ही होगा। अब तो नारियल फेंक के मारा तो वही तो खाया था। नहीं भाई, अभी वहां फल रखे हैं, ताजे फल रखे हैं तो गाइड बुक फेंक दी इसने। लो भाई कैच करो जिसको भी चाहिए। ये ले विशु, कैच कर। मत कर जतिन भाई, तब फेंक देता हूँ एक। चलना, ऊपर चलना है। पीक है, डाउनफॉल नहीं खेल रहे हैं भाई अपन। डाउन ही ज्यादा सही है। इसको हाथ में से कैसे रखना शेप को? क्या हो गया? अरे नीचे देखना 1 2 3 4 लिखे होंगे, जिस वाले भी पी स्लॉट में होगा वो वाला बटन दबा दे। नहीं हटाना है, हाथ में से हटाना है। हाँ तो 1 या 2 नंबर पे होगा ना। अरे चलो फटाफट। और फिर गिर गया कहीं तो। अबे हर कहीं से चढ़ भाई। विशु स्टैमिना फुल हो तभी चढ़ना। आजा इधर, ये लेफ्ट साइड में जगह है, तेरे को बड़ा ही पत्थर चढ़ना है एक ही बार में। हाँ चढ़ तो गया लेकिन। ऊपर जलिए देख के आना। अरे जली अलावत, अबे नहीं जल्दी आ। कैसे चढ़ते हैं भाई? अबे सिर्फ माउस में लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखेगा तो चढ़ने लगता है और स्टेमिना के हिसाब से चलता है। लो ओए गाइड तो तुमने बना दिया है मेरे को, लेकिन अरे वाह, और पीले से खा लेता हूँ एक। कहाँ से चढ़ा जाए भाई? यहाँ से तो फंस नहीं जाएंगे। इधर से चलते हैं, ये लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट से आ जाओ।
विशु तो भाग रहा है बहुत तेज, ऐसा लग रहा है अकेले ही पीक कर लेगा। वाह यार। अरे भाई ये इधर साइड से आता ना, इधर से आ जा, ये इधर से आ जा। स्टैमिना फुल हो जाने दे फिर इधर से आ जाना। अबे विशु सांस बोलो। में जाना है भाई। ऐसा? क्या हो गया, चोट वोट लगी है क्या? क्या हो गया है, दोबारा ग्रीन फुल नहीं है क्या? हाँ। भूख लग रही है क्या? लियो कहाँ चला गया पता नहीं है। इसमें मुक्का मारने का होना चाहिए था, इसको बहुत तेज मारना है मेरे को। यहाँ कुछ है? हाँ है ना, इधर से आ जाओ। आजा भाई, अरे ऊपर आजा। वाह यार। आगे नहीं है? अरे गया, खत्म हूँ। इधर से नहीं जा सकते लगता है। लेफ्ट से चलते ना भाई, तो नीचे उतर के वापस से लेफ्ट से चलते हैं। चलो आ जाओ। क्या एनसीसी वॉरियर बनेगा भाई विशु तू? मैं तो अच्छा ये राइट है ना, हाँ मैं भी लेफ्ट से ही जाना चाह रहा था, तो ये विशु के चक्कर में इधर आया। पीक नॉट पीकिंग। नीचे जलिए देख के तुम मारना। ये तुम लोग घूम गए? मैं नीचे आ गया, जलिए देख के आना। अच्छा वहां हो तुम लोग। रुको तब तक मैं, एक लाल सेब दिख रहा है ताजा ताजा। अरे एक और संदूक है बड़ी वाली नीचे। स्पोर्ट्स ड्रिंक है और रस्सी है। लाओ भाई इसके बैग में डाल देता हूँ सब सामान। मेरा भरा हुआ है। हैं? कैसे भर गया भाई? खाली तो है बैग। ठीक है खाली। ये रहा ना, पानी भी भर दिया। चलो यहाँ से दिख तो रहा है कुछ रास्ता। हाँ ये देखना लेफ्ट से है पूरा। बस बन जाओ हीरो और चोट लगा लो। अब कहाँ जाना है भाई? जतिन भाई बताओ। भूख लगी है तो खाना पीना क्यों नहीं खा रहा है? कहाँ है खाना? यहीं से थोड़ा सा लेफ्ट से किताब ही है। उधर ऊपर चलते। किताब खा ले भाई पका के तू। आ जा इधर आ। अबे ये कहाँ आ गया? मैं तो गलत फंस गया, मर जाऊंगा अब मैं। अरे कुछ भी नहीं हुआ।
भाई विशु कहाँ है यार? तेरे को मैंने इतना सब सेफ सूट दिया, जल्दी आ। कहाँ है? ऊपर चढ़ कहाँ गया? ऊपर चढ़ गया। अरे रुक, तेरे लिए एक और सेव लेकर आता हूँ फिर। तू तो यहीं पे है, बोले ऊपर चढ़ गया। चढ़ गया था मैं, फिर मैं वापस नीचे आ गया क्योंकि तुम इधर थे। रुक जा, एक जगह तो रुक। ये ले भाई। हाँ यार। पेट के अंदर गया तेरे सीधे। वो कहाँ क्या? आया पूछता है। कहाँ? यहाँ से चले, मेरे को सामने ज्यादा अच्छा। उधर से ही चलो, यही से चलो, यही से चलो। बीच बीच से चलेंगे तो एजेस नहीं आएंगे। ये कहाँ गया? ये गधा भाई छूट जाता है। कहाँ है तुम? सामान भी वो देखो, वो देखो। ओए पीछे देख। ओए ये वादा इसलिए भी ले रखा है, वाह यार। आ रहा हूँ भाई। डोरा भी एक्सप्लोरर वाला। आजा आजा भाई, तेरे लिए भोपू रखा है मैंने। यहाँ झाड़ झूड़ में कुछ फूल पत्ती नहीं है क्या खाने के लिए? ये चलो लेना इधर था। आओ भाई विशु। ये खा लूँ क्या चाबी मशरूम? खा के देख भाई, जहरीला होगा तो पता चलेगा। वाह यार, भूख मिट गई। अरे कितना खाएगा? आजा इस पे। 2 मिले थे, दोनों खा लिए। अबे सीधे चल के चले जाता, कूदा है। और जितना भी तेरे को येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, वहां पे तेरे खड़ा हो सकता है, वहां तेरे स्टेमिना नहीं लगेगा। ऐसा सोचता हूँ। ओए कहाँ जाना? खत्म हो जाऊंगा। अबे मैं तो गिर के मर गया भाई, पाँव फिसल गया। पेट में भूखू बजा रहा है। अरे आगे और इधर तो रास्ता ही नहीं है। अरे हर्षित भाई ठीक हो गया वहां से तो। हाँ नहीं जा सकता हूँ। बीच तो पड़ेगी गई है। अरे तुम्हारी है। उसको हम बाकी आप किधर गिर गए?
पट्टी है क्या भाई? पट्टी आ जाऊं क्या नीचे? नहीं भाई, अरे मत आओ। क्यों? चलो वहीं पे खड़े रहो, मेरे को हाथ दे देना। पट्टी चाहिए थी। ना भाई, बैग में रस्सी होगी तुम्हारे, रस्सी गिरानी पड़ेगी तुमको फिर। अरे इधर पे आ जाओ यार, यहाँ पे बस। अरे मैं भी जंप मार दूं क्या भाई? यहीं पे नहीं, होगा। जंप मत मार। और लेफ्ट से नहीं, उतना स्टेमिना नहीं है यार। सिर्फ 2 ही कदम चढ़ पाता हूँ। एक काम करो भाई, तुम लोग ऊपर चढ़ जाओ, मैं कूद जाता हूँ। मेरे पास भोपू के अलावा तो कुछ है भी नहीं। बाद में ऊपर रिवाइव दे देना। मेरे को नींद आ रही है। गया। अरे भाई रस्सी तो नीचे गिर गई। अरे अजीत भाई आप किधर हो? हेलो। 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 भाई इधर कहाँ जा रहा है? फॉग में ठंड से मर जाएगा। उधर मत जा, उधर मत जा। विशु के पास जा। ये क्या कर रहा है विशु? ओए। हाँ। अब तू कहाँ केव कूब में फंसा हुआ है भाई? यहाँ से कहाँ से जाएगा? इधर आ, इधर इस पे आ। आ गया अब। अब क्या पता भाई, रास्ता तो मेरे को दिख नहीं रहा। ये अंदर केव में घुस के देख पीछे, कुछ नहीं है है क्या? वहाँ, कुछ नहीं है वहां से तो जाके ही आया। भाई और ऊपर कुछ नहीं है, पर नहीं चढ़ पाएगा तेरे को। ये इधर 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 देख, यहाँ ऊपर पहुंचना है। इधर इधर ऊपर टीला दिखा? अरे इधर कहाँ चढ़ गया? उधर कुछ नहीं है। किधर जाऊं इधर से? ये मेरे को देख, वहां ऊपर टीला दिख रहा है तेरे को मेरे पीछे? हाँ। वहां चढ़ना पड़ेगा तेरे को। तो वहां कैसे जाऊं? वो तो तेरे को खोजना पड़ेगा भाई। अबे हो गया भाई मेरा भाई इस को गेम भी से। कल भूख खेलते और हैं भाई। चोट लगी हुई है। भूख चोट से मारा हुआ भाई। तो कम से कम ऊपर चढ़ के ट्राई कर ले एक बार, गलती से पहुंच जाए। अंदर गुफा में कुछ नहीं है क्या? गुफा में मेरे को दिख तो रहा है यार विशु। नहीं वो नीचे वो नीचे तरफ ही जा रहा है। गया था मैं। एक तो साथ ये जो है, अरे बाप रे, टू मच मेहनत। भाई तो अपना पहुंच गया। ये तो नीचे इधर ही तो जाना है है। भाई, पीछे। ये सामने पहाड़ पे, इसके तो सामने सामने पूरा ऊपर जाने का रास्ता है। आ पर फिर जाता भी हूँ भाई मैं। गलत जा रहा है। भाई पीछे पीछे देख, मेरे को देख। ये इधर दिख रहा है? यहाँ से रास्ता है पूरा ऊपर जाने का। कहाँ है? इधर आके बता। तू भी सीधे जा। ये ऊपर दिख तो रहा है। अरे ये तो विशु ही है ऊपर। उसके तरफ से मेरे को दिख तो रहा है यार रास्ता। अरे हाँ, ये ऊपर।
अरे रे, ये तो कोरा तरफ जा रहा है भाई। तो कहाँ जाना है तुमको? ऊपर ऊपर चढ़ के देख भाई, स्टैमिना थोड़ा कम है। पता नहीं भाई, एक तो मैप रीसेट होता है ना, ये फ्रॉस्टेड एरिया है भाई। वैसे वो फ्रॉस्ट बढ़ते जा रही है, ठंड में मारे जाओगे लगता है। थैंक यू। माँ को भी थैंक यू बोलता है। अच्छा, अरे मैं नहीं खेल रहा भाई, बाद में खेलते हैं भाई, सिर दुख रहा है। जतिन भाई तो ठंड में फंसे हुए हैं। अबे लाइट भी चली गई बे साला। इतनी ठंड, ठंड। अरे ये कहाँ संन्यास ले लिया भाई विशु तूने? सही करें भाई। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ कुछ नहीं, आ जाता हूँ। अरे वाह यार भाई यार, चप्पल चोर साला। अब मैं गुड द बाय हो जाता हूँ। अरे 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 बाद में ही खेलता है बिजली भाई। चली गई थी रे बीच में। अब इसमें एक नया मैप भी आया है भाई, आंधी तूफान वाला। हम्म। कोई नहीं, बाद में देखते हैं उसे। हो चलो ठीक है भाई, बाय। भाई बाय बाय। सही है आशीष भाई, सही है। तेरे पे तो है ना 6 बजे तक लैपटॉप? हाँ अभी तो है। क्या करना है? हाँ, मेरे को तो नींद आने लगी भाई, गेम खेल। सही में नींद आ रही है। सो जाओ फिर। हम्म, थोड़ी देर और कर लेता हूँ, फिर चले जाऊँ। राइवल्स में वो कर लेता हूँ, डेलीज एटलीस्ट। राइवल्स में डेलीज करोगे? डेलीज मतलब इन द सेंस भाई, यार जो मिशन मिलता है तो बीपी बढ़ होगा जाएगा। का कर लो। होगा का होगा कर का लो, कर पुल लिया। मार दो पुल। होगा का कर लिया। पुल्स भी कर लिया। दिखाओ मेरे को। कुछ नहीं मिला 4 स्टार। दिखाओ, कोई नहीं, फिर भी दिखाओ। क्या दिखाओ? होगा। अरे हो गया होगा भाई, कुछ नहीं मिला। कल क्वेस्ट करूंगा तो स्टेट वगैरह मिलेंगे तो कर दूंगा कल। अच्छा। हम्म।
तुम आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा अभी तो वो का क्वेस्ट बचा है, देख रहा हूँ। अभी तो मैं जेंशिन जाऊंगा, लैपटॉप जाएगा और जेंशिन फोन में है, जेंशिन खेलूंगा, फिर जेंशिन या तो फिर VGMI। Lean damage assist. हाँ भाई, फुल सो रहे। I've watched entire realities consumed by chaos. I won't let that happen again. And so it begins. How was that for a trick, Loki? Double KO! Sinking magical. That's 3! Wow, 4 in a row! 5! That's amazing! Flamed by chaos. 6 in a row! Way to go! Unbelievable! That's 3 of them. Show's over. Double KO! Your tail ends here. अरे रात में आओगे राइवल्स? राइवल्स रात में मैं कॉल कर देना भाई, मैं अभी सोने आ जाऊंगा। अभी नहीं रात में। हाँ तो रात में ही बोल रहा हूँ ना। कॉल कहाँ से करूँ, नंबर रेडी मेरे को। हाँ तो मैं दे देता हूँ ना भाई, लिख ले भाई 011 2553 2553। ये तो कोई और ही नंबर लग रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अच्छा भाई करता हूँ। ले भाई कॉल कर देना। बोल देते हैं ना सीधा, ऐसे मैं ऐसे ऐड कर लेता। क्या बोल रहे हो? बोल देते ना, मैं ऐसे ऐड कर लेता। अरे तो स्ट्रीम चल रही है भैया। अच्छा मेरा क्यों मेरे शेडर कंपाइल हो रहे हैं, वाह यार भाई यार।
कौन आया? नोवा भाई आओ, यो तो वो भाई। आ जाओ भाई, तीनों खेलते हैं। जतिन भाई नहीं नहीं, मैं अभी अरे अभी 6 बजे तक है ना लैपटॉप, आ जा भाई, बाद में खेलते रहना। आ अरे जाओ जल्दी से, कल आ 1 घंटे जाता ही एफपीएस खेलेंगे, में। 1 घंटे ही खेलेंगे। कॉम्पी तो खेल ही नहीं, कॉम्पी तो आ ही नहीं अरे तो पाऊंगा। कॉम्प ही खेल भी नहीं रहा, कोई जा रहा है, आ जा। तेरा लेवल बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है भाई। ताकि कॉम्प खेल सके अपन सब। वरना भाई मैं डायरेक्ट नो भाई के साथ जाऊंगा ना भाई, भाई मैं वहां पे बस एक बीन बैग बन के रह जाता हूँ, पता है कि भाई मेरी कुटाई हो रही है, मेरी मरहम पट्टी हो रही है, बस बाकी मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। अभी पिट के आया हूँ भाई, क्या बोल क्या रहे हो? क्या? पिट के आया हूँ, एक ये अरे तो खेल रहा था, क्विक मैच खेल रहा था, पिट गया भाई बहुत तेज। कोई बात नहीं भाई, जल्दी ज्यादा ही ऑन तेज। कर जयदन भाई, हाँ उन कर दिया मैंने। मेरे शेडर कंपाइल हो रहे हैं तब तक। यार तुम्हें पीट दे भाई, मैं नहीं मानता भाई। अरे बहुत गंदा वाला पिटा हूँ भाई, खेल ही नहीं पा रहा था। मान ही नहीं सकते तुम पट जाओ। अरे क्या है ना भाई, जो टीम खेल रही थी वो भाई डिस्कॉर्ड पे थी भाई, वो लोगों का और मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा था। आप भी डिस्कॉर्ड पे आ गए, वो अपना किसी और के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। तो क्या हो रहा था पता है, वो उनका वो पुश कर रहे थे जब मैं नहीं कर रहा था पुश, जब वो फिर भाई बैक लाइन में मर रहा था बार बार। भाई जब बैकलाइन के वो लिए मतलब भाई, तो डाइवर में सबसे इजी कौन है? और पैंथर भाई, पैंथर जो सीख गया ना भाई वो फेल देता है। भाई टिकट क्यों 500 रुपए का अभी एनिमे के? उसका डिमन स्लेयर। नहीं नहीं, एनिमे इवेंट है। भाई मेरे को तो भाई एनीमे मतलब क्या है बोलूं, नॉट माय इंटरेस्ट। आपको तो हेंटाई देखना चाहिए। हाँ हाँ, देखना क्यों भाई, मैं बनाता भी हूँ भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई मैं चाहिए किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का तो बताओ। स्लीप जल्दी 53 52। ये मेरा अभी क्यों कंपाइल हो रहा है? शेडर्स मेरा तो हो चुका था पहले। आपका ये डाउनलोड हुआ है, ड्राइवर चेंज किया है आपने? हाँ ड्राइवर ड्राइवर अपडेट आया था ना। तो और एक बार कंपाइल होगा। ये क्या बात चल रही है? हाँ ड्राइवर के साथ कंपाइलेशन अच्छा है। कर दो, आपका चालू क्या कर है? दो। आपका 3050 है ना, 6 GB वाला? नहीं भाई, मेरा 1650। 1650 क्यों, क्या हो गया? ना, पुराना हो गया भाई, सच बोल रहा हूँ। भाई जब पुराना हो गया था तभी मैंने खरीदा था, पता है मैंने कब खरीदा होगा। भाई 1700 का फैन आ रहा है भाई, इसी का हम्म, वायरलेस फैन 2.4 गीगाहर्ट्ज। वायरलेस एक्सटर्नल फैन? हाँ हाँ जी, वायरलेस फैन। अरे फैन अच्छा भी है वायर 1700 के हिसाब से देखा जाए तो। भाई तो मतलब सीपीयू का फिर क्या रोल रहेगा कि तुम भाई उससे निकाल के बैटरी चेंज करो? अरे नहीं नहीं, कैबिनेट फैन भाई, कैबिनेट फैन। हाँ वही कर दो, कैबिनेट। चालू कर दो अशिल भाई। स्टार्ट कर अरे दो ना। भाई ये शेडर्स कंपाइल हो रहे हैं। कितना हुआ? 60। लियांली का भाई फैन मिल रहा है 60। मेरे तो नहीं आए शेडर्स। हाँ अब भाई वो क्या करें यार, जिनका महंगा जीपीयू रहता है उनको क्यों आएंगे। महंगा। हर नोवा एक भाई। मिनट, एक मिनट। क्या बात, क्या है? मैं अपना बताऊं, 2050 है मेरा, 1650 से घटिया। हाय भाई। अरे मुझे बेटर इनको उसके जाके समझाओ कि 1650 ज़्यादा बेटर है 2050 से।
हाँ नहीं आएगा हल्का बेटर रेसिस्टेंस 15 20 ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है भाई दोनों का। क्या बात कर रहे हो आप? दोनों का सेम परफॉर्मेंस है 1650 और 2050 का। टीआई है इनका 1650 टीआई। टीआई है क्या? हाँ तो बेटर है इनका। ऑटोमेटिक टीआई का बेटर है जभी तो टीआई बेटर है। हाँ ओके ओके ओके। तो मेरे को तो उस टाइम पता नहीं था यार, इतना मतलब बेकार नहीं देता मैं। आप भाई कुछ भी लेना है मेरे को पूछ लेना, मेरा भाई सर्वर ही है पूरा उसी बेस पे। लैपटॉप पीसी हार्डवेयर सब सजेशन अब तो देते हैं। अब तो सीधा पीसी बनेगा। अब नहीं पीसी देगा लैपटॉप। बनाएगा तो मेरे को बोल के बनाना, ठीक है? मैं ऑल इन द सबका देखता हूँ। पीसी मैंने भाई अभी एक 2.5 लाख का पीसी बनवाया है एक बंदे का। क्या कितने बजट में बनाओगे विपिन भाई? कुछ आइडिया है? हेलो हेलो। हाँ। कितने बजट में बनाओगे पीसी? अभी नहीं, अभी तो है टाइम। मैं इससे सोच रखा है अभी। मतलब कब तक? अभी तो है टाइम, बहुत है अभी तो। जब होगा मैं बोल दूंगा, कोई वैसे वो कोई दिक्कत नहीं। बट अभी तो है, काफी टाइम है। बोल देना भाई। डीसीएम को जानते हो आप? नहीं। खाता नहीं था भाई ढिसू नाम से। अच्छा ढिसू। दिशु उसको। हाँ भाई भाई बंदे को मैं सर्वर पे बुलाया, उसको बिल्ड अच्छा दिया भाई, बंदे ने टट्टी बना के आया है लिटरली। क्या ही बोलूं भाई, लोग नहीं समझते हैं भाई, बहुत लोग भाई जब साने समझते हैं ना तो भाई बहुत मतलब उनका ही लॉस होता है भाई, मेरा क्या जाता है। भाई इस चीज की बात हो रही है भाई। अरे ये ढिसू नहीं पता अरे आपको? दिशु ढिसू का। ढिसू ढिसू। हाँ दिशु का उसका क्या? हाँ। दिशु का। अरे भाई पीसी बनाने के लिए आया था भाई, सजेशन लेने भाई। क्या 30 उसको मैं बोल रहा RX 7600 ले ले, तेरे को गेमिंग में 4060 जितना परफॉर्मेंस देगा। बंदे को चाहिए RTX भाई, वो देखता ही नहीं, देखा ही नहीं भाई परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना मेरे है। को यार मालूम थर्टी सिक्सटी मेरे को 9080 वाला भाई पता नहीं क्यों यार वो कुछ ज्यादा ही सही लगा भाई मेरे को। मैंने उसकी रॉ भाई मेरे को रॉ परफॉर्मेंस की ज्यादा नीड थी। 9080। RX मैं भी सोच रहा 90 कौन सा था? 90 सीरीज का एक था कोई सा आया था एग्जैक्ट शायद मैंने। 9080 सबसे हाँ पावरफुल है अभी। वही 9070 सही बोल रहा हूँ। 9070 हाँ भाई वो मतलब क्यों? क्योंकि वो उसकी रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। जबकि भाई मैं मालूम है पहले 3060 या 40 वाली सीरीज वाले लैपटॉप वो आए थे ना ग्राफिक कार्ड, तब मेरे दिमाग में ये रहता तो भाई इतने अच्छे फ्रेम मिल रहे हैं भाई गेम प्ले कितना अच्छा चलेगा। लेकिन फिर एक टाइम के बाद समझ में आया कि भाई फ्रेम रेट इतनी भी रिक्वायर नहीं होता है। अरे आप चालू करो भाई। भाई 13% और बचा है खत्म हो जाते हैं। 12% फिर चालू करते हैं भाई, वरना फिर बीच गेम अटकने लगेगा तो भाई फिर खेलने में मजा नहीं आता है। भाई देख मैं वही डीपीएस लेने जब वाला हूँ, तो चालू मेरे को कर डैमेज देते। देना है और असिस्ट देना है, तो मैं हीलर और डीपीएस यही दो खेलने वाला हूँ। नहीं नहीं, जब मेरी शीट रहती तब तो आप चालू कर देते हो। हाँ ना, भाई तो भाई यार तब लीडरशिप मेरे हाथ में रहती है ना। अभी हाँ सही है लीडरशिप सही मेरे है। हाथ में। अच्छा एक बात बताओ नोवा भाई, अगर अगर मेरे को बस गेमिंग करनी है, गेमिंग के नाम पे मतलब क्या मतलब यही 4 गेम खेलना है, ठीक है? तो आपके हिसाब से मिनिमम बजट कितना होना चाहिए? सारी चीज इंक्लूडेड, सारी चीज से मेरा मतलब है मॉनिटर और मतलब कैबिनेट, ये दो चीज है। हाँ, मेरे को ही बताना, मैं भी जानना। क्यों नोवा भाई? नोवा भाई चुप ही होगा। सही है नोवा भाई। आवाज आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ आ रहा है। अपनी नहीं जा रही भाई।
हेलो। हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ नहीं रहा है आपका। हमारी क्यों नहीं आ रही भाई? जैसे भाई तुम्हें आ रही है मेरी आवाज? मेरे को तो आ रही है, मेरे को तो नोवा भाई की भी आवाज आ रही है। नोवा भाई की आ रही है तुम्हें? हाँ। हाँ तो मेरे को भी रही है, तो नोवा भाई को अपनी आवाज क्यों नहीं जा रही? मुझे क्या पता। भाई स्पाइडरमैन खेलूंगा भाई मैं। हेलो। हेलो। I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Only my neighborhood is now like multiple भाई अरे realities. यार कोल्डी वो को। ले लिया, टाइगर ले लिया। चल अरे सुन ना, भाई वो ले ले, खेल। मैंटिस ले ले, मैंटिस ले ले। मेरे को जेफ खेल लेते पहले एक अरे मैच, नहीं मैंने ये नहीं, वाला जेफ खेला वेफ नहीं मत सही। खेला भाई, जेफ की मैप के लिए अच्छी नहीं है भाई। मैंटिस ले ले। अरे चेंज कैसे होता है? उसके छोड़ो मैं Someone's वहाँ पे। gotta stop Doom. I mean, Dooms. आ जाओ Only two. जी भाई ये पे। क्या लेनी है मेंटिस? हम्म। आप तो ले नहीं सकता ना। अरे सब ले सकते हैं, एच दबा के चेंज करो यार। अच्छा किधर है मेंटिस? कीड़ी। भाई यार इसलिए तो भाई ये वैल्यू से ज़्यादा अच्छी गेम है कि कभी भी बीच में भाई तुम्हें एजेंट नहीं खेलते बन रहा है, तुम चेंज कर लो। इंस्पायर। अच्छा इससे हील होता है। हाँ यार देखो एफपीएस नहीं आते मेरे इसमें। राइट 3 क्लिक से एफपीएस आ हील। रहे हैं। 3 एफपीएस आ रहे हैं मेरे। सच में? हाँ। भाई तुम्हारा नहीं हुआ क्या शेटर भाई? तो आ ही नहीं रखा था, किधर से होगा? एफपीएस की। अबे ये जाना तो मैं किस साइड आ गया? उसकी फोटो चेंज कर दी। पूरा लैपटॉप हैंग कर देता है ये, तो ऐसे इसके अपडेट जाते हैं। अबे लॉर्ड पेंगुइन मेरी गेम में पहले भी आया था भाई। बहुत अच्छा डाइवर खेलता है भाई ब्लैक पैंथर। उसको ब्लैक पैंथर बस मिला नहीं, किसी और ने लॉक मार लिया। वो खुद को भी कर रही है। वाह भाई, एक तो वैसे एफपीएस नहीं आते, ऊपर से मुझे 4 बंदे चढ़ रहे हैं। Spider Fist is ready to punch. ये हीलिंग इसी चक्कर में मेरा ये खेलने में नहीं करता इसमें। मैं खत्म हो जाता हूँ मैं। ये देखो सुबह ये दीशु को सुबह बुलाया था, अब मैसेज कर रहा है मेरे को कि आऊँ क्या पीक में। आजा भाई, बोल दे आजा। भाई देखो मैं तो साफ बोल रहा हूँ, अक्षत ने मेरे को हम लोग का ये डिसाइड हुआ था कि हम 12 बजे के समथिंग खेलेंगे, बट भाई अक्षत ही लेट करता है तो मैं क्या करूँ। अरे ये क्या है, मेरे को तो भाई ये सामने नोवा भाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? नोवा भाई कहाँ गया है? नोवा भाई किधर है मतलब? अब देखो भाई साला समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ यार 4 हीलर। अरे ठीक है, खेलो खेलो खेलो। भाई नोवा भाई बाजू में हूँ मैं। वाह यार,
फिर ले मार दिया। इसलिए मैं नहीं करता आधा गेम तो मैं खेल ही नहीं अरे पीछे कहाँ जा रहा है? Not good. They're getting closer to victory. You'll have to keep fighting until we have a winner. Resources are nearly tapped out. Well, you can't expect to win them all. कद्दू की टीम आई। खत्म हो गया। हाँ ना भाई। मैं तो अभी लोड पता नहीं क्या ही चल मैच ही चल रहा है तो मेरा। मैं अकेले ही खेल रहा हूँ क्या? कौन सा मैप आ रहा है माइक कैसे आ रहा है? भाई? नोवा भाई फिर से ज्वाइन करो ठीक वही। अरे मेरा माइक कैसे आ रखा है ये इसमें टीम के ऊपर लिखा है। हेलो नोवा भाई। हेलो। आपने फिर चालू कर दिया क्या अगला? हाँ ना। अरे क्यों कर रहे हो भाई? मेरा फोन बना दो, मैं तो अभी पिछले मैच में ही हूँ। पिछले मैच में अबे 350 पॉइंट हो रखे हैं अभी भी। थोड़ी शर्म कर लो, मेरा इतना वो नहीं है फिर भी थोड़ा रहम कर लो मेरे पे थोड़ा। भाई आया सीधा इसी पे ला दिया भाई। वाह यार। बीच का पूरा गायब कर दिया। लोडिंग वोडिंग कैरेक्टर कुछ तो अच्छी चीज है ना भाई यार। डायरेक्ट मैच टू मैच में जा रहे हैं भाई। इतना बिजी है कि भैया ना शो इधर एनिमेशन ना उधर एनिमेशन। अरे यार बैकग्राउंड में सिर्फ एक डिस्कॉर्ड चल रहा है, कुछ चल रही है फिर भी ये कहीं कुछ 3, 2, 1. Some assistance, please. The cosmos heals you. Your voice is in my head. If you listen. I feel renewed. I'm taking care अरे किधर? We are in this together. The cosmos heals ये बार उसका एक तो भूल बनाइए बनाते ना जाने के लिए। You should see this. साला हीलर में यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोज हूँ भाई। छी भाई। अबे ओ भाई पूकी भाई थोड़ा हील वील दे दो रे। क्या हील दे दो? मेरा कुछ चले तो मैं खुद करूँ। कद्दू जीरो ऐसा है और किसी लिए ऐसे लिए तो नहीं खेलता मैं। और आपको क्या लगता है क्यों नहीं खेलता? गेम तो ठीक है लेकिन ये इसी चीज़ मूड खराब कर देती है पूरा। क्या चीज मूड खराब कर देती है? ये जो FPS नहीं आते हैं। कोई GFX नहीं है क्या इसका कुछ? मतलब ऐसे FPS आगे बूस्ट कर दे। Just what the doctor ordered. हर गेम का GFX होता है ना, इसका भी ढूंढ लो भाई। वो तो Healing power. Nice. This time I need healing. Powering up. Whatever that on was, it's gonna stop that vehicle. भाई खत्म हो जाए तो अगला चालू मत करना। देख लेना। The cosmos heals you. I am at your service. Us against the
नहीं है heals. स्क्रीन चल रही मेरी थोड़ी सी चल एनवीडिया का ड्राइवर अपडेट आएगा। हाँ एनवीडिया का ड्राइवर अपडेट आएगा। हाँ 10 सितंबर को आया था लेकिन वो यार से मेरा ऐसे जैसे आता जाता है नहीं चल रहा है मैं अपडेट नहीं कर रहा। I am ready to put on a show. The moon haunts you. ये तो वैसे ही नहीं है। बस साइड में खत्म हो जाता हूँ। मैं अपनी टीम में हीलिंग ही बेकार रखा था तुम्हें क्योंकि भाई अपनी टीम में बस हीलर ही बकवास है। सही है मेरे पे बकवास बोल रहे हो भाई भाई मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ भाई। भी नहीं बोल रहे। सही है भाई अगर हीलर का वो होगा तो या डिवाइस जो भी हो गया मैं भी हीलर ही हूँ भाई। उसकी हालत भी वही तो कहाँ जमीन के नीचे आ गया ना। इसके नीचे आ गया जमीन के नीचे टेलीपोर्ट हो गया तो 650 का डैमेज भाई उससे ज़्यादा का डैमेज भी नहीं। चल इसके बाद कर लूँगा नहीं करता मैं ड्राइवर अपडेट कर रहा हूँ स्टेटस करूँगा फिर आता हूँ रात को। चालू मत कर देना अगला। अरे चलता है यार। अरे खाली तो नहीं रहा ना 1 FPS। Chance is over. Use some healing, Khonshu. The cosmos heals. Stop them in their tracks. healing only healing That grin of your son. You're not alone. Might feel better already. Some assistance, please. Against the world. Quantum lashes down. वाह भाई इनका 12 घंटे के लिए That's the boost I need. The moon haunts you. अबे एफ के मत खड़े रहो रे। चलेगा तो सर्च करो ना अटका पड़ा है स्क्रीन फ्रीज हो रखी है मेरी। I am at your service. Love battlefield medicine. This time I need healing. Healing power. I am ready to put on a show. On your 6.
भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? चालू मत करना, मेरे को जानते हो फट जाएगा मेरा बहुत। मैं तो सीधा अल्ट्रा 4 ही मार रहा हूँ, चल ही नहीं रही स्क्रीन। भाई ये भाई की आवाज ही नहीं आ रही। नो भाई की जीरो जीरो हील्स द फक यू। मेरी होगी नो जीरो हील तो दिया यार मैंने। भाई, नो भाई को टैग मारना है यार। The right heroes could make all the difference. भाई अभी तेरी बुराई कर रहा था ये आवाज आ जतिन। रहा है? ओ मैं हाँ कुछ भाई। नहीं बोला भाई। अरे एक और बार कंफर्म कर लो, आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रही है। आ रहा है। Peace to this universe, no matter the अरे ये cost. मैं थोड़ा बोल टाइम रहा था के साथ भाई, होता तो कोई तो है भाई जो एनीमे देखता है साथ में भाई। ओ भाई मैं वो ले रहा भाई, नेमोर ले रहा हूँ मैं। हल्क मिल गया भाई, हल्क वाले प्लेयर मिलते नहीं है। I will bring peace to this universe. Those who oppose me, I am the ocean's avenging sun. You will get no love from me. They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. भाई डिशम राइवल्स कर ले भाई, आज रात में राइवल्स खेलेंगे। मेरी तुम आ गया चैट में। हेड में इसको मेरा पीछे भी बन गया। इसे बोलो, चल दिया है भाई, बता। इसे बोलो जाके GTA खेले भाई, GTA खेले जाओ, कुछ ना करो ना। इससे वैल्यू आया जा रहा, ना वो हो रही, तुमका ना ही फेस कुछ ये हो हुआ रहा। था भाई, मेरे को अभी भी याद है। बाहर तक सुबह से मैं अभी आया। हाँ भाई, ये हील कौन कर रहा है भाई? हीलर ही नहीं है भाई। उसके भैया ने वो आप ही हीलर हो। रखी मेरे से, वो नहीं मेरी कोई डायरेक्ट हीलर, कौन सी देसी हीलर हूँ भाई। क्यों नहीं हो हाँ ना, रही, आप ही हीलर हो, क्यों बोल नहीं तो हो रहा रही। हूँ। ओए मेरे को लगा आप हील कर रहे हो तो भाई मैं आगे फ्रंट लाइन में चला गया। नहीं भाई, मैं तो भाई वो ले लिया मैंने। मेरे को डीपीएस करना है भाई, 30,000 का डीपीएस करना है और मेरे को 30 एसएस भी देना है। ये नेमोर से क्या डीपीएस इजी हो जाता है यार, इसलिए मैं डीपीएस ले लिया हल्के रहने से। क्योंकि भाई ने वो करने को बोल रखी, मेरी वो नहीं हो रही राइवल का। हाँ तो ठीक है भाई, वो कर ले भाई। फोन से जुगाड़ करना पड़ेगा इसे, इतना कितना स्पेस नहीं है इतना, तो ऐसा ही है कि ऐसे क्या कर रखा है, वैल्यू ही तो है ना इसके पास गेम में। क्या वो कर ही रखा गेम में, इसका पीसी आते ही भर गया कि गेम नहीं कर पाया। मेरे को कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। वो जुगाड़ क्यों करनी भाई, इतना अच्छा लगा इसीलिए भाई, किस काम का। अभी दिया है इतने में, भर भी दिया। आप अभी भी लाइव हो? हाँ मैं अभी भी लाइव। मैं 7 बजे बंद कर दूंगा, 7 के अप्रॉक्स। मैं तो सोच रहा हूँ बूस्ट करके इसमें अपना स्टेटस कर दूँ। भाई मैं फ्लायर्स को तो मार ही नहीं पाता, ठीक नहीं। अरे मर गए यार, और वो अक्षर भाई भी चले गए तो उन्हीं को आता था पूरा गेम। कुछ नहीं है, झूठ बोले, इन्हीं का मन नहीं था आज जॉय का। नहीं भाई मैं भाई चालू होते ही बोलने लग गए, नींद आने लग गई। हाँ चालू भाई होते
सही है भाई। अभी वैल्यू खेलनी है। किसके साथ खेलूंगा? ये भी है। नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं तो हो गया मेरा आज का भाई। क्या हो गया? मेरे को बोला यहाँ वैल्यू खेलूँ? खेल भाई, वैल्यू खेल ले भाई। मेरे को तो बोर होने लगा तो भाई मैं कम ही खेलता हूँ। देखो आधे घंटे का बैन भी लगवा लिया इसने। किसने किसने? ऐसे कह दिया भाई। बैन तो यार क्या बोलो हफ्ते भाई? भर का पड़वा, जब 10 साल का बैन पड़वा, आधे घंटे का बैन का। अबे अल्ट मेरी अल्ट कहाँ गई भाई? अबे आधे घंटे का बैन लग गया तो भाई, भाई छोड़ दे भाई। भाई नहीं है गेमिंग भाई, नहीं है भाई, मत खेल भाई। अरे ह्यूमन फॉल फ्लड खेलते जो भाई, ये आवाज गेम खिलवा लो। इसे ले लिया पीसी। अरे भाई मेरे को नहीं करना है, ये जबरदस्ती करवा रहे हैं भाई मेरे से। वैसे बोलो कैरी कर दे, इनकॉम्प्लीट कैरी कर दो भाई। ये क्या कार्टून की तरह मर रहा हूँ भाई मैं, क्या कार्टून की तरह मर रहा हूँ भाई। मैं तो ऑटो डीपीएस के चक्कर में भाई। एक तो भाई वो मशीन टरेट, क्या भाई इसको बचाने के चक्कर में मैं मर गया। उससे तो भाई क्या हलवे की तरह मार दे रहा है वो। तो भाई मैं उसको मार ही नहीं पा रहा कुछ, नोड़ी मार रहा हूँ मैं फ्लायर्स को। भाई मेरे को नहीं मार पाएगा, क्या करूं भाई, कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरे को। स्पाइडरमैन कौन है भाई? बूंदी बूंदी लड्डू, वाह यार। भाई पुगी भाई हीलर नहीं खेल रहा ना भाई यार, वही दिक्कत हो गई भाई। तो कुछ मिल रहा है क्या जी? बंडल एंड एक्सेस मार्बल ड्राइवर्स की फेस्टिवल। कॉटन भाई देगा ना आपने? क्या गया? इधर मैं कहाँ से खेल रहा हूँ? इधर मैं तो खेल ही नहीं रहा। मैं और कैसे इधर आ जाऊँ? कैसे खेल रहा? 4 किल पे क्यों? क्योंकि हील नहीं मिल रही। हाँ क्योंकि मैं नहीं हूँ बोलो। और एक बंदा गायब है, टैंक लेना पड़ेगा। सही है। भाई कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं कर रहा है कुछ नहीं। लियो भाई, क्या पिटाई हो रही है। इनो इनो आ गई। इनो कौन है? क्या मतलब नोवा को बोल रहा है हिल नहीं दे रहा है? हाँ यार नोवा भाई हिल नहीं देते यार। हाँ भाई हीलर खेला करो भाई, ही स्ट्रैटेजिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है भाई, उसको हीलर नहीं बोलते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं। ये देखो स्ट्रैटेजिस्ट ही एमवीपी है। नहीं
देखो वो हील कर करके एमवीपी बन गया यार नोआ भाई यार। भाई क्योंकि वो उनको भाई एंगल मिलता है भाई। आप एक कोई इधर होता है कोई उधर होता है भाई। भाई ये बहाने पूरा हैं, में होते हैं लोग ये भाई। बहाने हैं। ये बहाने नहीं है भाई। उनका देखो भाई वो एक ही लाइन में खेलते हैं भाई बस वो आयरन मैन को छोड़ के। ये आयरन मैन का है सबसे ज्यादा सिजियन नॉन्स। जितेन भाई तुम्हारा क्या सिस्टम है भाई, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? अभी तो ड्राइवर अपडेट कर रहा हूँ बाद में पूरा भाई जतीन भाई ड्राइवर अपडेट करने के बाद सारा सेटिंग लोएस्ट करना है ठीक है। हाँ लो ही है लो ही है। तो सब लोएस्ट पे है। हाँ सब लो है वाह यार। इतना I होता है tear through the cloudless night, just like the उसके बाद भी moon. भाई अब देखो भाई, ऐसा डीपीएस दूंगा ऐसा डीपीएस दूंगा। इवन में इंटरनेट की वजह देखो एक तो Friends call me Mark, or Stephen, or Jake. 30 seconds before you attack. Get ready. Your blades, are they psychic like mine? No, my daggers are formed from pure life force energy. They purify whatever they touch. Those would be quite useful against some of the demons in my homeland. Let's hope they're just as useful अरे here. डेशम कर ले राइवल जल्दी फटाफट, 15 लेवल के बाद कॉम्पी चलेंगे। यूट्यूब का मॉनिटर क्या है पूछना उसको पहले। 144 का कौन सा वाला है? 120 दिया। अबे उसने तो बोला था कि भाई वो पहचान वाला है तो उसको 120 बोला था, उसने 144 घर पे डिलीवर किया था। मेरे को तो ये बोला था। पहचान वाली दूसरी वाले पर क्या डिलीवर किया है भाई वो मेरे को पहचान वाले बेकार वाला सिस्टम है कोई। भाई हमारा ये ऑफलाइन है और कौन ऑफलाइन है? I've come back from far worse than that. Thank you very much. क्या करूं भाई फॉर ऑफलाइन। ये लोग पीछे से आ रहे हैं। क्या ठीक है तो कुछ करता है तो नहीं कुछ खाता है नहीं तो बोलते हो तू दिन और 12 में Back where I started. देखो ये क्या Rise and fall. और ऑफलाइन है भाई। Alright, that feels better. This is real firepower! क्या है भाई ये? कीबोर्ड का क्या खेलूं भाई? इसमें तो जाऊं डॉक्टर स्ट्रेंज को स्किन दिखा रहा करो तो मैं कर चुका हूं। But this is a whole new chapter. The cosmos heals you. अरे ये क्विज मारो भाई हमारा ऑफलाइन है कपड़े जाते हैं दीदी। Disconnected from server and temporarily left the game. My power is a gift Hello? from so long. अरे मैं छोड़ दिया भाई। रुक जाओ मैं भी आता हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि भाई हमारा एक कपल वीडियो ऑफलाइन है ना करना है।
हाँ यार अरे तुम लंबा बैन खा के बाहर आया। किसको आ रहे भाई मैसेज डिस्कॉर्ड पे? कौन है? नोवा भाई, किसकी? सही नोवा भाई की सेटिंग है भाई। सेटिंग डिस्कॉर्ड मैसेज डिस्कॉर्ड में बात करते हो सेटिंग से? अरे वो बाहर की है ना यार, फॉरेनर। फिर अरे फिर भी अच्छा अरे तो फॉरेनर भाई फॉरेनर और समझा। सही है भाई। हर्षित भाई की बनवाओ फॉरेनर में कोई। भाई तू अपनी लाइन करना भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? घर भिजवाता हूँ भाई तुमको। Anyone stands in my way, they won't be standing much longer. हाँ भाई, तुम तो भाई ये वाला ड्रोन मेरे ऊपर रख देना भाई, मेरे ऊपर उड़ते रहना। फ्लायर को तुम मारना, जमीन पे जो रहेगा उसे मैं मारूंगा। मिनीटर, ओ भाई मिनीटर कौन सा है रे भाई? मैंने अभी चैट देखी भाई जब उनने मॉनिटर कनेक्ट करके लिखा। अरे मेरे को भाई 2 सेकंड का ये है ऐसे में मैंने वो मारा था या नहीं? रुक जाओ नो भाई यार, तुम्हें मैं हिल दूंगा भाई। चलो नो भाई, भाई ये अपन को हर बार हीलर वाले गेम क्यों मिल रहा है भाई? ओए ओए ओए, वो पेनी है बाहर। पेनी ने वो ट्रैप ट्रूप लगाया है, खत्म ही हो जाना है। वाह यार, नो भाई प्रो है। We are in this together. Healing power. Healing power. Always right. मुझे सब लो करता था फिर भी अरे यार वो उसको मार देते क्या, क्या नाम था उसका, फिल्टर जोन। बहुत लो कर रहा हूँ यार। भाई हेलो भाई बचाओ भाई, मैं आपको नहीं मार पाऊंगा। भाई एक साथ जाओ ना। The cosmos heals you. I'm good to go. वो मून नाइट ऊपर क्या कर रहा है? The cosmos heals you. जाओ ना भाई, तुम्हें उगा देता हूँ भाई, ये लो। हाँ दे दूंगा। अंदर जाओ। Spiders. Disgusting. अबे भाई ये क्या है भाई? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा भाई। रहता है His demon reduces healing seed। There's still so much to do. क्यों नहीं हो रहा रैंक अप? हाँ भाई नहीं हो रहा है। एडम का भाई ये डैमेज रिड्यूसिंग सीडी, वाह यार। मारो उसको भाई। Needed that. Thanks.
लो इस कैरेक्टर के लिए भी एम चाहिए तुम्हें? वाह यार, रोज नई नई चीजें पता चलती है। भाई वो दिखा। अबे यार, अबे भाई मेरे को खड़े की एरिया छोड़ क्यों गए भाई? सब भाई कार्टून है, मेरे भरोसे एरिया छोड़ दिया। Help get that vehicle to its destination. Quantum magic. Like me can use a few extra hands now and then. Extermination! Healing power. Battlefield ready again. भाई इन लोगों का अल्ट कभी यूज होगा ही नहीं है भाई ये। The cosmos heals you. Love, but thanks. भाई कोई अल्ट तो मारो, अल्ट भाई। अरे वाह क्या वो। पता मैं मामला भाई। हेलो भाई अल्ट क्यों नहीं मार रहे सही से? मार दिया दोनों ने भाई। मर भी गए ना। I have risen. अरे तो वो मेरे पे भाई, मैं उनको हील नहीं कर पाया ना। आपको वाईफाई स्लो है। हाँ 40 MBPS। अल्ट वेस्ट कर दिया उन्हें। We're in this together. I found it. Healing power. Love battlefield medicine. I abhor your mission, Ultron, but your methods are effective. सारी बिल्डिंग से बाहर आओ भाई। The cosmos heals you. I have spotted a foe. Some assistance, please. पीछे पीछे तुम्हारे पीछे हील कर The cosmos heals you. I'm good to go. We must swiftly navigate this urban jungle. Quantum magic. The cosmos heals you. Lead them to Khonshu. Our foes have arrived. The cosmos heals you. Hell unleashed! Shape human destiny. The vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. मैं उसने इतनी खराब जगह अल्ट मारी है ना भाई, मेरे को देख के रोना आ रहा है। The cosmos heals you. Love battlefield medicine. This vehicle must reach destination. Fail with Ultron virus reinforcements. Hi, that feels good. The cosmos heals you. I abhor your mission, Ultron, but your methods are effective. This time I need healing. Quantum magic. I feel better already. The cosmos heals you. That's it! Don't let anything stand in your way. The wounds are gone. ओए ओए ओए, मैं ही खत्म हो जाऊंगा। भाई 50 ग्राम की हील मिलेगी। Extermination! You are safe now, my friend. So long. I'm good to go. Born again! अंदर जाना पड़ेगा सबको रिवाइव करने के लिए। ओए ओए ओए, इधर आओ रे, पास में। I require some aid. You are safe now, my friend. Our enemies showed themselves. Healing power. Hi,
भाई 0 किल भाई, 0 किल भाई। भाई पैसिफिस्ट आदमी हूँ भाई मैं। भाई बता रहा हूँ भाई, मेरे से बड़ा पैसिफिस्ट कोई नहीं हो सकता भाई। इतना डैमेज दिया फिर भी भाई 1 किल नहीं है मेरा। ये देखो 2000 नॉय डैमेज देखो। दिया है, 2000 डैमेज दिया है भाई। आप क्या एक दिखा रहे हो? सेकंड, अरे वो दिखा रहा हूँ क्या कहते हैं अपनी सेटिंग्स इसकी वीडियो की। आ रहे हो क्या स्टीजर भाई? इनवाइट तो करो। अच्छा यहीं बैठे हो? वाह यार। इसमें देखो भाई वाह यार, अब तो भाई 2 लोग हैं तो भाई हीलर खेलने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं डीपीएस ही खेलने वाला हूँ हट। ऐसी तेजी भाई। अरे यार मेरे वो शेडर लोड नहीं हुए थे। लियो। इतनी जल्दी मैच लग जाता है इस लॉबी में। क्या इशू आ रहा है देखना पड़ेगा। आपका कौन सा विंडोज 11 ये क्या एफपीएस नहीं लगा आ दिया रहा आपने? है, अरे कॉम्पी मेरे पास लगाते ना। एफपीएस नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक है, नेटवर्क भी। भी लगा तो भाई यार अभी ना नींद आ रही है कोई ज्यादा। वैसे ना आधे एफपीएस मन में से मैं कब नहीं आता खेल, है कि यार जब ये मैं क्या सब कुछ सब बंद खेलने करूँ ना, अभी। बैकग्राउंड में कुछ नहीं आधे चल रहा, मन से नहीं खेलना भाई। तब आता है। अभी वो आखिरी के जो 2 एक हफ्ते रहते हैं ना उसमें मैं पुश कर देता हूँ भाई, गोल्ड गार्ड देता हूँ। उसमें उसमें रियल गोल्ड्स आते हैं ना सारे। अभी अभी जितने भी डायमंड जीएम थे वो गोल्ड पे हैं। हाँ ना वही तो कह रहा हूँ मैं, समझदार हुआ। और भी कुछ कहता है अभी टफ पड़ता है पुश करना। देख I'm your लेंगे friendly देखूंगा neighbor. अभी। Where's the timeline where we all just go down to the bodega for a sandwich? टीजर भाई यही आइडिया है। भी आना है। नो भाई की नहीं के साथ खेला करो अपनी मेन आईडी में। अरे पहले ये वो गोल्ड ब्लैक तो आ जाए कम से कम। नो भाई गोल्ड फ्लैग चले जाओ। अरे चला जाऊंगा भाई। दोनों भाई साथ में मिलके वहां जाना, बना हुआ वॉल। Yes, I do. But I'm always looking for more. Glad to add you to the list. एक कंट्रोलर के प्लेयर भाई क्लिक कर रहे हैं और वॉक करके। अरे तो ये तो इसमें भी हो जाता है। नहीं कर पाता हूँ मैं। अरे कर लेते हैं भाई, मैं भूल गया कौन सा बटन तो था। ये देखो पीछे स्पाइडरमैन। उसके लिए आपको एक बटन असाइन करना पड़ेगा और क्या, तो यही तो चीज है इसमें भाई। वो क्या चीज है इसमें, फिर क्यों बोल रहे कंट्रोलर लगेगा? इस रैंक की सारी साइलॉग ना ऐसे मर जाती है मेरे से लूना से। 50 ग्राम की हीलिंग भाई। Back in the swing of things. स्पाइडरमैन भाई। हाँ मैं ही हूँ भाई। हाँ बैकलाइन को मारते रहना। कोशिश तो वही लगी रहती है भाई, बस कॉम्बो नहीं लग पाता। हेलो। हाँ खेल रहे हो क्या? हाँ। अरे भाई पूरी मैच उठ गई भाई। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे भाई वो करी थी डीमन स्लेयर की टिकट मैंने 7 तारीख को, ठीक है। हाँ। टिकट नहीं मिल रही, 17 तारीख की करी थी 6:45 वाला शो। अब मैं ऑफिस का क्या है कि मैंने बोला कि मैं अब भाई 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे जाता आते आते हाँ। यहाँ से दूर, तो मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है। मंडे को बता दिया था मैनेजर को, तो मैंने बोला मैं 4 बजे चले जाऊँगा, तो उसने बोला तुम चले जाओगे। मैंने तो बोले काम, तो उसने बोला कि तुम जल्दी आके कर जाना। तो भाई मैं 9 बजे चले गया था सुबह ऑफिस। मैंने भाई जैसे जैसे जल्दी काम किया, लंच ब्रेक छोटा शॉर्ट करके कोई आया ही किया नहीं भाई। 4 बजे तक मर गया। 4:30 बजे तक के काम खत्म किया हाँ। और भाई 4:30 बजे घर आ गया। अब भाई मैं मस्त नहाया वगैरह, मैंने बोला अब जाऊंगा। और भाई 6 बजे मैंने सोचा चलो अब वो करता हूँ बुक। शर्ट ही पहनी थी बस। ओ भाई मैंने बोला यार एक बार टिकट तो देख लेता हूँ। वो भी टिकट कल की है भाई। तो मतलब आज का जो तुमने हाफ डे फुल डे लिया वो पूरी ऐसी तैसी हो गई? नहीं नहीं वैसे तो मैंने सारा भाई आज का जो मैं घर आके काम करता हूँ एक्स्ट्रा भाई, वो मैंने कल किया, पूरा मैनेज किया। और उसके बाद तो यार ये तो भाई बहुत, और लास्ट मोमेंट में पता चला भाई पैंट पहना ही नहीं था मैंने बोला कि अभी पहनता हूँ, पहले उससे पहले एक बार टिकट देख लेता हूँ। भाई कुछ तो मतलब नया में कर दिया भाई मैंने आज। अब भाई इसका ये मतलब है कि अब मेरे को गेम खेलना चाहिए।
आ जाओ। आता हूँ भाई, जरा जरा गेम लैपटॉप निकालो भाई, पूरी ऐसी तैसी कर दी यार। आ रहा हूँ, चलो 5 मिनट दो, लैपटॉप से ज्वाइन होता हूँ। क्या बोल रहा हूँ भाई? Spider Fist is ready to punch. वो निकाल दिया भाई, पूरे किल अभी निकाल दिया भाई। बोले हटाओ भाई, ये बाद में किल कौन करेगा। A testament to hellish cruelty. But justice will always triumph over evil. वाह यार, ये भाई ये चांस लाके बहुत सही काम किया। वाह यार भाई यार, एकदम दुश्मन को ही मार दिया। ओवरपुश क्यों कर रही है हमारी टीम? ओए खत्म खत्म खत्म। इधर इधर हील कर रहा भाई भाई उसने 2 हेड चिपका दिए लग रहा है मेरे को एकदम से हेला ने। अबे मैं थॉर से मारा हूँ भाई, छी भाई, उसने भाई बहुत डैमेज दिया मेरे को हेला ने, बहुत खराब डैमेज दिया भाई उसने। अरे ये मेंटिस की स्किन लोगे? समर वाली जो आ रही है? नहीं नहीं, मैंने बस लॉर्ड करा है इसका, मतलब ये थोड़ी कि मेरे को क्या वो अच्छा लगता। हाँ यार, उसकी डिफॉल्ट स्किन मेरे को ज़्यादा सही लगती है भाई। समर स्किन तो लेनी पड़ेगी, सारी समर स्किन लेनी पड़ेगी यार। हाँ। अबे भाई एक तो थॉर की स्किन मेरे को इतनी गंदी लगती है भाई, वो क्या है भाई, इंडक वाली। साइलॉक की कैसी लगती है? साइलॉक के तो फिर भी ठीक है भाई। लूना की कैसी लगती है? वैसे सही बताऊं तो लूना की ज़्यादा अच्छी है उससे, उसके कंपैरिजन। मैंटिस की भाई समर वाली मेरे को बहुत बेकार लगी। ओए खत्म हो गया था मैं। Spider Fist is ready to punch. We are undefeatable. I like this move. It feels like the spirit of this. We are undefeatable. Thanks for the shield. Back in the swing of things. The other team is extracting those resources. भाई उससे मारोगे तो वो रिवाइव हो जाएगा और ले हो गया तो रिवाइव। भाई वर्ल्ड दबाई था लेकिन नहीं टैंक ही नहीं है हमारे पास, वाली बात है यार। हाँ कोई तो टैंक खेल रहा था ना पहले। चेंज कर दिया उसने। सबको डीपीएस जो खेलना है। और क्या भाई यार, वो भाई मिशन डीपीएस वाला है ना यार अभी। भाई कायदे से तो भाई ये इसको स्विच करने चाहिए। क्या नाम है इसका, पिस्तौल बाज को, डबल पिस्तौल वाला। भाई भाई एस भाई स्पाइडरमैन से एस भाई, छी भाई भाई स्पाइडरमैन से एस भाई, इस जमाने में कभी नहीं मिली भाई मेरे को स्पाइडरमैन से एस। क्या करें, पूरी टीम बेकार है ना। तो भाई क्या मतलब है, स्पाइडरमैन अच्छा है।
कोई नहीं आ रहा है। ओए ओए कहाँ से इतना डैमेज आ रहा है? जी भाई टैंक ही नहीं है यार। एक तोड़ने वाला टैंक इधर उधर उड़ रहा है और दूसरा डीपीएस करने वाला। ये मून नाइट मेरे को ये नहीं खेलना है ये क्या है? Careful, Anand. There might be others. Rumble speed is climbing fast. डबल स्पीड होगी। Might want to take a look over here. That put some pep in my step. अरे यार नहीं हुआ फ्रीज में करने वाला था। मारो 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 सबको मारो। कोई नहीं मरा क्या? पहले हीलर टारगेट करा करो यार। अरे करा था भाई, हीलर ही टारगेट करे थे 2 बार। नोवा भाई पता नहीं किसे मार रहे थे। हाँ भाई मेरे को सब मार रहे थे भाई क्योंकि उनका मून नाइट है ना। हीलर मारा करो सबसे पहले। ये कद्दू के डीपीएस भाई 7 किल। अरे भाई कॉम्पी लगाओ कॉम्पी खेलेंगे। पॉम्प लगाऊंगा यार भाई, टफ पड़ जाएगा यार, ये ईमानदारी वाली बात बहुत टफ पड़ जाएगा। लगा दो। अरे तो इसमें तो और भी थ्रोअर मिल रहे हैं, इसमें टफ नहीं हो रहा। बताओ टैंक ही नहीं खेलना चाह रहा कोई। हाँ वो इतना टफ नहीं है भाई क्योंकि माइनस नहीं होगी ना। अरे ब्रॉन्ज पे हो यार, कितना नीचे आओगे? ब्रॉन्ज 3 आ जाओगे भाई ब्रॉन्ज 2 आया हूँ भाई, जैसे तैसे चढ़ छोड़ के। अरे बूस्ट करा दूंगा मैं सीधे समझ गया। अब बताओ ब्रॉन्ज से ऐसे कर रहे हो। भाई गोल्ड गार्ड जाना है यार, मानते नहीं है। गोल्ड तो आराम से हो जाता है यार। मेरा पता है सेलेस्टियल करना है मुझे इस सीजन, तभी स्ट्रीम कर पाऊंगा मैं। भाई मैं ये खेलने वाला हूँ तो मेरे को रकून चाहिए भाई, रकून ले लो भाई। सामने पता है मैजिक खेलेगी वो और टॉर्च खेलेगा। तो क्या तो टॉर्च और स्क्रल वाली। इधर तो अलग ही थ्रो चल रहा है। अरे नोवा भाई अल्ट्रॉन मत खेलो, हीलर चाहिए अच्छा। अरे मैं नहीं कर पाता हूँ इधर। नहीं भाई रखून जाओगे क्या? मैं दूसरा हीलर ले लूँ अच्छा। क्या? Someone has to protect it. They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Gear up, little one. Has some serious tech to wear. It's more than just a suit of armor. Spider's my partner. Kinda like your tree. That tree is a Flora Colossus, and his name is Groot. कैसे आएगा वो? Now that we've all been properly introduced, फिर से let's get back to the action. उधर का क्या दिख करो जाए फिर भाई। ब्रॉन्ज में कोई इतना दिमाग क्यों लगाएगा? वैसे नहीं आते हैं भाई। ये कहाँ चला गया भाई? कौन नहीं फ्लैट हैं सारे। सी रैंक को क्या है? इधर कौन लड़ रहा है? पीछे अकेले क्यों लड़ रहा है? रिवाइव भी वेस्ट करा दिया मेरा पीछे। अरे भाई कितना डैमेज ले रहे हो सारे? अबे मैं ये इसको साइड में मारने के लिए लग गया था। ओ भाई तेरे को कैसे पता सामने वाला मैजिक ही लेगा भाई? क्या बताऊं मैं, थोड़ा वो है ना दिमाग। खत्म हो मामला। That doesn't count.
कर पाता हूँ मैं ही भाई। मेरी पूरी टीम खत्म हो गई। ओ भाई विलेक फक दिस आई एम 20। वो मेरे भाई हो गया। भाई मेरी हील्स तो बहुत क्रेजी हैं लेकिन टीम खेल नहीं पा रही मेरी हील्स। मैंने 3-4 रिवाइव कर दिए अभी तक। हाँ मैं रिवाइव हुआ, मैं फिर मर गया। भाई क्या हो रहा है? भाई टफ पड़ रहा है भाई। बहुत तेजी में खत्म हो जाता हूँ भाई। ले किडनैप पा लिया, किडनैप पा लिया। आप माइंड लगाओ ना, वो हाँ, वुल्वरीन कैसे किल ले रहा है आपके माइंड से? अरे मैंने लगाया था। अरे ये डॉक्टर सिंह और इन सब ने तोड़ दिया ना। अब मैं लगा रहा हूँ वापस। अरे बहुत ओपन में लगा रहे हो आप, ऐसे ही टूट जाएगा। बहुत ओपन में लगा रहे हो। अंदर लगाओ, अंदर लगाओ, आओ अंदर लगाओ। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। और अपना नेट ना यहाँ पूरा बिछा दो। यहाँ पे पूरा नेट ऐसे ऐसे बिछा दोगे ना तो वो ट्रैक करते हुए पूरा जाएगा आपका माइंड। हाँ हाँ। एक यहाँ लगाओ, बढ़िया। अभी हाँ ऐसे बस छोड़ दो। जैसे ही डाइव आए पीछे चले जाओ। बढ़िया, देखो अभी यहीं पे यहीं पे आई। मार ले, मार ले, हाँ मार ले। चल चल अब निकल। अबे आ गया मेरे को भाई ले गया भाई। अबे भाई क्रेजी भाई। अबे भाई मैं करता हूँ यार ये, लेकिन भाई वो तब हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहां पे एक लूप होल था इसलिए। ज्यादा नेट मत लगाना, वो खत्म हो जाते हैं। खाएगा, जब खाएगा भाई। भाई कूद गया भाई मेरे को लेके। वो मैंने अबे दिक्कत ये हुई ना कि भाई वो मेरे को मेरे माइंड से उड़ा के ले गया और फिर उसने कहीं और जाके मैं किडनैप करा।
कल्ट। चलो जाओ जाओ जाओ, पैनी अल्ट करो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, होल्ड करना है साइड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अबे यार अबे खा गया अबे। नहीं नहीं मेरी गलती है, उस खेलती नहीं थी। नहीं थोड़ा उसके उससे। होल्ड करना है, ठीक है होल्ड करना है, सीने मत जा, होल्ड करना हाँ है। हाँ मैं होल्ड ही करता हूँ, होल्ड ही करता बढ़िया। रिवाइवल डाल देता हूँ इधर। मारो 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 मारो, डैमेज बूस्ट है। वो पीछे से आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है। स्ट्रेंज को मत मारो, स्ट्रेंज को मत मारो, ये पोर्टल करके नहीं आ पाएंगे फिर। 30 सेकंड 30 सेकंड। वो पीछे से आएगा। कौन आया? अरे यार गुलबरी। भाई कहाँ हो भाई? भाई 10 सेकंड हो गया, बस ऑलमोस्ट हो गया। मैं और तेज क्या था? अटैक में भी यही रख लूँ क्या? नहीं अटैक में स्ट्रेंज आ सकते हो, मैग्नेटो भाई स्ट्रेंज नहीं आता, स्ट्रेंज नहीं आता, स्ट्रेंज नहीं आता भाई। ट्राई करो, मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। भाई नहीं होता भाई, भाई सही में नहीं होता भाई, मालूम है वो बहुत सड़ता है भाई। शील्ड और उसके बीच में बहुत ऐसी ग्रुप तैसी। आता है आपको, ग्रुप आता है? हाँ नहीं यार मैं वुल्वरिन खेल रहा ना, वो ग्रुप मत खेलो। स्ट्रेंज यही खेलता हूँ यार, पैनी खेलता हूँ। एमा खेल सकते हो लेकिन एमा से डैमेज नहीं दे पाऊंगा मैं। हीलर पकड़ना, 2 बार में ऐसे चोक करके मारना, नीचे गिराना। नहीं आता है मेरे को, कॉम्बो आता है, लेकिन भाई मैं कॉम्बो में बहुत ज्यादा स्लो हूँ भाई। वो कभी कभी डायमंड फॉर्म की जगह भाई वो वाला फॉर्म हो जाता है और भाई पूरी रोटेशन बेकार हो जाती है। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मेरे को। ले लो भाई, रकून ले लो भाई, ये ना बात। भाई नोआ भाई तो है भाई, नोआ भाई को हील देते ना भाई। बता रहा हूँ पेनी का है बाहर। मैं तो नहीं गया, कोई मरा भी नहीं। चलो फ्रंट से जाओ, बैक से क्यों जा रहे हो, इधर से क्यों जा रहे हो? आप देखा करो हीलर कहाँ पे हील कर रहा है। हाँ मार दिया, हीलर मार दिया, हीलर मार दिया, वो हीलर मार दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पुश करो पुश करो। पीछे 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 मैजिक है। हील ब्लॉक है आपके, ठीक है पीछे मैजिक है। मैं आ गया आपको हील करने, आगे। इसका नेस्ट तोड़ रहा हूँ मैं। ओए ओए भाई 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 बहुत तेज एचपी में गई है, पता नहीं कुछ तो हुआ, बहुत तेज एचपी गई। अच्छा ये मैजिक 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 आई। हेलो हेलो। अरे ये जो इन गेम जो वो होता है क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड, वो कितने पीछे चलता है? थोड़ा आधा मिनट मान ले। भाई अरे डबल अल्ट क्यों कर रही है ये? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
मैजिक बैकलाइन। अरे आ जाओ यहाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। कौन से हो गया दूंगा? आगे जा रहा हूँ थोड़ा। ओए एचपी 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 एचपी। अरे सारे एक बॉय एम बॉट कैरेक्टर ले लिया इसने। बंदा खेलेगा पूरा एम चिपका के रखेगा सामने वाला बंदा। शील्ड टैंक चाहिए, शील्ड टैंक चाहिए, शील्ड टैंक चाहिए। मैं तो भाई बहुत आगे हो तुम कैसे। भाई बहुत वाहियात मौत मरे हैं भाई सब। तो उनकी मछली बहुत डैमेज है यार। जल्दी कैसे मच। और मैं कैसे मर के बच? मतलब गेट बंद हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, लेकिन गेट ही नहीं बंद हुआ। आ जाओ फिर चलते हैं फिर ये ग्रुप। चल नहीं हो गया, क्लियर हो गया। मैं तो हील बॉट करके बैठा हूँ पूरा। सॉरी पोर्टल बना लिया उसने हमारे। क्या तेजी मार गया भाई। खत्म हो गया एक और हीलर। इतने ले गया वो 3 भाई। उसको माइन से डैमेज हुआ था भाई। 1-2 माइन और लगा देता ना। भाई मेरे भाई मैं ये इसको क्या बोलते हैं, थिंग को बोल रहा हूँ भाई तू ऊपर आ ऊपर आ। अल्ट कर रहा हूँ मैं तो बस फेस बनाऊंगा। होल्ड करके रखा, मैं भी आ रहा हूँ। मेरे पे भी अल्ट है। भाई उसने भाई वो सामने पेनी ले लिया भाई। बहुत क्रेजी हो रहा हूँ मैं उसके पेनी से। उसने स्ट्रेंज हटा दिया। स्ट्रेंज हटा दिया उसने, मतलब स्ट्रेंज से चेंज करा। ओवर टाइम करा दिया, जेफ भी मार दिया उनका। भाई ये थिंग पता नहीं क्या कर रहा है। प्राइस डाल लो। डीपीएस तो अच्छा दिया था उसने, लेकिन वो
13,000 ब्लैक ऑप्स ही कर रहा था भाई, वो फ्रंट में ही फाइट कर रहा था। वरुण हाँ आजा भाई। हाँ आ रहा हूँ। ये प्रैक्टिस वर्सेस एआई बीच में छोड़ सकते हैं क्या? कर ले भाई, हाँ खत्म हाँ कर ले। छोड़ो छोड़ो, ठीक कर दो। खत्म हो गया। अबे बंदे से पहचानो जाएंगे यार, क्या और खोजना पड़ेगा। कैंसिल ही कर कितने रहा हो है। जाएंगे? अरे इसमें से लेके आता हूँ एक को। भाई सब ब्लैक 2। अच्छा चला गया, चला गया। यार खेल रहे हो क्या? हाँ आ जाओ भाई, 6 पैक चलते अब हाँ मैं दूसरी आईडी से आता, रुक जाओ। हैं। अबे भाई यार, ओए ओए आईडी वाईडी नहीं बदली ओए। ओ मैच कैसे मिलेगा? अरे मिल जाएगा। फ्लैट लगता नहीं ना साथ में, नहीं फ्लैट का नहीं लगता। 2 सेकंड रुक तो जाएगा। फ्लैट हो गया। वाह यार। ओ ये वही तो। फ्लैट 2। खुली गोल्ड है, क्या करूँ? क्या गेम इनवाइट कर खुल भाई गया विशु। और आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। मेरा यूजर नेम क्या है? फाइव स्टैक तो खेल ही नहीं पाएंगे, फिर एक और बंदा चाहिए होगा ना। 5 बंदे क्या? हाँ तुझे मिला के यार 5। फ्लाइट बंद कर। कोई है तो बताओ। रैंडम बुला लो। रैंडम कहाँ से बोला है? लगा लो भाई, रैंडम ही आएंगे, क्या जाते हैं। 5 स्टार छोटी रैंक में तो खेल सकते थे मैं कल से। अरे भाई डोंट दे भाई सब भाई। हाँ तो क्या वही तो कह रहा हूँ। 2 सेकंड। भेजा भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट। यूजर रोल। डीपीएस यूआईडी भी काम चलता है क्या? हाँ दोनों ही चल जाएगा। किसको भेजूं? चलो एक को बुला दिया मैंने। अरे चैट में भेज दे। ये चलो भेज दिया। डीएम करा मैंने सर। वाह यार। हो गया 6 स्टैक, अभी स्टार्ट करूँ। ब्राउन स्ट्रीक अबे तो स्टार्टिंग में कॉम उस कैसे लग आईडी गया पे। तेरे लेवल पे। अच्छा सवाल है। आई थिंक पहले बनाई थी आईडी जब तक कॉम्प अनलॉक था। पहले 10 लेवल से हाँ होता था। पहले 10 था, अभी हाँ पहले 15 हो 10 गया। लेवल से। पहले 10? जब अपन ने हाँ चालू करा था। सीजन नहीं 0 में। भाई, जब अपन ने चालू किया था तब भी भाई क्या कहते हैं 20 लेवल था शायद। नहीं 20 10 जितना था। अभी भी। मुझे याद है। 10 था 20 तो अभी भी नहीं है, 15 है मैं कल भाई से। यार, मेरे को भी याद है कि मैंने 10 भी करा था। 20 ही? तूने नहीं 10 नहीं में किया? सीजन 0 में था। हाँ सीजन 0 में तो खेला है भाई। चलो ठीक है यार। 10 ही था। 10 पे होगा मान लिया मैंने। इतना दिमाग नहीं लगा था। अभी कितना है? 20?
पता नहीं अभी 15 है। 15 है, अभी तो 15 है। 15 है ना। ये आईडी इसलिए बनाई थी मैंने, वैरायटी मिले, खेलने में दिक्कत ना है। अगले साल लगेगा सर। अनप्रेडिक्टेबल बोल रहा है। टाइम अननोन। सिक्स टैक में मैच नहीं लग रहा है। ये एस्टिमेटेड टाइम अननोन क्यों है? लगेगा सिक्स टैक है ना, सिक्स टैक ही ढूंढ रहा होगा सामने। यार ब्रॉन्ज वाले बंदे नहीं है क्या? क्या चल रहा है? मैं लेकर जा रहा हूँ। इतना टाइम लगता है क्या? पहली बार जा रहा 6 टैक।
अरे वो आज लगेगा कि नहीं भाई? हाँ मर गए। तो सारे अपने बंदे हैं तो गंदा आ रहा है करने, ठीक है? Pick your hero or villain. I'm not DPS judging. के लिए लड़ना मत। भाई ने अपने आप ही हीरा ले ले लो जो लेना है, मैं फिल कर दूंगा। DPS ही लेता हूँ। फिर होगा नहीं DPS आपसे, है ना? अबे एक मिनट रुको, 3 DPS जाओ टैंक जाओ। हाँ I'm here. The web of life and destiny is fragile. Someone has to protect it. 30 seconds before your आपके लिए रॉकेट जाऊंगा। भाई मेरे को भाई वही है, मैं टीम अप में खेलना ज़्यादा सही लगता है भाई। पहले मैं थॉर बहुत खेलता था क्योंकि हेला प्लेयर्स से होते थे, फिर मैं वो खेलना चालू करा, पनिशर खेलना चालू करा रॉकेट की वजह से। रॉकेट और पनिशर का क्या टीम अप था भाई पहले। बकी भी था उसमें। हाँ इन्फिनाइट भी देख। तो मैंने वो फिर वो खत्म हुआ तो वो छोड़ ही दिया। उसके बाद ऐसे ही है यार, मैं बफ वाले ही कैरेक्टर खेलता हूँ। तो मेरे को पता है भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं हर कैरेक्टर खेलूं। दो डाइवर है, डबल डाइवर खेल रहे हैं वो। अरे नो भाई तो 2 टैप कर रहे हैं सबको। नो भाई भी समझ रहा था क्या नो भाई को। नो हेला मेन नोआ भाई, हेला मेन। अब हो क्या रहा है? Just what we need. और ये कौन सी स्किन है भाई कैप्टन अमेरिका की? पहली बार देख रहा हूँ मैं। कौन सी स्किन? सामने वाले के पास है ना। अच्छा ये तो समझ ही नहीं आया कि जिंगल वाला हु वाली है भाई। ब्लैक पैंथर की आई थी ना उसी के साथ। कैप्टन इतना अनजान क्यों हो रहा ये क्या साइज का हमारे अरे उसके अल्ट के चक्कर में मेरा भी गलत हो गया। अभी उन पे जय फॉल्ट है। हर्षित भाई जितने माइंस लगा सकते लगा, तो जय फॉल्ट लगा करेगा पड़ जाएगा। लगा दी। अबे यार ये भाई छी भाई, मैं भैया मैं तो यही लेकर बात कर। ये वरुण मरा है तो रिवाइव क्यों नहीं हुआ मेरे? रेडियस में नहीं होता ना। अरे मैं बिल्कुल पास में था, वो भी पास में था। नहीं मारती है तो भाई चलता है। ये बॉट है सामने वाले। भाई तुम्हारा एक ही है पर अपनी टीम में।
अपन हार जाए क्या? अगली बार भी ये लोग मैचिंग में आ जाएंगे एक राउंड, तीसरा राउंड जीत जाएंगे वापस से। नहीं नहीं नहीं, ये भी जीत जाएंगे। नहीं उन पे अल्ट है ना, अभी देख के खेलना पड़ेगा थोड़ा। अरे मेरे पे भी अल्ट है यार, क्यों टेंशन ले रही है? यही मार दूंगा, बोल दो भाई। अल्ट से भाई कुछ नहीं होने वाला भाई अभी। अरे तो है ना? आपका मैप भाई पे वो है क्या कुछ गिराने वाला? मेरा है ना, वो पर अटका देगा 2 सेकंड के लिए टाइम। मैं देखता हूँ क्या अटका देगा भाई? और क्या था सामने, मैं भूल गया। कैप्टन था, वेनम था, स्पाइडरमैन है। वो तो अभी कर रहा है, उसका अल्ट नहीं होगा। आ गया वो, मुझे पता ही नहीं। ये बंदे यहाँ से कैसे निकल गए? ओ मेरा अल्ट कैंसिल हो गया। बाप रे। भाई कोई तो बोल रहा था भाई यार, अल्ट काम की नहीं होती। मैग्नेटो वन। ये देखो अकेले लड़ रहे वेनम से। मार भाई, अरे मार मेरा इसे, तो मार। अरे चिपक रहा पकड़ है मार। यार, चिपक रहा है भाई, बहुत जल्दी स्टार्ट करना अरे पड़ेगा। लैग हो रहा है क्या वरुण? हाँ यार, साला बेंचोदी क्या हो रहा है यार। ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अब भी वेनम को मार रहा हूँ एक फ्रेम अटक के। 150 FPS से अचानक से कम हो जा रहा है 15-20। तो पूरे सेटअप की ऐसी कैसे करती है यार उसने अपने अल्ट से। कि भाई तुम काम खत्म हो गए। अरे हाँ बस आ गया मैं। Against the world. रीटेक करते हैं मारा बिछाओ, छोड़ दो। हाँ क्या दोनों लोगों ने पकड़ा हुआ है भाई। राइट से जाते हैं वेनम आ रहा है। कहाँ है? इसको लो। अरे भाग में ना पाए। कहाँ भाग गया? खत्म हो गया। हम क्या हाइडिंग? अबे हाँ बे भाई मैच को बोल रहे। आओ मैं कर रहा हूँ, अंदर चलो मैं। एक हीलर गया। एमन लो। बढ़िया। ये आ गया भाई, टाइम वेस्ट कराने आ गया। हाँ चल भाई वरुण को देखो कैसे टेलीपोर्ट हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे उसमें भी दिख रहा है क्या? और क्या भाई फिर नेट का इशू है भाई। नेट का ही है। क्या हो रहा है भाई, देखने में सिर दर्द। इसके बाद अरे लौड़े को भी मेरे पे एडिट करनी है। अबे मैं कहाँ ऊपर आ गया भाई। अरे वाह यार, चलो एक चीज तो अच्छा एक बार में मारा भाई, थैंक यू। अरे मेरे खाने रुको भाई, रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ मैं। अचीवमेंट मिल गया भाई मेरे को। नेट भी स्विच करके आता हूँ। मेरे को भी जाना है खाना खाने। एक मैच के लिए आए थे सब। खाना वाना खा पी गया। सारे चले गए क्या? वरुण रीस्टार्ट करने गया, टेनिस भाई चले गए।
नोआ भाई चले गए। अरे कौन कौन चले गया भाई? और अच्छा कोई जा मेरे रहा है को क्या? कहने से ही गया। नहीं। 9 पे गए। वाह यार, ओपन शॉट। मैं रिस्टार्ट हो रहा, रुक जा। फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसा करो, एक गेम खेल लो, मैं आता हूँ, कुछ काम है। निपटा के आता हूँ। ट्रियो लगा लो, कर लेते हैं। अरे वो आ रहा है ना बता। आ रहा हूँ, रुक जा। ये है कौन, ये जेस मॉनी? फिर प्रैक्टिस से सीआई खेल रहा था तो उसमें आया था। अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ? रुको भाई, रुको जरा, 1 मिनट और दो। ये बैटल पास कितने का आता है? 990। मतलब भाई मेरे को इसके बाद 2 बैटल पास और सेव मारने पड़ेंगे, कुछ आगे मैं ले पाऊंगा। कितने हैं अभी आपके पास? 600 लेटेस्ट। तो ले लो फिर, कहाँ से ले लूँ? थोड़े पैसे लगाओ, ले लो। स्किन वैसे ही इतनी सारी फ्री में मिल रही है। बैटल पास वाली थोड़ी ना मिलेगी, कितनी अच्छी अच्छी स्किन आई है इस बार। भाई कैप्टन अमेरिका की और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की देख के भाई मैं रो गया भाई, ये दोनों में क्या स्किन। ओजी स्किन है भाई कैप्टन की, और वो तो फ्री है कैप्टन वाली। हाँ ना भाई, भाई उसके नॉर्मल कॉस्ट्यूम वाली लग रही है भाई, देखो एक नहीं, बार। ओजी स्किन है ये, ओजी कॉमिक की स्किन। जो भी हो भाई, भाई मतलब मेरे को मतलब विजुअली तो भाई मतलब वही वाली लग रही है जो उसकी डिफॉल्ट स्किन है। थोड़ा बहुत फर्क है भाई, बहुत थोड़ा बहुत, मैंने देखा उसको थोड़ा लोगी बारीकी की से देखो, देखा। लोगी की कितनी अच्छी स्किन है। हाँ लोकी की अच्छी है, लाइक मैक सही की में अच्छी लोकी। लगी, मैक की। नहीं मेरे को लोकी की अच्छी लगी। एमके। हाँ इनके भी अच्छी है। आपको मतलब फैंसी स्किन्स पसंद है, क्लीन और कूल वाली नहीं पसंद? क्लीन एंड यार सिंपल अच्छी मैग्नेटो लगती की है। नहीं यार, मैग्नेटो की थोड़ी अजीब ही लग कितनी रही क्लीन है, है। देखो स्किन देखो। हाँ स्किन क्लीन है, सिंपल है, वो मान रहा क्लीन। हूँ, वो फ्री है, वो अच्छी है, लेकिन नहीं यार। फिनिक्स की भी एकदम मस्त लग रही है। नहीं विंटर सोल्जर की सही लग रही है मेरे को। सबसे बेस्ट लूना की लगी यार, सबसे हाँ ये बेस्ट। बात तो है, लूना की अच्छी, लूना की सबसे अच्छी है। यार ऐसा क्यों है भाई कि कुछ कैरेक्टर्स की भाई 2 3 4 स्किन फ्री में मिलती है, बाकियों की तो मिलती ही नहीं है। अब नमोर की स्किन देख लो, आई इतनी है कि मिलेगी क्या। हम्म, गिन के आई है इसकी स्किन, 2 3। लेकिन तो चौगिनने में कितनी है। मेरे पे एक तो है, 1 2 3 4 5 5 स्किन और है मेरे वाले लो के। इनवाइट करो भाई, आओ। स्टार्ट करो।
कोई शांत हीरो नहीं है क्या जो भाई लॉबी में खड़ा रहे, इसके कोई साउंड वाउंड ना हो? सुजुकी स्विफ्ट, वाह यार, ये होता है ना। सामने हल्क नाम और खेलेंगे। ये पता कैसे चल रहा है? स्ट्रेंज वांडा भी हो सकता है, स्ट्रेंज वांडा या हल्क। अपन को क्या खेलना चाहिए? I'm here to finish the fight that my father began. I hope I make him proud. The web of life and destiny is fragile. Someone has to protect it. ये 100 की पिंग क्यों आ रही है? आपकी कितनी पिंग आ रही है? 69, 67। भाई यार, मेरी क्यों आ रही है 100? कि भाई आपका सर्वर आपके घर से डाल। मेरे को पता है, मेरा एक दोस्त है मुंबई में रहता है, वो उसको ना वो यूएई वाला सर्वर सूट करता है, उसको सिंगापुर सूट नहीं करता। हो गए 6 बंदे, वो 4 ही दिख रहे हैं मुझे। हाँ तो 4 ही है ना। हाँ अबे भाई सारे फ्लायर्स हैं भाई। सारे तो नहीं। तो बहुत सारा हल्क नमोर तो होंगे ही होंगे। और 50 ग्राम की हीलिंग। वाह यार, भाई माता श्री आ गई है। गेम ओवर है तेरा अब। इस मैच के बाद जा रहा हूँ मैं। दोनों हीलर मार दिए। इस मैच के बाद भाई यार साइड फ्लैंक देखते रहना, मैं मेन फ्लैंक मेन एंट्री तो देख ही रहूँगा। खत्म कर दिया एक चीज़। भाई चौकी ब्लॉक कर दिया भाई, तुम देख रहे हो? कर लो भाई, क्या कर लोगे? वो किंग लेके आ रहा है गुस्से का सीन अंदर। भाई वाइटिंग लेके मर गया अंदर। ओए वो हल चला गया रे, वो फिर गया, चला जाएगा। फिर गया। कहाँ भाग रहा है? अरे भाग जाओ वहाँ से, भाग जाओ। मर गया ना फिर फालतू में। मेरे को लगा वो अपना हल्का है, बहुत देर तक मारा नहीं, आजू बाजू घूम रहा था।
भाई उसने अल्ट में मार दिया भाई क्रेजी। हाँ मेरा किल चोरी करा आपने कुछ नहीं। ना 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 भाई मम्मी का फोन आ रहा है। और है ना भाई तेरा। और रख दो, मैं ले जाऊंगा, पक्का ले जाऊंगा। प्लीज प्लीज। अरे मैं ले आऊंगा, रुको। अबे ठीक है हल्का पक्का ले आऊंगा, आधा घंटे। बंद कर देनी चाहिए थी भाई 7 बजे से। क्या है? हाँ, बंद कर देनी चाहिए थी 7 बजे से पहले स्ट्रीम। 8 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हो आप? बाप रे। तो मेरे पे और 30 seconds before you attack. Get ready. Nice working with you, kid. Hey, I'm looking for a giant tree and some humanoid morons. You seen them? They're kind of my only friends. If they're on Clinton, find them fast. I'm going to destroy the whole planet. Whoa! When? Very soon. The battle starts in 5, 4. भाई मेरा DPS ज्यादा है मेरे टाइम से, ये क्या बात नहीं। All you need to do is capture the mission area. Got it? How about I switch things up and make our twins appear? Miniature mechanical models. Looks like the mission area is yours to capture now. Curious little spiders. DPS अरे 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 अरे, तो अपना कोई बंदा नहीं है भाई यहाँ। मैं रिवाइव क्यों नहीं हुआ, मैं तो ये जान। अबे मेरे पे अड़ी थी लेकिन मेरे को लगा नहीं। अच्छा क्योंकि अपने बंदे ने किया क्या? मैंने तो किया। क्रेजी भाई। अरे 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 मान नहीं रही वो पेनी बार कर। ओके अबे अबे भाई मेरे हीलर कहाँ है, मेरे हीलर कहाँ है भाई। Ready for another go, Spider? भाई ये भाई एंजेलिना कसम से सबसे कैंसर टैंक है भाई। मैं पूरा डिफेंस दूसरे उस पे आ जाता है। कहाँ जा रहे हो? पूरा सेटअप जमा लिया यार उन्होंने तो बहुत अच्छे से इस बार। सबने अल्ट भी कर दिया यार। हाँ मान ही नहीं रहा है क्या? एक ही बार में खत्म करने वाले हैं क्या ये? चलो आ जाओ भाई जल्दी आ। फ्रंटलाइन टैंक्स कहाँ हैं? अबे मैं मर गया ना यार उस स्किल्ट से। नहीं दूसरा टैंक चाहिए ना, एक दूसरा टैंक मुझे चाहिए। जल्दी अबे अच्छी वे भाई थोड़ा सा सामान
मार लो। बे भाई मैं खत्म नहीं हूँ यार, साल उसने जमा दिया। बहुत लो सब लो। बहुत बढ़िया कॉटन। अभी लोग 3 हील है भाई, 6 भाई। अभी देखा मैंने भाई, कद्दू नहीं मरेंगे लोग। बढ़िया, तू मारता जा, मैं तेरे को असिस्ट करता हूँ। अरे हीलर पे नहीं मारा। अरे हटाओ ना भाई ये। अरे 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 1 HP। अबे लूनस ने लास्ट सेकंड में अल्ट कर दिया रे। तुम रॉकेट मार, रॉकेट पे अल्ट है। मर गया। मर भाई मर। और बहुत वो लगा। वो क्या हिल रही है भाई एंजेला, तो क्रेजी चीज है कुछ। सुन, रॉकेट अल्ट आएगा, उसको पहले मेल्ट करेंगे रॉकेट अल्ट को, और फिर तू अपना अल्ट मारियो। मैं तेरे को असिस्ट करूंगा तो मारता था, मैं अल्ट असिस्ट करूंगा। हीलर पे मारियो अपना अल्ट। हाँ हाँ अरे इसका भी अल्ट आ गया। अरे ठीक है, उसका अल्ट तो देखा ही नहीं था मैंने। मर ही नहीं रहा भाई। आ गया रॉकेट अल्ट आ गया। तोड़ दिया रॉकेट। इधर अल्ट मार, अपना अल्ट मार। अरे तो अभी मेरे को हीलर ही नहीं दिख रहा। ये रहा। मार दे लो है वो। बढ़िया। वो कहाँ गया भाई? ये तो रिकॉल दिलाया मैंने। इधर मार, इधर। हाँ लूनो को मैं मार दूंगा भाई। और हाँ मर गया भाई वो 1 HP था भाई। भाई मार दे उनको भी मार। अरे इसको मारो भाई, बैग भी तो। अरे यार लोग। अरे 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 पैनी बची है भाई। हेल्प कर दो, पैनी को कोई दिक्कत नहीं। अल्ट करेगी, मार उसे मार। अरे भाग गई। अल्ट करने आ रही थी। मारो भाई, अभी नहीं मरी है वो। मर गई। हाँ अरे रे अरे अरे गया भाई मैं। बच गया। अभी तो मर गई थी। वही तो। फिर से आ गई, रॉकेट का वो बीकन लगा दिया था ना उसने। ठीक है, मार दिया एक। एक और मर गई। कहाँ है बंदे? और ही नहीं है। मर गए। बढ़िया यार, तुमने सब पिंग कर दिया तो मैंने वही गलत ढूंढना नहीं। रुकना भाई, मैं देख के आता हूँ।
मैं देखता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भाई। हेलो। हेलो आ जाओ भाई खेलते भाई, वो चले गया, वो बोलता थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जो हैं। खेल रहा था। तो कैसा करना है, अभी खेल रहे हैं कि? बताओ तू खेलना है तेरे को? तू बता, मैं तो खेल सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। या बाद में ही खेले नहीं तो? हाँ ऐसा कर लो। चल ठीक है। ओ, टा 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 टा।